कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान। व्यापार जगत। Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. Hello everyone, I am Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a women entrepreneur, do register your startup idea. Hello everyone, myself Rupali Shah, owner of Trends Look Fashion Jewelry. हमारे यहाँ ऑफिस वेयर, डेली वेयर और वेस्टर्न वेयर की ज्वेलरी मिलती है। जजिस बंगलो बोडकदेव पर हमारा शॉप है। सबसे पहले तो मैं व्यापार जगत का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये फेमप्रेन्योर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उन्होंने ऐसी महिलाओं को नॉमिनेट किया है जिसने अपने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद अपना एक व्यापार शुरू करके उसको अपनी एक पहचान बना दिया है। और यहाँ पे उन्होंने स्पीकर्स भी रखे हुए हैं जो व्यापार से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे, और इससे भी कई सारी महिलाओं को फ़ायदा होगा।
सो थैंक यू सो मच व्यापार जगत कि आपकी वजह से ऐसी कई महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ और बिजनेस जर्नी सारे समाज के सामने शेयर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए तारे वो सब एकजुट होके एक ऐसा आकाश बनाने वाले हैं कि जहाँ झिलमिलाते हुए सारे तारे अपनी रोशनी तो बिखेरेंगे, साथ ही साथ और लोगों को भी प्रज्वलित करेंगे, उनका भी हौसला बढ़ाएंगे, उनको भी ज्यादा रोशनी देंगे। मैं सच में डॉक्टर परमार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट सोचा और हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे इकट्ठा किया। Wish you all the best. Thank you so much. Highlighting Good the morning. urgency Good morning, Warm of everyone. women's And I'm contributions so to happy developing today, plans obviously, to because build it is futures the of International Women's Day. economies, So wish you all a to very happy challenges women International are Women's likely Day. encountering in I am achieving Rajyasree sustainable Gajjar and development, I'm business, host and for family FEMPRENEUR goals, and 3 Conference and solutions to Awards these 2022. challenges to Today is encourage, the D-Day. empower, and If you have not inspire and subscribed to motivate Vyapar everyone Jagat here on TV, today. quickly So डाल today I देते would हैं। like to talk कर about दीजिए 3 सब्सक्राइब। things mainly in my What is talk, व्यापार जगत? which भूल गए will क्या? help us वापस से continue to बोल दूं, motivate, है ना? inspire, and empower women Vyapar Jagat in works for India. entrepreneurs and game Now, throughout the changers. globe, We if you're believe doing in the business India globally, story. We have because of one the of the biggest pandemic, economy and you in the have world, where transformed the your top priority business of with all business businesses is to set transformation up as their well as digital international branches in transformation, India. interacting with new Foreign colleagues businesses are and eager to customers take online. advantage of our So today I'm economic talking strength. about 3 things. One, But highlighting the our urgency country's of women's initiatives, Atma Nirbhar contributions Bharat to and developing Azadi Ka Amrit plans to build a Mahotsav, desired at that future we are within India determined to give specifically. 2, platform to our challenges women are inborn likely businesses. continuing facing, We and help 3, businesses to solutions to tell those their challenges. stories so that So people firstly, can believe women's in their dreams and contributions expand their to business. building the ये future हमने are critical 2 दिन since we की live जो and work in कॉन्फ्रेंस पहले economies. हुई, For example, I'm अवार्ड्स a पहले descendant हुए, of वो generation हमने of देखा। farmers and fishermen from a पहले small ही rural दिन हमने town बहुत in सारे the United स्पीकर्स, States of America. पैनलिस्ट को सुना Such work is जो अपनी entrepreneurial, ही बात with long कह hours रहे and थे, hard अपने work with the बिजनेसेस, skills of अपनी finance, banking, sales, एंटरप्रेन्योरशिप research की and जर्नी development, सब बता procurement, रहे थे। कल contracts, and हमने even देखा science हाउ being फिटनेस इज needed when product इम्पोर्टेंट, development, हाउ like food and beverage companies, is गाइडेंस इज concerned. इम्पोर्टेंट, Many of you हाउ may know about गवर्नमेंट this. पॉलिसीज आर Although I इम्पोर्टेंट started फॉर my अस। first business और when I was आज age 8, a candy हम company एक and a food and beverage company at age और एक 11. The बहुत ही companies were इंफॉर्मेटिव dissolved as सेशंस I के tried to बारे में focus on सेशन school के बारे में and हम paid जानेंगे, work at बहुत age सारे 15. इंफॉर्मेटिव सेशंस Many of you और ladies बहुत have सारे experienced this as अगेन well, वेरी having to नॉलेजेबल provide for पैनलिस्ट हैं yourself by हमारे trying साथ। to start a पर business. बिफोर Many दैट women आई here वुड can रिक्वेस्ट likely डॉक्टर relate to प्रवीण my परमार story. Women are to say a mothers, few words caregivers, and we'll start the wives, friends, session. leaders in corporations, and even business Over to you, owners. sir. More often than not, all of these roles at once. Furthermore, Thank you I was so not always much, successful Rajsi. I was not always successful as a key global And leader of a global good conglomerate morning, Vyapar corporation Jagat. which I own. Hello And everyone, within working and with once women, again, investment, and welcome public back to organizations at the same FEMPRENEUR time. Conference and I know many Awards of you women can relate 2022. as well. First To of get to all, where I am today academically, let me with thank to you, all the I wanna face as participants well, and even viewers who corporately, are in watching business, us and as a online global on leader. Vyapar Jagat I TV. endured numerous adversities. Many मुझे were very बहुत ही ज़्यादा excruciating खुशी at the हो रही same है time, because so and to far overcome, just like many of you have last 2 days, in experienced, last but I 2 needed to days, find a our way. videos Briefly, I viewed survived by two domestic more violence than relationships, 5,000 losing a entrepreneurs. child, being homeless for Yes, a you number of can years, go family and abuse check for 10 on years, but I Vyapar needed a Jagat way TV, out, which is including on financial YouTube, income for and self-support, you know, and even 5,000 more, plus which many of you viewers have likely already faced done. as well. We all Today have is our a own very personal special day, stories, which I just as it is mentioned. the International Women's Day. Year after year, I And devised many on behalf strategies to of the overcome my entire team of adversities. Vyapar Jagat, Nevertheless, I I decided to am go back to wishing school and very, attend very academic leave happy and launch Women's Day corporations to within all these of you. adversities. While I was going through these चलिए adversities, I utilized my आज के दिन childhood company एक ideas and dreams, and I कुछ turned नई them into शुरुआत patents करते and हैं. trademarks and मैं companies चाहता हूँ कि to launch आप businesses. अपने आप को एक I also प्रॉमिस utilized कीजिए, prayer strategies एंड and आप अपने determination, आप को एक which I ऐसा know many प्रॉमिस of you कीजिए women have कि जहाँ also पे utilized आपका to launch जो your भी businesses, which is जर्नी like अभी तक हुआ है, आज की डेट तक आपने जो भी काम किए हैं, जो भी एफर्ट्स किए हैं, जो भी कंट्रीब्यूशंस किए हैं, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स जहाँ पे लोगों की लाइफ में कोई चेंज आया है. एटलीस्ट आपकी फैमिली में यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, राइट? सो विदाउट फर्दर डिले आप उसको लिख लीजिए. राइट योर ओन स्टोरी, एंड व्यापार जगत इज अ प्लेटफॉर्म. वी विल पब्लिश योर जर्नीज, योर इंस्पायरिंग स्टोरीज. एंड आपकी ये जो स्टोरी है, why are you limiting to yourself only? Let us tell that story to the whole world. Let us
the whole world know about you, your effort, your contribution, and if you are an entrepreneur, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन किया है. तो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट वेर इन वी tell the whole world that how Indian women entrepreneurs are contributing to nation building. That is very powerful, and that is the promise I request all the women entrepreneurs to make. And without further delay, moving forward to the third day of International Women's Day and the final day of FEMPRENEUR Conference and Awards 2022. And हर बार ये जो वुमेन्स डे होता है उसकी एक थीम होती है. आपको शायद पता नहीं है कि इस साल जो थीम है, द थीम इज क्लाइमेट चेंज. एंड वी हैव वेरी गुड स्पीकर डॉक्टर मेघा भट्ट, एंड शी विल टेक अस थ्रू दिस पर्टिकुलर थीम, एंड शी विल स्टार्ट विद रोल ऑफ अ वुमन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. एंड उसके बाद में वी हैव लॉट ऑफ अदर पैनल डिस्कशंस एंड fireside chats and other sessions like business community driving, women's business psychology, champions of change, perspective on women entrepreneurship, and we have a very special session where an inspiring journey of a woman pilot. There are other sessions like innovation at home, जो women entrepreneurs है वो कर रहे हैं, future of fashion industry, cyber safety and social networking sites, very important. Right, so that session we also have. And the last but not least, in the gala awards evening, we are going to announce couple of awards, and the categories are homegrown business of the year, best mentor award, best influencer award, woman ahead startup of the year, young business woman of the year, business leader of the year, social entrepreneurship award, best mompreneur of the year, social impact creator of the year, and the most important, lifetime achievement award. So ladies and gentlemen, stay tuned, subscribe to vyapaarjagat TV if you have not done so far, and if you are watching this, so take a screenshot, take a picture and put it on your Twitter handle or Facebook or Insta, and tag hashtag is मेरा व्यापार मेरी पहचान. And one more thing which I would like to address is you can post your feelings, comments, questions, anything in the YouTube comment box, and we are here to take your comments, your questions to our speakers, and speakers will answer your queries in real time. That is from my that's it from my end, and thank you so much. And once again, very happy Women's Day to all the women entrepreneurs, and thank you so much. Over to you, Raji. थैंक यू वेरी मच सर. आपने तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ सरप्राइज रखने नहीं दिया हमें. Without any much further delay, I would it's my honor, it's my pleasure to introduce Dr. Megha Bhatt. I have to stop myself being emotional, and I have to actually tell how good rather a person and so many things about her. So let me not waste any more second. Dr. Megha Bhatt is here with us with more than 26 years of teaching and research experience, and now being a woman entrepreneur for last 5 years, is a proud women scientist and founder of an initiative, Sinotech, for science and math experiential learning for children. She has conducted number of workshops for teachers as well as students to spread science as a subject, exposing more than 36,000 kids. Yes, you heard me right. 36,000 kids to novel tool of experiential learning for science. She is heading the Gujarat State STEM Education Council as a president of WICI, that is Women's Indian Chamber of Commerce and Industries. With masters in botany and PhD in environmental science, with her expertise in climate change and environmental related issues, she is also visiting faculty at many universities, have bagged a couple of awards like Trendsetter Award by Gujarat Innovation Society, Best Faculty-Led Startup Award in National Student Startup and Innovation Summit, Digital Woman Award by SheThePeople.tv, powered by Google,
Social Impact Award by GUSEC, as we know. Women's Achievers Award by Udgam. Over to you, Megha ma'am. Thank you so much, Ratsiben, for introducing. And Praveen Bhai, I think best wishes to you for such wonderful awards. I think you're trying to, inspire, and you're trying to actually, honor women in all the different sectors. And I think that says that women are already spread in so many sectors. So I think let's celebrate today that womanhood and begin with our gender equality, and especially addressing climate change as a major issue, which women, how they can contribute to the whole thing. And I'm going to keep it really very simple for a layman to understand what is climate change, just like kids. Okay, so let's try as women that what is it actually, what is happening around us, and what can we do as a citizen. So let us begin as soon as possible. And everybody may wonder, that it has a different theme every year. And in 2022, the United Nations is highlighting the direct impact of climate change on lives of women and women leaders who are changing the conversation about climate with their sustainable initiatives. The theme for International Women's Day every year, according to, is always on the matter, and is usually the reflection of the issue that feels most pressing at the time that it is decided. So this year, though the focus is solely on bringing awareness to the climate change issues and how they impact everyone, but especially women, with the theme of gender equality today for a sustainable tomorrow. So my friend, with that particular theme as a major one, gender equality today for a sustainable tomorrow, but for a sustainable tomorrow, we have to address what we call it to be climate change. So my friends, without any delay, let us start, and let me share my screen with all of you. And just a second. Yes, can you see my full screen, please? Can you please see my full screen? Yes, we can, doctor. Thank you. Okay, so as I said, the theme is gender equality for today for a sustainable tomorrow. But my friends, for sustainable tomorrow, the major issue the world is facing today is climate change. So for that, I think here is one tweet by UN Women, that we are celebrating under the theme and women and girls are key to solving the climate crisis. And get your, you can also tweet activism started by learning why women need to be at the heart of climate. So today you are going to be learning about that, my friends. So here is what is climate, first of all. So let's try our. So whenever you talk about weather. Doctor, just one correction. I think on the title bar, जो सबसे ऊपर का heading है, it is cutting somewhere. So I think Zoom का जो bar है, you to put it somewhere else, or you can just hide it. Yes, it's perfect now. It's perfect now. Go ahead, please. Thank you. Is it perfect? Okay. So basically, weather is the state of the, the atmosphere. When you say that today, what is the temperature, what is the rainfall, how cloudy it is outside, how hot it is outside, how cold it is outside, or something like that, right? But climate, when you're talking about, say, Ahmedabad, you would say that, okay, that today being 8th of March, we are looking at probably temperature which is 31 degrees outside during the daytime, and probably, during the night time, it may be around 18. So my friends, when you note it down for 20 to 30 long years and you take the average out of it, you can predict the climate. Now, the unfortunate part is that when you are trying to predict nowadays, it never goes as per prediction. All right. So the problem is that you can remember it as that climate is what we expect. Okay. But weather is what we get. So let us go ahead, my friends, that was it the same, since long time. So in European paintings, it has been shown that, in certain months of summer, people are wearing such an outfit where people say that, already it is very long time. Also, there was a little ice age, and there was what you call it to be the little medieval period, which was a little warmer a period, which was experienced by people for a longer period of time. So basically,
what is climate change in general. So these were the few predictions which were done before 15 years, that the average global temperature has increased by around 0.6 degrees in 140 years, and the 10 hottest years for the last 100 years have occurred since 1990. So basically you can imagine that the hottest part is the last part, what we could say. And scientists have predicted that you can imagine that in 140 years there was only a change of 0.6, whereas you can notice that in case of the 0.6 in 140 years, but we are expecting in that next 150 years we may experience the increase of 6%, 6 degrees. So basically, my friends, 0.6 is making us restless today. Think about what if the 6 degrees, if that gets increased, what will happen to us, right? So let us try to undergo, what is the process, what we are thinking about. See, basically, whenever you talk about global warming or a greenhouse effect, so it was already there, which is already natural, that Earth's solar radiation, which falls on Earth, part of it goes back outside, it escapes to the earth, okay? And it used to escape since so many years also. But now, since we are emitting what we call it to be, since we are trying to, emit lot of carbon dioxide through our activities all the time, what is happening is that in this area, that is what we call it to be the atmosphere, we are trying to emit more of carbon dioxide, methane, NOx, that is nitrous oxide, sulfur oxides, and so on. So my friends, whatever activities we are trying to do, I will go to the activities later, but whatever we are trying to do, when we try using electricity more and more, we are generating more and more carbon dioxide, and that is what gets trapped being a greenhouse gas. Okay, so when it gets trapped, the heat which is actually going out, now it is absorbed back. So it is getting still more and more hot. Okay, so greenhouse effect was already there, but now the global warming is because of what we call it to be the enhanced effect, what we are experiencing because of our activities. So I think let's go ahead. I'm really trying to make it really very, very simple, my friends, so that you can understand. So what are these greenhouse gases? Not only carbon dioxide, but nitrogen oxide, sulfur oxides, methane, and majorly the water vapor being greenhouse gas. People have no idea that whenever you are talking about, whenever you are talking about the water vapor, basically what happens is that it is it is being emitted out through our air conditioners, the chlorofluorocarbons which are being emitted out through the air conditioners. So it so happens that these charts, now this is something very interesting, my friends. What you have to see is the year here, and you have to see the temperature data. So as per that, if you want to understand it further, look at the temperature difference. Okay, whenever it increases, it moves from yellow to red, orange to red, and whenever it decreases, it moves from gray to getting more bluer. All right, so basically when you try to understand that, look at the years. Okay, so we begin with 1880, and to your greatest surprise, you will notice that 1886 to 1890. So probably people say that it might be a kind of and the data is consistent for a specific month, all right, which is being observed throughout the year. So there was a time where it started increasing in 1926. So you can imagine that with the invention era, okay, the temperature started increasing in the Western world. And of course, the burning of the fuel and the wood and the poverty, that increased in the African continents. So basically, you can notice that 1936, where we were talking about 1936 to 40, when we are talking about World War I and World War II, you could see that, the northern hemisphere was full of, increase of temperature, and which was being observed. And then later on, it started settling down throughout the world. But my friends, the worst started with 1986. You can see that throughout the world, the temperature is rising. And still furthermore, 1996 to 2000, the scenario became the worst. And you can notice that at least, it's yellow here in India,
But the other part of the world where, the technology plays very, very important role, where everything is mechanized, where everything runs on electricity, you can notice that the temperature rise observed is much more. Look at the scenario in 2003 to 2007. And this opened the eyes, my friends, throughout the world that yes, temperature is rising. And what is the phenomena, what is happening throughout the world? So I think how the climate changes are being predicted by the council IPCC, which is like they say that the global temperature will have increased by 1.4 to 5.8. Sea levels will rise by around 0.88 meters, that is very close to 1 meter. And if that happens, then the 6 cities which are majorly, on the sea, which includes even the city of Mumbai, will be underwater. So there'll be more precipitation over the northern hemisphere, as you can notice, okay, and there'll be more hotter days and fewer colder days, which we are already experiencing. So these were the predicted structures. Now look at this, my friends, that what are the evidences of this particular phenomena, which what we call it to be climate change. If you can notice that before and after the pictures of the any kind of glacier, if you look at the Alaskan continent, then please have a look that earlier it used to be full of snow, and then later you can see that there is no snow. This is Mendenhall Glacier. I myself have clicked the picture in 2014, which I have noticed that this Mendenhall Glacier, which is in Alaska, it is no more a glacier, it is all a lake now, okay, which is the all ice which has melted. So that's why the problem of call it to be habitat destruction for so many of organisms, mainly the polar bear, which we are all aware about. So look at, these are the few pictures which are very interesting, that in 1913 and 2005, look at the same area, but there is no snow and it is full of lake, which you can see. So basically this is something very interesting where in 1921 one of the mountaineer took the picture, north face of Mount Everest, and 86 years later David Breschers sat in the same spot as Mallory to capture the changes that had occurred over the 9 decades. And you can notice that, look at the changes, which is very, very evident that it is now lake. Okay, so basically 1921 and 2009, there is a big difference, that the ice and the snow which has completely melted. So my friends, we do not go very much in detail, but the habitat fragmentation, what we call that, habitat मतलब रहठान, जो घर है, animals का घर है, वो टूट जाने से बहुत फर्क पड़ता है उनके लिए, जो हमें पता नहीं चलता, और बहुत सारे ऐसे animals हैं जिनके लिए जगह ही नहीं बचती है. So here you can actually notice it through the diagram that we are not able to see the highest or the apex predator species, because the dense forest has already missed out, right? So the lower organisms will survive, but the animals which require the dense forest have already gone. Now when you talk about habitat shifting, see, basically habitat shifting is something where the animals who wish to have probably 18 degrees, say here if they are staying in 18 degrees and they need 18 degrees, but now the temperature has risen to 20. So in search of 18, they will start going up. So that process is so gradual that every time, they'll start going up, up, up. And what about the animals which were already up? Okay, so they will be, they will extinct from the surface of Earth, unfortunately. So I think this is the habitat shift what we are talking about, and which is a major phenomena. But since this lecture is for the common layman to understand what is climate change, we must we focus towards the actions what we can take as a human being, right? So look at the ozone hole which we are trying to create. Unfortunately, India contributes less to this. Our villages definitely save us through this, because we are not very mechanized in the rural area. So impact is, in short, sea level rise or water levels rise in the oceans, the timing of the seasons will change, increase of vector-borne diseases, which in COVID times we already have experienced this, stronger hurricanes and storms. Animals change their behavior, we do not know, but they change their reproductive time, they change their migration time. More plant and animals
will become extinct, or massive biodiversity loss will be observed. People say allergies even get worse. See, we never heard about flu shots in India, right? It was very common in Western world, but this year, after I think COVID, people have even started taking flu shots. So I think you can imagine that how allergies are also getting worse. Increase of extreme events you could see. And so this is what I'm trying to summarize very, very quickly, my friends, that higher death toll amongst the elderly and disabled, increasing risk of forest fires everywhere, the heat waves are observed. Last year, San Francisco forest fires, got so popular in the world that, my goodness, why does the sunset and sunrise look so orange? Okay. And it was due to the forest fires which were happening in the entire area. In India also, in Gujarat rather, down forest fires are the natural forest fires which happens in the kind of forest what we have. So more intense rainfalls people have. Actually, these are the real-time pictures of our, Uttarakhand or Uttaranchal landslides and floods. Okay, so people actually tried saving each other. They took, there are a lot of evidences on the YouTube also where people might have taken, in such worst conditions, people might have taken some videos. And the more intense rainfall, obviously, sometimes leads to flash floods, and in turn, it leads to what you call it to be the landslides. And it also causes such kind of, destructive structure in the nature naturally leads to pollution of water, which leads to, destroyed harvests. Farmers are absolutely tired of, the whole idea of having अतिवृष्टि, मतलब उनको जब expected नहीं है तब rain होगा और नहीं है तब नहीं होगा. So basically there are parts of the world where, you're talking about more droughts, and more often too little drinking water, food security is threatened, potential impact on conflict and migration, as you can see. And it is, tropical storms are observed throughout the world. We also, as you all know, Vayu was, what we got rid of, but the Nilufar, which, passed through Hyderabad and the lower part of India, was before few years was very popular a cyclone. So more higher the wind speed which is being observed, and more the rainfall. And because of that, obviously there are two reasons that when the snow will melt, obviously where will it go? It will go ultimately in the seas and ocean, where it will start rising, right? So basically the coastal areas are at risk. There is a saltwater intrusion threatens water supply and food security, because that salt water will in turn, water will always, levelized, and it will try, basically it will, 100% what will happen is that it will try spreading all across. And that's why, that salty water will start moving inside the agricultural lands. And it's again a threat to the city. Then melting ice, as I rightly said, reduction in the water supplies, glacier, lake outbursts or floods are being visible, which you can notice. Health and climate change, I don't need to say much, because all of you already know we are experiencing this phenomena since last 3 years, and it is the worst phase of our lives. All of us will agree to that, right? So shift of diseases to new areas, or increase of waterborne diseases after floods, or increases of diseases due to higher temperature, humidity or drought. The chances of infection are always more when there is a higher temperature and humidity which is being observed. Now, my friends, why should we care? So when you talk about 1990s, you can look at the temperature. But if possibility that if we do not change, or if we do not take any steps further, as a citizen from our side, then, we are looking at the scenario which looks something like this. Okay. And you can notice that how hotter days we are looking at. Now, what is the solution? The combined use of renewable energy. So you might have heard about the energy which is free of cost to us, because it is provided by nature, but it can be converted to electrical energy. And the major one being utilized in state of Gujarat is solar energy, where government tries to, give lot of subsidies for solar panels, photovoltaics, what we call hydropower. We have Kevadia colony, which you all might have visited for the Statue of Unity.
wind energy, which is also, a very common sight. This is a very common sight in European countries, but fortunately in India, in Gujarat also, it's a very, very common sight, being the longest coastal area in the nation. So these technologies are available today, and we must shift towards the renewables. As you can see, we have, Asia's biggest solar park at Charanka, and there is one more which is coming up in Gujarat. So basically, we are already focusing on solar power and solar ability, but women, in your own house, we can switch to solar cooker. Okay, very, very simple idea. We can definitely shift to solar cooker. If you have to actually come and see, please come to the academy. We have a live one here, and a solution to the transport, my friends. Obviously, this is not a very sustainable or feasible idea in India to have hybrid cars, because they are extremely expensive, and people are not, that moneyed to buy a hybrid car as compared to the normal car. So instead of that, we should more focus on mass public transportation. We can focus on carpooling for our children. So mothers, whenever you want to drop your children somewhere, try to carpool, okay? Not because it is not convenient to you to drop your child today, but probably, carpooling will definitely save a lot of energy. So green roofs are a very, very common sight in Bombay and Bangalore. It's not painted green, it's all planted green, right? And that's why it's called as green roofs, which actually fixes, that is the only solution, because carbon dioxide we are emitting for everything. And planting is only one thing which fixes carbon dioxide through its photosynthesis. So my friends, plant as many trees as possible and have greener roofs. There are waste facts what we are looking at. So cities are really growing fast and landfills are reaching saturation. We all know that. And waste has a lot of value which is not being exploited. So that's why, now we have basically, now the government also has, AMC has made it compulsory to separate your wet and dry waste. Okay, at least please try practicing that in your own house. Very, very important. And then if you want to go furthermore, then probably that wet waste could be converted into what you call it to be the compost. Okay, so which could be used as manuring. So nature and conservation is something very important world over. Deforestation is the major phenomena which is, responsible for this climate change, my friends. So do not promote cutting of trees for any reason next to your societies. Please make sure that, you are preserving that nature, conserving the age old trees. वो 20 साल पुराना ट्री काट दोगे और उसकी जगह 5 लगाओगे तो भी उसको उगने के लिए जो टाइम लगता है वो तो लग ही जाता है. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. Sustainable cities की definition जो है that we should focus more on green buildings which are more energy efficient, good water management system where you have tried putting up the facility for a groundwater table, enhancing groundwater table, good waste management, what we are talking about. Most importantly, natural ecosystems around the city should be preserved at all costs. We have Indroda Park next to us and we must protect it as a citizen, instead of going there and just having a picnic, spoiling everything, just enjoy the nature, what you have, right? Reduce our consumption of fossil fuel. जहाँ पे हम साइकिलिंग कर सकते हैं तो काइनेटिक होंडा, लाइक काइनेटिक मत ले जाइए, स्कूटर, जहाँ पे स्कूटर चला सकते हैं वहाँ कार नहीं ले जाइए, जहाँ कार चला सकते हैं वहाँ कारपूलिंग करिए. So basically we can definitely reduce our consumption at a personal level for fossil fuels, my friends. Now this is something very important where as a women we should understand कि घर में सबसे ज़्यादा जो भी रहता है, they must understand the value of this. That first it was incandescent bulbs, the yellow bulbs what we call, and then it was replaced by CFL and now it is replaced by LEDs. So my friends, please change them to LED. You can notice that 60 watt bulb giving you a brightness of 800 lumens, but vis-a-vis 9 volt giving you 9 watts giving you similar kind of brightness, right? And maybe, at one time yearly running cost, you can notice that probably these bulbs are, very cheap, incandescent bulbs. In the next slide, you would be noticing that this particular bulb may, this may cost you maybe 40 rupees and this may cost you 240 rupees for a minute that you feel that is expensive.
but trust me, the kind of billing what you will have, you will, and it will last longer for more than 4 years, right? So this lasts for around 6 to 8 months, this lasts for around 2 years, and this lasts for around more than 4 years. So my friends, it makes it up for that, but it gives out so much of less energy, giving you the same amount of light. So this is something very important. So throughout the world, it was being asked that, how do you feel about climate change? And 37% said that yes, climate change is happening, and 80% said that urgent action is needed towards climate change. And they, tried coming up with the idea that women, if being trained, could pass on her beautiful ideas to their children, and it can be talked about more frequent in the house, in the sense that probably the action could have been much faster. So it's the 13th sustainable development goal what we are looking at, which is climate action goal. And these are the ideas for protecting our planet, where you are biking more, that is cycling more, reduce, reuse and recycle, my friends. गांधी जी ने तो इतने साल पहले कहा था कि रिफ्यूज, ओके, चाहिए ही नहीं तो लो ही मत, तो वेस्ट क्रिएट ही ना हो, है ना? सो सबसे पहला आर शुड बी रिफ्यूज एक्चुअली, एंड देन इट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. So choose sustainable. For us, the seafood, maybe it's not very common for us. Trees provide food and oxygen, so plant and plant more trees. Don't send chemicals into the waterways. Shop wisely, please. Reusable shopping bags use कीजिए, जो यहाँ पे अभी वापस आने लगा है. Try educating people around you. Conserve a lot of water and volunteer for cleanups. Sab jagah, including see how the sea faces in Mumbai and Goa and everywhere are getting cleaned up everywhere. So use local goods, including vegetables, and save carbon footprints. We know, see basically आजकल बहुत ट्रेंड है, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है मैक्सिकन एंड इटालियन फूड. तो हम लोग अवाकाडो वगैरह जो भी बाहर का लेके आते हैं, उसकी जगह वी कैन ट्राई यूजिंग चटनीज. सो ट्राई यूजिंग मोर एंड मोर लोकल फूड. हमें पता नहीं है कि जो फॉरेन का हम यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ घूम के आया है, जितनी जगह से वो ट्रांसपोर्ट में आया है उतना कार्बन एमिट उसने किया है व्हीकल में भी, राइट? सो उसको कार्बन फुटप्रिंट कह के बुलाते हैं. सो वी हैव to try reducing our carbon footprints, and we have to work towards increasing handprints, what we call. Okay, so with 2 hands, I would definitely say that this is the action towards sustainability, which we all of us can, I can end my session with that. And finally, this is what we can see, that as teachers or as women, what can we do with our children? So to turn off the appliances, heating and air conditioning, and unplug computers whenever not required, to encourage parents and relatives to change the light bulbs to energy efficient ones, to recycle papers, reuse bottles, plastics, to join eco clubs, to choose products that are environmental friendly, and to try to use less, right? And individual actions, we can say that unplug appliances, use mass transit, very important, biking, walking, roller skating, which is not really common here, buy water saving appliances and toilets, weather strip, buy products with 5-star Energy Star label, which actually uses less energy, fluorescent lighting in your home, and your alternative energy sources for electricity and heat. So my friends, this was a small poem which I had written long ago for children. That hole in our home, beware of the storm, be ready to get mourn if attention to environment is not grown. No pollution is the solution. Don't be cruel, save fossil fuel, and live well and not in the hell. Reduce, reuse and recycle, my friends. So please join what you call it to be Kyoto Protocol, which was the first protocol to, for the awareness of the climate change in the world. There should be only one motto: join the community of climate change and be the change. So thank you, vyapaarjagat, for hosting me today. Think science, think Sinotech. Thank you. What a beautiful way to convey such a grave message to all of us. I think the 2-3 points that affected me the most was segregate waste, because all we do is put one thing in, everything in one dustbin. Do not buy things that are not grown here, carbon footprints. So we can replace them with anything else. Wherever we can travel on foot, 11 number ni bus, as they say, do not use vehicles. So many things, so many points, so many grave points conveyed easily. I think सबके मन में, दिमाग में ये बात घुस गई है कि climate change is in our hands.
you can Yes. at least slow it down, if not stop it. So Yes. thank you very much, So I ma'am. think nice a picture with increased handprints. So handprints is the action towards climate change. So thank you, Absolutely. Siben, and thank you, Praveen Bhai, for having me over. And I hope I could do justice in the time given. Thank No, you. it was Absolutely superb. did It that. was superb, Thank you doctor. very much. And Kyoto and no pollution is no solution. Superb. So it was indeed a great session. And मेरे ख्याल से ये आज के जो entertainment का जो जरिया है social media में, I think this is something which everyone should promote on social media, and that is that is something which we अगर हम एनवायरनमेंट को अच्छा देंगे तो एनवायरनमेंट हमें अच्छा देगा, राइट? सो टू मेक दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप बैलेंस, दिस इज मोस्ट આપણે એને સાચવીએ इम्पोर्टेंट. ને આપણે સાચવે બરાબર છે. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर joining this particular session and sharing this particular wonderful insights to all our participants. Thank you so Thank you much. so much. આવજો. Thank you, ma'am. Avjo. Bye. Hello everyone, I am Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a woman entrepreneur, do register your startup idea. Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is, if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. कर सकते हैं. What a wonderful session. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारी ग्रेव चीजें इतनी इजीली मेघा मैडम ने हमको बता दी. अब reach for your dreams, जो हमें पल्लवी जी बताने वाले हैं. Let me introduce her quickly, and so that we can get on with the session as soon as possible. Pallavi Walia Raj is an award-winning celebrity MC, an empowering global trainer, coach, a TEDx speaker, an entrepreneur, a TV hosting, having covered world events like ICC Cricket World Cup and Milan Fashion Week, just to name a few. My God. She has hosted over, I don't want to say these. She has hosted over 5,600 lives, televised and virtual events internationally and nationally, and is communication expert, having touched and transformed over 2.5 lakh lives globally in her 23 plus years of service. Superb, ma'am. Hats off. She has been awarded the Stree Shakti Award 2020 for excellence in media and entertainment, Power Trainer Grand Queen's Leadership Award 2021 for excellence in trainer coach, Most Versatile Celebrity MC 2021 and 2019 at the Nationwide Awards Best MC 2019-2018 by Telangana Chamber of Events Industry, among many others. Oh my God.
Ma'am, I'm looking forward for this session. Pallavi is also considered as bankable brand by the organizations and the people she works with, and lives by her motto, excellence breeds success. Over to you, ma'am. Yes, Pallavi ma'am, over to you. All right. I always say, you design the life that you want to have. नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। लेट्स एम्पावर आवरसेल्व्स, हम अपने आप को इतना सक्षम, इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, हमारे ड्रीम्स को इतना इतना ज्यादा निखारें आज के इस सेशन के बाद कि यू नो द स्काई इज नॉट द लिमिट। हमेशा लोग बोलते हैं द स्काई इज द लिमिट। आई डोंट वांट यू टू हैव एनी लिमिट्स, and that's not just me. I think every empowering woman in this world would want other people of her kind not to have any limits. You know, हम लोग हमेशा बोलते हैं think out of the box. मैं कहती हूँ don't have a box because when you don't have a box, that's when your creativity, your imagination, your dreams, everything that you want really will actually happen. So well, let's get started. How many of you here, I want this to be a very interactive session. तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मुझे दिल से देख रहे हैं, तो please raise your hand. It doesn't matter whether I can see you or not see you, okay? I want you to affirm it. आप अपने आप को ये affirm करें कि yes, ये you know मैं इस question को answer कर रही हूँ. So how many of you here have a lot of dreams? Okay, I'm guessing that a lot of hands have gone up. Thank you very much. How many of you really want to keep making those dreams bigger and bigger every single day? Yes? Fantastic. I'm one of those kind of people. And I just want you to, ये बहुत interactive session होने वाला है, तो please, अगर आपके हाथ में पेन और पेपर नहीं है, तो जल्दी से या तो अपने बच्चे को बोल दीजिए, या you know your spouse can help you out, or if you have a book because you're taking some notes, just open a clean sheet of paper. Okay, just ओपन अ क्लीन शीट और एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा। हमने स्कूल में सीखा था ये ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जहां वो दो मिल रहे हैं ना, वहां मैं चाहती हूं कि आप एक छोटू सा स्टिक फिगर ड्रॉ करें। स्टिक फिगर माने क्या, मैं आपको जरा बताती हूँ। आई होप दैट यू कैन सी, कैन यू सी दैट स्टिक फिगर? आई होप एवरीबडी कैन सी इट, राइट? एक स्टिक फिगर ड्रॉ कीजिए और अभी जिस यू नो एक्सिस में वो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, उसके एंड पे आप अपना ड्रीम का एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए। मैं बोलने वाली नहीं हूँ कि वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बट ज्यादातर आपकी साइज का, जो स्टिक फिगर की साइज है ना, उतनी साइज का आप एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए। दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर ड्रीम्स, राइट? इफ यू हैव डन दैट, अब मैं चाहती हूं कि आप अपनी जो दो आंखें हैं उससे बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के नीचे दो लाइंस जानी चाहिए। जैसे अपनी आंखें होती है, सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बॉक्स यहाँ है, तो अपनी एक आंख वहां जा रही है, एक आंख यहाँ, मतलब बॉक्स को कवर करना है, राइट? तो आप अपनी आंखों के इस लाइन से वो बॉक्स को कवर कीजिए, तो एक ऐसे त्रिकोण टाइप बनेगा, राइट? अब मैं चाहती हूं कि आप बीच में कहीं भी, तो ये सारी हमारी बहुत बड़ी ड्रीम्स होती हैं, तो ड्रीम्स क्या ऐसे अचीव कर देते हैं हम लोग? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे ही अचीव करते हैं, राइट? जब ड्रीम्स अचीव करने की बारी आती है तो बहुत सारी क्या आती है बीच में? मुश्किलें आती है। यस, ऑब्स्टिकल्स आती है, मुश्किलें आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, और हम लोगों को ऐसा लगता है, वो हम लोग कहते हैं कि दे आर रॉक्स, यू नो, दीज ह्यूज मैसिव रोड ब्लॉक्स आते हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है ओ माय गॉड। सो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, वो जो आपने त्रिकोण ड्रॉ किया है ना, जो आपकी आंखों से आपके ड्रीम्स तक वो जो लाइंस गई हैं, उसके बीच में आप एक कहीं कोई दूसरे कलर से या व्हाटएवर एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए, एंड दोज रिप्रेजेंट आपकी कठिनाइयां, आपकी मुश्किलें। ओके, नाउ क्या तरीका है? अभी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? मतलब आपके ड्रीम्स के विजन साइट में क्या आपको वो ब्लॉक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बीच में ही दिख रहा है, करेक्ट? ना, जब वो बीच में ही दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप
उससे प्रभावित होते हैं। अरे बाप रे, मतलब यार मुझे ना मेरा ड्रीम्स इतने बड़े हैं लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मेरे बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं, ये मतलब ठीक है ड्रीम्स वगैरह तो सब देखते रहेंगे, मेरे हस्बैंड है ना वो कर रहे हैं, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लेती हूँ, मैं मेरे बच्चों को देखती हूँ। या अरे यू नो व्हाट, आई वाज डूइंग सो वेल, फिर मेरी शादी हो गई लेकिन अभी मैं फैमिली वे पे हूँ, अब ना मुझे शायद ब्रेक लेना चाहिए। अब आपके ड्रीम का क्या हुआ, आपने अपनी ही ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी को अपना रोड ब्लॉक बना दिया, या फिर आपने अपने माइंड सेट को या अपने अपने इस गिल्ट फैक्टर को, अरे बाप रे मैं अपने बच्चों से दूर तो नहीं रहूंगी, ये सारी चीजें हमारा रोड ब्लॉक बन सकती है। और कुछ चीजें हैं जो हमारा रोड ब्लॉक बन सकती है, मैं तो ये जानती ही नहीं हूँ, ये इतना तक तो मैंने कर लिया लेकिन इसके ऊपर अगर मुझे अपने बिजनेस को लेके जाना है, मेरे पास तो स्किल सेट नहीं है, मेरे पास एटीट्यूड या माइंड सेट या जो भी बिहेवियरल चेंजेस लगते हैं वो तो मैं जानती ही नहीं हूँ, कैसे करना है, बिग बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। बहुत सारी ये चीजें जो होती है ये आपकी रोड ब्लॉक बन जाती है, आपके विजन में आ रही हैं, ये आपके विजन को ब्लॉक कर रही हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप अपने उस ड्रीम के बॉक्स को उतना ही ना रखें, जितना मर्जी बड़ा करना चाहें करें, 4 गुना करना चाहें, 5 गुना करना चाहें, 10 गुना करना चाहें, आप उसको उतना बड़ा करें। ओके, सो आई एम सेइंग कि अगर आपका बॉक्स इतना छोटा सा था ना, तो इसको आप चाहे तो 10 गुना 20 गुना जो भी करना चाहें कर सकते हैं। कैन यू सी दैट दिस इज नाउ बिकम माई ड्रीम। ओके, और अगर आपको ये ड्रीम अचीव करना है जो इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने आप में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अब मैं चाहती हूं कि आप अपने इस स्टिक फिगर को जो बहुत चिंटू सा था, छोटू सा था, इसको आप इतना बड़ा बना दे, आपके ड्रीम्स के जितना बड़ा बना दे। तो लेट्स से वी आर हियर, ये आपका स्टिक फिगर हो गया है अब। और अब आप ये कीजिए कि आपकी आंखों से ये एक लाइन यहां जा रही है और एक लाइन आपके ड्रीम्स को देखती हुई जा रही है ना। कैन यू सी वो कितना बड़ा विजन हो गया है? या तो आप इसको इतना बड़ा कीजिए, या इवन इफ यू आर मेकिंग इट स्लाइटली स्मॉलर, आप देखेंगे कि आपका जो विजन है वो बहुत बड़ा हो चुका है, राइट? और अब उस विजन के बीच में जब जो पहले आपने एक रोड ब्लॉक बनाया था, अब ये जो इतना बड़ा आपका विजन है, ये रोड ब्लॉक ज्यादा बड़ा है उस विजन से या बहुत ही छोटा है उस विजन से? आप बताएं, आप ये क्वेश्चन अपने आप के लिए आंसर करें, राइट? अगर वो बहुत ही छोटा है तो क्या आपको वो दिखेगा भी आपकी ड्रीम्स के पाथ पे? शायद ना दिखे, करेक्ट? लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जब आपकी ड्रीम इतनी बड़ी हो जाती है तो क्या आपके रोड ब्लॉक्स उतने ही छोटे रहेंगे, या आपके रोड ब्लॉक्स माने आपकी परेशानियां, आपके चैलेंजेस, क्या वो बढ़ नहीं जाएंगे? जितनी बड़ी ड्रीम उतने बड़े चैलेंजेस, जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उतने बड़े हमारे खुद के अपने आप को सिकुड़ देने वाले थॉट प्रोसेसेस। लोग बोलेंगे अरे क्या कर रही हो तुम, यूर फैमिली वुमन ऑल्सो, आपको दोनों संभालना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर अपने सिर्फ ड्रीम्स के पीछे भागोगी तो कैसे चलेगा? मैं कहती हूँ क्यों नहीं हम दोनों अचीव कर पाते? और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, आपने उनको सुना भी है इतने सारे सेशंस में, इतनी सारी औरतों ने अवार्ड्स भी जीता है। मैम जो बात कर रही थी हमसे मुझसे पहले, वो भी तो एक फैमिली वुमन है, पर उन्होंने भी दोनों अच्छे से संभाला हुआ है, किसी को निग्लेक्ट ना करते हुए। और वो करने के लिए न केवल आपको अपनी ड्रीम बढ़ानी पड़ेगी, पर मैंने जैसे आपको दिखाया, आपने किस और चीज को बढ़ाया? जब आपने अपनी ड्रीम को बढ़ाया, आपने किस और चीज को बढ़ाया? किस और व्यक्ति को बढ़ाया? यहाँ आपने अपने आप को बढ़ाया। You have to grow yourself if you want to dream those big dreams and then go ahead and achieve those big dreams, right? और ये जो प्रोसेस है constant growth का, वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ड्रीम्स बड़े होते हैं, जब हमारे चैलेंजेस बड़े होते हैं, अगर हम बड़े नहीं हुए तो our challenges will always look bigger. तो हमारा एम ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को इतना मजबूत कर दूं, इतना ग्रो कर लूं मैं अपने आप, कि मेरे चैलेंजेस हमेशा मुझे बहुत छोटे लगे in comparison to my dreams. Okay, so
मैं दोस्तों ये नहीं चाहती कि मैं हवा में बात करूं, ऑलराइट। ये बहुत सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनको अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान की जरूरत है। और मैं क्योंकि एक कोच हूं, मैं हमेशा ये कहती हूं कि आपको अगर अपने आप को ग्रो करना है, सी आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ग्रो हुए उसके साथ साथ, तो फिर उन बड़े ड्रीम्स को अचीव करने की क्षमता आप में थोड़ी सी कम रह जाती है। अगर आपको अपने आप को ग्रो करना है, बिलीव मी, एक चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी, और वो ये है कि मे बी आपको एक मेंटोर या एक कोच हायर करना पड़ेगा। और आप सोचेंगे लेकिन कोच हायर करने के लिए मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जितने पैसे आप वहां बचाएंगे, उससे 4 गुना या 10 गुना पैसे का लॉस आपको आपके बिजनेस के प्रॉफिट में या आपको आपके प्रोफेशन के प्रॉफिट में हो सकता है। एंड दैट इज अ वेरी हैवी प्राइस टू पे माय फ्रेंड्स। बहुत बहुत ज्यादा भारी कीमत है वो चुकाने के लिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना पड़ता है जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, वो आपको समझेंगे, वो आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है कि हाँ भाई, मैं किसी ना किसी को तो जवाब दूं। मेरे हस्बैंड को थोड़ी मैं जवाब दे सकती हूँ, मेरे बच्चों को थोड़ी मैं बोल सकती हूँ मेरे इतने बड़े ड्रीम्स हैं, मुझे पुश करो, मुझे पुश करो। ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपके पास एक कोच या एक मेंटोर है जो आपको कॉन्स्टेंटली पुश करता है, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू रियली वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दोज बिग ड्रीम्स। सो हाउ डू वी डू इट? मैं ये बहुत, मतलब ये आधे दिन का मेरा मॉड्यूल होता है जब मैं ये कवर करती हूँ, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। मैं आपको कुछ ठोस एक्शन प्लान देना चाहती हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करें, आप मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस मी कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप मेरे स्टेप्स फॉलो जरूर करेंगे। ये मेरे स्टेप्स नहीं है, ये इतने सारे लोगों ने, दुनिया के इतने महान महान लोगों ने ये बोला हुआ है कि योर इनकम कैन ओनली ग्रो टू द एक्सटेंट दैट यू ग्रो। टी हाफ एकर हैं जो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं कह रही। तो आप अगर बढ़ना चाहें तो प्लीज ये स्टेप्स फॉलो करें। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, कैन द, या ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर आपकी कमिटमेंट है, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड टू रियली ग्रोइंग एंड रियली अचीविंग योर ड्रीम्स एंड रीचिंग फॉर योर ड्रीम्स, एंड टू रीच दोज यू नीड टू ग्रो योरसेल्फ। सो इफ यू आर कमिटेड एंड इफ यू आर रेडी, देन लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेप। ओके, ये पहला स्टेप है आपका कि आप अभी आपके पेपर पे, आपके बुक में एक ड्रीम, एक गोल राइट डाउन कीजिए। एक गोल लिखिए जो आपको अचीव करना ही करना है। सबसे सिंपलेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये लेना है कि या तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं या फिर मुझे वेट लूज करना है। वो आई थिंक हम सारे औरतों का एक कॉमन रहता है कि मुझे हमेशा स्लिम, फिट, हेल्थी रहना है। और एक और ड्रीम रहती है कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं करना है बाबा, मुझे अचीव करना है जो भी मुझे अचीव करना है। सो आई वांट टू अर्न मोर मनी। अगर आपने कोई भी, जो भी आपको गोल अचीव करना है, अगर आपने वो लिख दिया है, ओके, तो मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जब मुझे मेरे कोच ने कहा था कि एक ड्रीम लिखो, दिस वाज क्लोज टू अबाउट 5 years ago, मैंने वहां लिखा था, मेरा पहला ड्रीम था, आई वांट टू बी अ TEDx स्पीकर। आई एम अ 2 times TEDx स्पीकर, ओके। एंड आई एम टेलिंग यू, वो वाली ड्रीम मैंने अचीव की जस्ट विद इन 2 years ऑफ राइटिंग इट, ओके। वेल, यू माइट से 2 years, so what? I mean, I worked towards it to become that, right? I told my coach I want to be able to receive the awards, the accolades जिसकी मैं हकदार हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुंदर काम करती हूँ लोगों के साथ, और recognition sometimes matters, right? इतने सारे अवार्ड्स ऑफ कोर्स उन्होंने बताया राजश्री जी ने, लेकिन yesterday I won myself the Hybris TV Woman Leader of the Year Award for Excellence in Media. Okay, so all I'm saying is कि ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप चलते रहिए, अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस करते रहिए, आप अट्रैक्ट करते रहेंगे जो भी आप ड्रीम करें, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। सो प्लीज राइट डाउन दैट, एटलीस्ट दैट वन ड्रीम, ओके, दैट कम्स टू योर माइंड राइट नाउ। नाउ लेट्स क्रिस्टलाइज दैट ड्रीम। हम उसको ऐसे वेग जो ड्रीम लिखते हैं ना, विदाउट अ डेट वगैरह, तो प्लीज वो ना फैंटेसी होके रह जाती है, वो ड्रीम नहीं बनता, वो गोल नहीं बनता आपका। सो मेक इट स्पेसिफिक, क्रिस्टलाइज इट कि मुझे इतना एडिशनल, मुझे 50,000 एडिशनल एवरी मंथ कमाना है, और ये इसकी शुरुआत होनी चाहिए अगले 3 महीने से या 6 महीने से या 1 साल से।
Don't worry about the time frame. You trust yourself. That's all I'm saying. Okay. Next thing, of course, वो example about losing weight. I want to lose weight. ऐसा weight नहीं lose होगा. कितना weight lose करना है, कितने महीनों में lose करोगे. Okay. That is step number 1. Your step number 2, friends, is this. Imagine कि आपने ये goal achieve कर लिया है आपके given time period में. आपको कैसा लगेगा. नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग जब गोल लिखते हैं ना, तो हम हमारे राइट ब्रेन से नहीं सोच रहे होते हैं, हम हमारे लॉजिकल एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन से सोच रहे होते हैं. और लॉजिकल एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन वगैरह सब ठीक है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन बस लॉजिक ही सोचता है. अरे ये नहीं हुआ तो, अरे वो नहीं हुआ तो, अरे ये, अरे वो. जब राइट ब्रेन पिक्चर में आता है ना, राइट ब्रेन इमोशन से सोचता है, राइट ब्रेन कुछ कर गुजरने की चाह से सोचता है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल. आप इमेजिन करें कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है डिजायर्ड टाइम पीरियड में, और अब आप ये लिखें या सोचें कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है. 3 things that you would feel when you achieve this dream. Will you be more confident? Will you be more excited? Will you have more responsibility towards making your dreams bigger? Would you want to work on bigger dreams? ये सारे आपके emotions से आ रहे हैं. So feel is very important. Continuing step 2, दूसरा point है step 2 में, what would you see? ये अगेन राइट ब्रेन का कमाल है. ओके, आप अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो 3 चीजें ऐसी लिखें जो आप देखेंगे. क्या आप इंक्रीज बैंक बैलेंस देखेंगे? क्या आप अपने आप को उन कपड़ों में फिट होता हुआ देखेंगे जिसमें आप कॉलेज में फिट हो रहे थे, या जिसमें आप शादी से पहले फिट हो रहे थे, जो भी है. क्या आप अपनी फैमिली को ज्यादा खुश देखेंगे क्योंकि ज्यादा इनकम आ रही है, या आप फिटर हैं, या आप हेल्थियर हैं? तो सबका उद्धार उसी में होता है, राइट. जब माँ या जब गृहिणी फिट होती है, हेल्थी होती है, अर्निंग होती है, कॉन्फिडेंट होती है, पूरी फैमिली का उद्धार हो जाता है उसमें, राइट. बिकॉज व्हेन शी इज हैप्पी, होल फैमिली इज हैप्पी. आप हस्बैंड से पूछिए, वो यही बोलेंगे. ओके, सो वेल, दैट इज योर स्टेप नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, सी. ओके, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू हियर? क्लोज योर आईज. 3 चीजें जो आप सुनना चाहेंगे. वाओ पल्लवी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, आपकी बेटे बेटी भी बोल रहे हैं कि मम्मा, you're my inspiration, mama, I love you, I'm so proud of you. Do you want to hear that? Do you want to hear your friends, your colleagues say आपने अपनी लाइफ ये 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या बदली है? कमाल नहीं आपका, जवाब नहीं आपका. So that is what you want to hear. That's your right brain. Okay, let's go to the step number 3. Step number 3 is आपके पास internal resources कौन-कौन से हैं? Okay, please ask yourself. Internal resources का मतलब ये कौन से इंटरनल रिसोर्सेज हैं जिनको आप अप्लाई कर सकेंगे ताकि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सके. तो क्या आप में कॉन्फिडेंस है? क्या आप में डिटर्मिनेशन है? कर गुजरने की चाह. मैं कुछ हो जाए, मैं अपने ड्रीम को नहीं छोड़ूंगी. कुछ हो जाए, मैं अपने ड्रीम को अचीव करके रहूंगी. उसके लिए भले मुझे 15 घंटे नहीं, 18 घंटे, 20 घंटे प्लीज, 18 घंटे काम करना पड़े दिन में. उसके लिए चाहे मुझे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, मैं करूंगी. उसके लिए चाहे मुझे अपनी फैमिली को बैठ के एक्सप्लेन करना पड़े कि मेरे ड्रीम्स अगर मैं अचीव कर पाऊंगी तो मैं ज्यादा खुश रह पाऊंगी, आपको ज्यादा खुश कर पाऊंगी, राइट. सो डू यू हैव दैट डिटर्मिनेशन? डू यू हैव परसिस्टेंस? ये लंबा खेल है दोस्तों, ये छोटा मोटा खेल नहीं है. ये क्या 3 महीने में, 6 महीने में अचीव करने वाली चीजें नहीं है. वैसे भी गोल्स होते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बड़े चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा. एंड आर यू परसिस्टेंट कि मैं करती जा रही हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें हैं. ठीक है, इमीडिएटली आपको खुश करने वाली चीजें नहीं है, लेकिन काम करते रहिएगा. आई एम टेलिंग यू, जमाना आपकी मुट्ठी में होगा. दैट इज समथिंग दैट आई कैन स्पीक फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट माइंड. सो द थर्ड स्टेप वाज इंटरनल रिसोर्सेज. अब 4th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या क्या है आपके पास? इसका मतलब क्या है भाई? आपके फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, आपकी कॉलीग्स, फैमिली, कौन से प्रोफेशनल्स. अभी हम सब फेम्प्रेन्योर्स ग्रुप पे हैं. क्या हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? क्या आपके पास हेल्प अवेलेबल है? क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव है? क्या आपकी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी अचीव कर, जो भी
आगे बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और वो आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बोले ये कभी नहीं होगा, ये ऐसे होता नहीं है। उन फ्रेंड्स को जरा छोड़िए, जरा नहीं मैं तो कहूंगी दूर भागिए ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों की संगत में आइए जो कॉन्स्टेंटली आपको कहें नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट think of all these things. These are your external sources. Second type of external sources, कौन से additional skills हैं, कौन सी additional attitude और mindset है जो आप apply करना चाहेंगे, जो आप सीखना चाहेंगे? क्या कर सकते हैं आप? कुछ कोच हायर कर सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो भी एक्सटर्नली आपको अलाउ करे ग्रो करते रहने में, ताकि आपका ड्रीम आप अचीव कर सकें, क्योंकि आपका ड्रीम बहुत बहुत बड़ा है. All right, so fourth step very clear, external resources. ठीक है. अब fifth step, मैं कहूंगी कि बहुत क्विकली मैं फिफ्थ और सिक्स स्टेप की तरफ जाऊंगी, बिकॉज फिफ्थ और सिक्स स्टेप थोड़ा लंबा है एक्सप्लेन करने में, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है गाइस. ओके, व्हाट डू यू हैव टू डू टू अचीव योर गोल? तो अभी आपके पेपर पे ऐसे 3 कोई स्किल्स लिखिए, कोई हैबिट्स लिखिए, कोई बिहेवियर्स लिखिए जो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जो आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करने पड़ेंगे, ताकि आप उतने बड़े बन सको, ताकि आप उतना अपना बड़ा ड्रीम अचीव कर सको. ओके, तो इफ इट इज वेट लॉस, या आप कहें ज्वाइन अ जिम विद अ पर्सनल ट्रेनर, या आप कहें 3 चीजें, राइट? यू हैव टू राइट. मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करूंगी, मैं बाहर का ज्यादा नहीं खाऊंगी, घर में चटर फटर नहीं खाऊंगी, टाइमिंग्स में मेंटेन करूंगी, मैं जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूंगी, that kind of thing. I will quit drinking, I will quit fast food, I will quit smoking. This is, see, I'm sure there are some men also listening, and even women, please, I mean, there is no judgment here. Agar any of these are something that you're doing, you need to be able to take this step, right? And allow somebody to kick you. मतलब एक हमको एक हमारी तशरीफ पे जब एक पड़ती है ना रोजमर्रा की जिंदगी में कि हाँ भाई, come on, let's do this. That's when we grow. Okay, next thing, who do you have to be, okay, to be able to achieve your goal? Which means जो करते हैं हम, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या बनना चाहते हैं और कौन बनना चाहते हैं, कितने बड़े बनना चाहते हैं. सो who do you have to be? मुझे ये चाहिए कि आप अभी अपने पेपर पे ये लिखें 3 कैरेक्टर ट्रेट्स जो आप अपनाना चाहेंगे इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल. क्या आपको ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है? क्या आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन, मतलब इमीडिएटली मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मुझे बहुत लंबा चलना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा डालनी पड़ेगी? क्या आपको वैसा वाला माइंडसेट अडॉप्ट करने की जरूरत है? क्या आप अपने जो एक्सक्यूजेस हैं, अरे मैं जल्दी कैसे उठूं, मेरे बच्चे मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा? These are the things that are your character traits. आपको ये adopt करने पड़ेंगे. Doctor, I just need probably the last 2 to 3 minutes. I need to be able to help them understand कि ये, okay, let's skip this step because this is slightly longer to explain. Now, I want you to take some action, guys. Okay, this is your action time. I want you to immediately, right now, on your paper, write down 3 immediate actions जो आप लेंगे जरूर, maybe even starting today. आज से बेहतर कोई टाइम नहीं है. All we have as human beings right now, हमारे को कल की कोई गारंटी नहीं है, आज की गारंटी है, अभी की गारंटी है. So please ये 3 चीजें लिखें. I'm giving you example. ये पर्सन में मैं इस पर्सन को अपनी बागडोर देती हूँ. आई विल बी अकाउंटेबल टू दिस पर्सन. दैट कुड बी योर वन फर्स्ट इमीडिएट एक्शन. सेकेंड कुड बी आप एक डेट डालेंगे कि मेरे को ये एक्शंस की कंप्लीशन, मतलब जो भी 3 एक्शन मुझे लेने अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, ये 3 एक्शंस मैं इस टाइम तक कंप्लीट करूंगी. ठीक है. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, पहले 3 आप इमीडिएट एक्शंस कौन से हैं वो लिखेंगे. Okay. Second thing you will do is you will decide कौन आपकी accountability partner या आपका buddy कौन होगा जो आपको constantly push करेगा to achieve your goal. And third, put a time for completing these 3 action steps that you have just written for yourself. Is everybody very, very clear on that? I'm really hoping that you are extremely clear on this. I just want you to remember before I leave you today कि आप खुद
एक हीरो हैं. It is not about looking outside for a hero. आप खुद अपने हीरो हैं, and that is how I want you to really go out there and live your life. I want you to really be able to seize the moment, okay? Grow your dream big, but in order to achieve that big dream, you need to grow yourself really, really big. And I think I have given you a brilliant action plan in just about 30 minutes कि आप कैसे अपने आप को बहुत बड़ा कर सकते हैं. So I'm really hoping, happy International Women's Day. I'm really hoping on this International Women's Day that I have been able to add something extra to your life. I want to say बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी व्यापार जगत का for giving me the award of Trendsetter Woman Individual of the Year 2022. I don't know कि मैं इस अवार्ड की हकदार हूँ या नहीं. बहुत सारी और औरतें हैं जो बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने वो चक्का चलाना शुरू किया है और वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ेगा in the times to come. So thank you, thank you. Thank you very much, ma'am, for your valuable time. I just heard my name in between कि राजसी ने इतना सब awards बताए, लेकिन और एक award जो है नहीं राजसी, मैंने आपको वो अवार्ड बताया नहीं था ना. वो कल ही तो मुझे मिला, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था. That is why congratulations again for that award जो Trendsetter का आपको मिला वो. And we really enjoyed the session. सबसे पहली बात बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर गई is do not have the box, think out of the box. नहीं, box चाहिए ही नहीं हमें. So thank you very much, ma'am, for your time. Thank you. And Namaste. Have a wonderful day, all of you. Live. Thank you, ma'am. Namaste. Wow. Thank you so much, Pallavi. Yeah, and Pallavi, so I like, you know, that particular tagline which you have mentioned in every slide, that is listen, learn, implement and grow, right? So and let me tell you one thing. So ये जो आप बोल रहे हो ना कि गोल जो है उसको लिख दो, है ना. वंस यू विल राइट योर गोल्स एंड एक्शंस, चीज़ें होती है, आपको नहीं पता है कैसे होगी, बट होगी, आपकी लाइफ में होगा ज़रूर. एंड पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस दिस. लेट मी टेल यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड इट वर्क्स. योर सबकॉन्शियस माइंड starts working on it, and वो आपको भी नहीं पता होगा, लोग सामने से आएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिक बनती जाएगी, पाथ बनता जाएगा और आपका ड्रीम जो है वो आपके सामने होगा बिल्कुल 100%. एंड thank you so much, Pallavi, and what an energy. Thank you so much for making this particular session very live, and it was superb. It was simply awesome. It was Thank simply you, awesome. डॉक्टर क्योंकि हम इंडियंस बॉलीवुड को लेके इतने भावुक हो जाते हैं, मैं शाहरुख खान जी का वो लाइन बोलना चाहूंगी कि सारी कायनात आपके उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके पीछे जुड़ जाएगी और आपको रिसोर्सेज देगी. आप बस लिखें, आप बस विजुअलाइज करें, आप बस बोलें अपने मुंह से, ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं हासिल करना चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर करते हैं ऑल द टाइम. Thank you so much. Thank you so much, Pallavi. Thank you very much, ma'am. We are heading on to our सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, विश्वास दें. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम. मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान.
पहचान। हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। Hello everyone, I am Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a woman entrepreneur, do register your startup idea. Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is, if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as, having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women's health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupen Sanstita. So we have heard this बहुत सारी बार. शक्ति रूपेण, विद्या रूपेण, अन्नपूर्णा, कितने सारे रोल्स हैं हमारे. एंड सिमिलर वे दिस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग. हमने क्लाइमेट चेंज देखा और हमने देखा कि हम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं. हमने ये भी देखा कि हम हमारे ड्रीम्स को कैसे रीच आउट कर सकते हैं. शी शोड ऑलमोस्ट अ ब्लूप्रिंट के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हमारे ड्रीम्स और हम कहाँ हैं और हमारे ड्रीम्स कितने बड़े हैं एंड हाउ क्विकली वी कैन रीच देयर. अब हम कम्युनिटी ड्राइव देखेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी ड्राइविंग है. How as a community we can grow together. Without wasting any more minute, let me introduce our moderator, Jeannie Wadhwan, founder to a non-profit organization, Daughters Are Blessings Foundation. What a sweet name. Every girl child should know its worth because she's a blessing to the world. This is because girls of today are the women of tomorrow. Visions to this foundation are plenty. To name a few are: draw people to common work, give hope for a better future. We try to bridge the gap between rural and urban areas, helping them with educating them on nutrition, sanitization, very important, education. Every girl child should know its worth because she is a blessing to the world. Empower people with positivity. With beautiful positive note, over to you, ma'am. Thank you so much, Rajshri, for introducing me. Thank you, Dr. Praveen, for giving us all this beautiful platform. And happy International Women's Day to everybody. So we start this beautiful session with powerful women, which I see on my screen. And I would just like to introduce one by one, which is first is Sanjana Rajpara. She's the founder of Bizo, B-I-Z-O, Bizo Networking Private Limited, 2 skin and cosmetic clinics, one in Praladnagar, other in Scotland. That's nice. Landed in India in 2014 after 13 years in UK. Done advanced diploma in business administration and ACCA. Thank you so much, Sanjana, and welcome board.
The second, we have Shweta Padma Mohanty. She has immense experience in market research, business consultation. She is a skilled business networker. She believes the success of entrepreneurs today is about the agility to maneuver choppy waters. That's a strong one. Thank you and welcome board. Vishali Vaishnav, founder of Multitasking Mommies of India Ka Fashion. She's an ardent entrepreneur, influencer, 30 years of experience in industry. Started fashion designing in 2000. She's a woman with many feathers in her cap. Thank you so much and welcome Vishali ji. Ritu Gurai, founder of Journey About Must Mom, JAM, and Speed Networking, Sutra. JAMS is a social support group of networking for enterprising mothers. Speed Networking Sutra are offline meets for women entrepreneurs. Ritu is a performing artist, works with Shamak Dawar in his core troupe. That's nice. She is an NLP practitioner, life coach. And yes, her guru mantra, even if you cannot do great things, let's do small things in a great way. Wonderful, Ritu. Thank you and welcome board. Nidhi Pandya, a person who I know from decades now. She is a founder for 2 Facebook communities. She's a mother, educator by profession, influencer, blogger. She recently launched 360-degree branding. Thank you, Nidhi, and welcome on board. These are the powerful women which we will hear from their stories. Thank you, everybody. So we start with Shweta Padmaji. Is she here? Yes. Shweta ji, you know, when I was just going through your bio, it's a very strong one. You're a market research and business consultant. Seems like a very male dominating. It's, you know, I don't see a woman here, but you know, when I see you, I am proved wrong. So do you agree that this is a male dominating, and how do you cope up with? Wonderful. So before मैं इस मैंने प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सबको मेरे पैनलिस्ट फेलो पैनलिस्ट को एंड जो सारे व्यूअर्स हैं उनको ये हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहूंगी एंड my best wishes and appreciation for व्यापार जगत कितना अच्छा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके you know we all are getting this chance, viewers को भी panelists को भी and obviously a lot of other people who will be here. And I have to say, Dr. Praveen Parmar, thank you. Wonderful job, and you're looking very handsome. The only man among all women panelists, huh? So yes. So now answering your question, मैंने जब start किया after my MBA, market research and consulting. So research and consulting में it was a field which was fairly balanced, in fact, because data interpretation, field का जो data collection and all that was ज़्यादा, you know, males used to do it. But when it comes to analyzing and all, अच्छा था, it was still a very balanced industry. But yes, in terms of covering geographies, clients को service करना, pan India, sample sizes cover करना, उसमें as a woman sometimes and different TG के साथ, target audience के साथ interact करना, sometimes it was a little challenging, but उससे काफी कुछ सीखा, you know, so that makes you strong. And with that experience, जब मैं खुद business leadership league, now that is a community. Unfortunately, we don't have a lot of women members and founders. This is for business owners, but बहुत कम है. That is where we could not get a lot of participation for this event. But that is, I'm very happy that ये बहुत women focused communities है. व्यापार जगत is doing that. हम सब इकट्ठा हो रहे हैं. Women from all fields are coming together to act as influencers. So I see the bridge, the gap really narrowing day by day. Excellent, excellent. And you are a motivation to everybody. So, you know, in a man's world, you made your place and it's beautiful. So when I need some market research, I'll definitely connect with you. Definitely, definitely. Coming to our next speaker, Ritu. Ritu, tell us about your community and how did you start? You know, when I just saw your jam, it's really something different. And then it's Networking Sutra. So 2 names, which is like just so different. So just tell us about your journey. तो हमारी ब्रांडिंग इज अकॉर्डिंगली मॉम्स की कम्युनिटी है, तो इसके लिए उसका नाम मॉम्स है.
और ये हाँ। मॉम, प्रेग्नेंट लेडीज से लेके ग्रैंड मदर्स तक हैं, सारे एज ग्रुप हम कवर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो एज वाइज, एरिया वाइज, प्रोफेशन वाइज ऑल सोशल मीडिया में है आप लोग? हाँ जी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आप जो भी बोलो हम सब जगह हैं। बट हमारा मेन भी है कि हम ऑफलाइन भी मिलते हैं। इनफैक्ट आज भी हमारे दो बहुत बड़े के बारे में, जहाँ एंड यूजुअली ये सारे जो मीट्स और इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स जो होते हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इट इज प्राइमरीली कि विमेन की एम्पावरमेंट हो, एनरिचिंग हो, वो नया सीखे। नहीं तो क्या होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, नहीं तो वो किटी पार्टी ना कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और फिर निकल रहे हैं। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, हर बार वो करना पॉसिबल नहीं है, वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी हम मिले, कुछ नया सीखें, कुछ नया समझें, क्योंकि हमारे हिसाब से द मदर इज नॉट जस्ट फैमिली मेंबर। हमें लगता है कि वुमेन और जो मदर होती है वो कोर ऑफ द फैमिली होती है। अगर हम उसको एम्पावर करेंगे तो वो पूरी फैमिली को एम्पावर करेगी। तो ये क्या ग्रुप है स्पीड नेटवर्किंग सूत्र में, ऑल वुमेन आर इनवाइटेड। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हम सिंपली क्या करते हैं, मीट ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको कनेक्ट कराते हैं। फिर आप आगे आपकी मर्जी कि आपको कैसे उसको बिल्ड करना है और कैसे आपको नेटवर्किंग करनी है, कोलैबोरेशंस करते हैं। क्योंकि हमारा ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मानना है कि हम खुद ही इकट्ठा हो कैन बी वेरी गुड एंड एम्पावर ईच अदर। सो इट्स जस्ट एन ऑफलाइन वे, क्योंकि हर चीज तो ऑनलाइन हो नहीं सकती। अब तो पैंडेमिक भी खत्म हो ही रहा है। हाँ, वो तो है। इट्स हाई टाइम कि अब सब मिले, वापस इकट्ठा होए एंड वी गेट बैक इन एक्शन विद द सेम रिगर। Such a nice thought, Rituji. I mean, to get mommies बाहर अपने एक cocoon से बाहर आने के लिए, वो आप इतना उनकी community build करने के लिए, you're doing so much. It's a wonderful initiative. Thank you again. Now we go to Nidhi Pandya. Nidhi, आपका growing buddies is really growing. आपका नेटवर्किंग ग्रुप है एंड आई थिंक आप एक्टिविटीज करते हो कम्युनिटीज में, तो आप थोड़ा अपनी कम्युनिटी के बारे में बताओ। और जो आपका ये अभी नया एक वेंचर स्टार्ट हुआ है, हाउ डू यू ग्रो, हाउ डू यू मोटिवेट वुमेन अराउंड? आई मीन, ये ग्रोइंग बडीज सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड है या कैसे? So, hi Gani, thank you for this wonderful question. Actually, firstly, I would love to, wish everyone a very happy International Women's Day. I see all my dear friends, Gani is here, Shweta, Padma, Vaishali, Vaishnav, Ritu. So we are all connected via Growing Buddies, and they are all a part of it. Ritu is also doing amazing. You are doing great with Daughters Are a Blessing. Shweta, Padma is doing great in her fields. Vaishali, Vaishnav is doing great. We have a lovely host, Rajashi. I'm being watching her, and all thanks to Mr. Pravin to give us this opportunity, sir, for celebrating this amazing International Women's Day together. So yeah, talking about Growing Buddies, it's a community not just women focused. We have males also in that. And जैसे आपको पता है, Growing Buddies community धीरे धीरे बढ़ते जा रही है. It's been 3 years, 4 years together. We've reached a level of 15,000 members in it. तो यहाँ से हम ग्रो करते करते एंटरप्रेन्योर्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं. सो दैट इज अनदर कम्युनिटी ऑफ ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स. वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग मीट. अभी जो मेरा 2 years सेलिब्रेशन हुआ, वहाँ पे वी हैड लॉट ऑफ स्पीकर्स, ग्रेट पर्सनालिटीज कमिंग इन. नेटवर्किंग मीट थी. वी ट्राई टू प्रोवाइड लीड्स एंड एवरीथिंग. एंड जो ग्रोइंग इंडिया मेरा नया स्टार्टअप है, दैट्स एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ I am giving more emphasis to artisans, weavers, and the local karigars, bringing them on a digital platform, creating a marketplace like Amazon, Flipkart, and Myntra. This is all about it. Just helping, trying my best to help people and connect and provide leads and make them more visible in the market. So it's like building communities through your e-commerce. मतलब ई-कॉमर्स के थ्रू या ऑफलाइन ऑनलाइन मीट्स भी आप करते हो? ऑफलाइन ऑनलाइन मीट्स, यस, बिकॉज 2 years as Ritu said, काफी पैंडेमिक्स था तो ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे थे. एंड इट्स हाई टाइम कि अब हम ऑफलाइन स्टार्ट कर दे, मिलना शुरू कर दे. आई ऑलरेडी हैड माय इवेंट, a lot of networking meets every month, so to bring everyone out again back in the show.
Wonderful, wonderful. We'll come back again. Maybe we want to know about your new venture also. We'll come back to you again. Thank you so much. Vaishali ji. Vaishali ji, just आपसे, you know, when I was like going through आपका, you've 13 years of experience, fashion, and I just want to know कि क्या था जो आपने एकदम ये स्टार्ट किया? I mean, आप एक फाउंडर हैं मॉमीज ग्रुप की, इंडिया का फैशन, तो इट इज सो मेनी थिंग्स जो आप कर रहे हो, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? वो पहला मोमेंट कौन सा था? First of all, happy Women's Day to all the powerful panelists, our moderator, our host, and all the viewers. Thank you so much, Ginny. Well, the idea of multitasking mommies came up when I actually became a mom. And, you know, I left my corporate job and I was a full-time mom. And then gradually I started working from home along with taking care of the baby. And that's how I realized that multitasking and managing so many tasks in such a nice way is a forte a woman has in a much better way as compared to a man. So that's how the name came into my mind, because while we shifted from Mumbai to Ahmedabad in 2014, I was seeing women around me who were struggling to make a mark after motherhood, who wanted to make a comeback in a career to follow their passion, but somewhere something was stopping them. And that's where I realized, you know, I as a friend, I always used to, you know, support such women that yes, you should follow your passion, you should do this, you should do that. Out of just driving out, you know, my friends to do something to come out of that cocoon, because somewhere moms, when they want to make a comeback, I realized they have lost that confidence which they always used to have as a single person who's out and working as a corporate or as an entrepreneur. So that's how, you know, while I was pursuing my online business from home, I had an invitation from Women Economic Forum to speak on how social media can drive businesses. So while I was there in New Delhi, I was awarded. And when I came back from there, many of my friends who got interested to know what exactly was that were calling me that let's meet over a coffee, let's meet over a tea. And I thought meeting 7 different people at different time, I guess why not call all 7 of them at one place and just chit chat with them. Maybe some of them don't know each other, so they will get a chance to network. And it so happens that on that particular day, somebody came to know that Vaishali is hosting a meet. Somebody said that I'm coming along with my friend. I'm bringing a friend of mine. And we were 20 people on that particular day for the coffee meet. And that's how we gelled with each other. And we thought, why not meet every month? And that's how it all started in 2019. And apart from Facebook community, we are more focused on offline events because we believe 360-degree development of women. It covers parenting, it covers motherhood, it covers business development, it covers women's healthcare. Everything which you know is important for women is covered here. We are in Ahmedabad. We do our offline activities here. Of course, in our Facebook group, we do have women from across India and abroad. We just had our first meet at Baroda, and now we are planning to have our offline meets and events happening in other cities of India as well. Wonderful, Vaishali ji. What a thought कि जब आप मदर बने उसके बाद you actually realized कि बहुत और भी ladies हैं. That's so nice, Vaishali ji, for having you here also. Sanjana ji. Sanjana, what made you come back to India? I'm very curious to know that. After like आप बाहर शायद 13 years रहे हो UK में, and suddenly आप India आके you started Bizo networking. पहले तो आप मुझे बताओ ये Bizo networking है क्या? And why coming here, you know, you decided to start this? Jeannie ji, I'm sorry to interrupt. Sanjana is not here. We might have to skip this question. Sanjana, so she's not attending? Currently, she's not here. So we will, you know. Okay, we'll move on to other questions.
I want to know from all you women, out of my curiosity, what are the challenges you faced? So we start with Ritu. I'm sure, when you started this, बहुत सारे challenges आए होंगे आपको, Ritu. So what are those and how did you overcome that? I think जो सबसे बड़ा challenge हम आज तक face कर रहे हैं, at least with mothers, is how to help them get over their guilt. वो हर बार में इतना they just keep feeling guilty. अगर वो बाहर workshop के लिए भी आ रहे हैं, it's almost कि वो physically present है पर mentally absent है, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि बच्चा मेरा ट्यूशन गया, टिफिन बना, खाने को चाय कौन देगा. तो वो गिल्ट फैक्टर मैं अभी तक 8 साल से निकाल नहीं पाई हूँ. एंड दूसरों में क्यों, ये बात तो खैर मुझ में भी है. मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर काम करने जाऊंगी या कॉर्पोरेट में वर्क करूंगी तो मेरे बच्चे को जिस तरह से मैं संभाल पाऊंगी या रेस कर पाऊंगी अगर मैं घर पे होंगी तो ऑब्वियसली काफी डिफरेंट होगा. मुझे याद है आज जब जैम्स के वर्कशॉप शुरू हुए थे, पहली बार जब मेरे को उसको डे केयर में रखना पड़ा, क्योंकि वो वर्कशॉप उसके एज के अप्रोप्रिएट नहीं थी, तो मेरी जान जा रही थी, बट वो प्लंज लेना पड़ा. सो ऑनेस्टली इट इज ऑल अबाउट दैट लीप ऑफ फेथ. लीप ऑफ फेथ सिंपली मीन्स कि आपको वो जंप लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आप गिल्ट में ही और शर्म में ही अटके रहोगे तो आपकी गाड़ी पटरी से आगे नहीं बढ़ने वाली है. सो या गिल्ट. एंड अभी आज की तारीख में क्योंकि बहुत मिक्स टाइप की औरतें और माएँ भी हैं, तो स्टेरियोटाइप्स ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है. बहुत सारे जेंडर बायसेस हैं कि आदमियों को क्या करना चाहिए, औरतों को क्या करना चाहिए. हम जब तक उस विशियस ट्रैप में अटके रहेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो एंड इवॉल्व एंड एम्पावर ईच अदर. तो स्टेरियोटाइप्स, पेट्रियार्की, कल्चरल कंडीशनिंग, सेल्फ गिल्ट, lack of self-worth, ये सब चीजें I think are the biggest challenges amongst all the mothers and all the women that I meet via Journey About Mass Moms or Speed Networking. Lovely, Ritu. And yes, what you said about guilty is 100% I agree. इतना guilt factor है ना हमारी society में, I don't know, and I'm sure आप जैसे strong women are helping everybody out to come out that guilt factor. All the best for your venture. Thank you. जी, और आपके पास भी बहुत challenges होंगे. So you have a lot of stories to tell us and motivating us. Yes. So a few things here. Business Leadership League is the ecosystem जो I founded in 2019. Today इसमें SMEs हैं, MSMEs हैं from all over the country. Now यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत women centric and हमारा जो Business Leadership League इस ecosystem है, इसमें clearly there are 4 principles around which हम companies को help करते हैं to grow. हमारा सिर्फ एक ही criteria है कि what is your aspirational value? How do you want to grow to the next level? हमारी weekly meets होती हैं online, Saturdays with BLL. You can all check our website www.bll.org.in and we are very active on all social media also. तो एज अ इकोसिस्टम में बहुत सारे लॉट ऑफ यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट बहुत सारे कम्युनिटीज को जानती हूँ. मैंने हमेशा देखा है कि एज कम्युनिटीज हमें साथ आके काम करना चाहिए एज इकोसिस्टम. बहुत सारे वुमेन सेंट्रिक कम्युनिटीज बोलते नहीं बीएलएल में बहुत सीरियस डिस्कशंस होता है, इट इज नॉट फॉर अस. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो एडिंग टू व्हाट ऋतु सेड कि हमारी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है. अगर आपको सीरियसली स्केल करना है एंड 100% आप कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, जस्ट थोड़ा तरीका एंड स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा अप्रोच को. सो यू नो दैट इज वेयर आई वांट ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कि आप और फोर्थकमिंग हो एंड यू नो बी पार्ट ऑफ मेनी नेटवर्क्स, कम्युनिटीज, एक्सपोजर बढ़ाए, डिसीजन ले. एंड एनवायरमेंट, वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट्स. ये नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज हमें एनवायरमेंट देती हैं आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, एक न्यूट्रल ओपिनियन हो, सही गाइडेंस मिले. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस एंड हु वुड वॉच दिस कि आप रेलेवेंट कम्युनिटीज एंड नेटवर्क्स का पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए, और उसमें जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम. So just come over your self-limiting beliefs, and Business Leadership League would want to work with communities. अगर आपको कुछ specific activities चाहिए for your members, we would be most happy to help. In fact, I will connect a company to all of you and through Dr. Praveen Parmar, where they can help all your members to get their GST, to get online on Amazon, Flipkart, so that आप थोड़े organized way में and you can scale up and become better.
because जो आप कर सकते हो, why not do it in a better way, more scalable? So you know, have ATM cards. They have special ATM cards. So I just met them yesterday. मैंने बोला मेरे ज़्यादा B2B businesses हैं, उनके लिए relevant नहीं है. But all of you who are selling online, कुछ products आप कर रहे हो, आपके लिए बहुत relevant है. And I'll make sure that through Dr. Praveen Parmar ये जो company के details and ये facility आप सब तक पहुँचे. Wonderful. Shweta Padma ji, when I was hearing, मुझे भी I just thought of telling everybody कि अगर एक लेडी घर चला सकती है बहुत तरीके से, एक बजट से, तो हम लोग कंट्री भी चला सकते हैं, कंपनी भी चला सकते हैं. हम लोग घर तक क्यों सीमित रहते हैं? So I think आप जैसी ladies, they will help them to understand the power of investments and market research and everything. Wonderful, Shweta Padma ji. Coming to Vaishali ji. Vaishali ji, I'm sure आपके भी बहुत challenges होंगे because अहमदाबाद और मुंबई में as a city wise thought process बहुत अलग रहता है. तो आपने क्या challenges लिए? Initially, सबसे पहले challenges जैसे रितु जी ने बताया that guilt which is always there behind you as a mother, जब 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को उनका रूटीन छोड़ के आपको बाहर आना है, वो तो है ही. But then what we did is कि we tried making our meets kids friendly. We used to dedicate a corner for kids where they can do activities and all, whereas mothers are in the workshop, attending the workshop. They can keep an eye on their kids. We have mothers who are into kids activities, so they can also help us managing those kids which are there at the day of the meet. So that way we found a way out. And another thing, challenge which we were facing is that when we used to have our business meets, हमारे दूसरे events के साथ-साथ business meets होती हैं, and business meets are serious business. तब हमें ये problem होता है कभी-कभी कि there are some women वो घर पे उनके घर के लोग ऐसा समझते हैं कि she goes to a kitty party. So we need to make them understand कि आप घर पे ठीक से communicate करो that we are having a serious business meet and this is not a kitty party, and team events are never like a kitty party, and it is something where you always gain something for your development. तो उनको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो हाउसीज खिलाते हैं, जो ये करते हैं वो करते हैं, तो फॉर देम कभी-कभी वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है घर वालों को समझाने के लिए कि भाई मैं जहाँ जा रही हूँ, it's serious work, it is something really for my development, it is not that conventional kitty party types. तो ये अब हम धीरे-धीरे इसको भी वो कर रहे हैं. We are trying to involve family members. वैशाली जी, कितने आपके मेंबर्स हैं आपकी कम्युनिटी में अहमदाबाद में? मतलब क्योंकि सिटीज, आई डोंट नो, मैं तो अहमदाबाद कभी गई नहीं, तो बॉम्बे को कंपेयर नहीं कर सकते, बट जैसे बॉम्बे में एवरी पार्ट में कम्युनिटीज हैं, तो आपके अहमदाबाद में भी होंगे, तो चैलेंजेस उसके भी होंगे आपके पास? अहमदाबाद में मुंबई के कंपैरिजन में हमें डिस्टेंस का उतना इश्यू नहीं आता है. ओके. अहमदाबाद में वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 150 मेंबर्स ऑफलाइन. ओके, दैट्स नाइस. कि हम महीने में 2 से 3 इवेंट्स हमारे होते हैं अलग-अलग थीम पे, एंड विथ अ विजन कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप में वैल्यू एडिशन करे. So Ahmedabad में we are 150 women, and online we are around 5,000 to 6,000 women हम जो connected हैं in activities से. So apart from our online sessions and online meets and events, we are also focused on city-wise offline events. Wonderful, wonderful, Vaishali ji. कि आप सब communities and how you all are managing it is so nice. इतना beautifully आप लोग उसको उसका concept लेकर उसको सब, that's such a nice thing. Coming to Nidhi Pandya, I've seen you growing, Nidhi, and now I think your community is 20,000, which I see. तो उसमें with 20,000 there are 20,000 challenges, I'm sure. तो आप कैसे मैनेज करते हो उसको, एंड मतलब व्हाट इज द की फैक्टर टुवर्ड्स योर कम्युनिटी? So as everyone, I agree with everybody's, summing up with Ritu's challenges, with Vaishali's, with Shweta Padma's, everything, because this is a male and female
female oriented community. So there are challenges ke there are women centric, jo agar stereotype pakde to there are few ladies who would love to join, but due to some certain restrictions or something they're not able to join into the community because wahan male oriented people hai. So there are certain challenges ke unko so you also have those kind of things, because I was just hearing Ritu, I was hearing Vishali ji, I mean mommy groups mein mujhe laga ye challenges hote hain, guilt factor everywhere, because jahan male dominated society hai, to jaise ab hum grow kar rahe hain, it will take time and bahut changes aaye hain past years mein. It's not that ki women ko respects nahi hai ya ye nahi hai, of course males are also trying to pull us up, but there are certain still restrictions and certain traditional societies jahan nahi chahte ki unke ghar ki औरतें bahar nikle, ya bhale hi wo well to do ho, wo kitni bhi talented ho ya kitna bhi hai, but no, there are certain restrictions in the family bars jo traditionally downtrodden families hai, wo still they kind of carry off ke hum bahut kuch nahi kar sakte because of certain restrictions in the family. So one is that, and secondly jahan bahut zyada ladies hoti hai, this is my past experiences ke hum bolte hain ki hand hold karo, haath utha ke sab saath chalo, ye karo wo karo, everywhere talks I have seen, like and I do believe, but there are still ladies jo स्वीट टॉकर्स होते हैं, who would never want कि दूसरी कम्युनिटी आगे आए या उस मतलब I believe collaboration always works together. मैं कुछ कर सकती हूँ, आप कुछ कर सकते हो, and that is my tendency that I always try to uplift others also and collaborate with them. But there certain challenge in a female के अंदर ही होता है कि that they try to pull you down or try some certain messages to pass on कि ये मत करो, ये communities नहीं join करो, if आप ये community में है तो वहाँ मत आइए, ये मत कीजिए. So that is a bigger challenge अगर हमारी society में if we try to remove and resolve such kind of things, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, and I am sure we can definitely build a better India. Wonderful. Yes, we can, and we will. We need to cut this from the grassroots level, Nidhi. We will definitely. Coming to Shweta Padma ji, we need your tips, Shweta Padma ji, because I'm sure every woman would want to know the market tips, just the basics. अगर आप हमको एक दो tips बता सकते हैं, that will help a lot of women in today's world to decide that it will be an easy decision for them. I feel. So this is, Ginny, this is regarding business you're talking about? Yes, the market research and all that. क्या करना चाहिए एक when a woman comes to you? So how do you actually tell her that there is a strategy towards it? Okay. So business leader. So one thing that मैं निधि ने जो बोला, I would say that all of us, ये हम सबकी responsibility है. जो हम कम्युनिटीज और प्लेटफॉर्म्स ने स्टार्ट किया है, चला रहे हैं, हमें साथ मिलके काम करना चाहिए. हम सबकी यूनिकनेस है, हमें एक दूसरे को रेप्लिकेट नहीं करना है, अपनी यूनिकनेस को प्रिजर्व करना है. तो वहां मुझे एक बहुत बड़ा गैप लगता है, चैलेंज लगता है, जहां हम लोग बहुत मायोपिक हो जाते हैं और साइलोज में काम करते हैं. हमें सब साथ आके काम करने की जरूरत है. आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जो बिजनेस लीडरशिप लीग नहीं करता एज अ इकोसिस्टम, और बिजनेस लीडरशिप लीग ऐसा बहुत कुछ करता है जो आप लोग नहीं करते. So can we have a common minimum program? हमारे सारे members का बहुत benefit होगा. So that is what we need to start thinking. And now coming back to Ginny's question. So in Business Leadership League, 4 चीजें हम करते हैं. For any entrepreneur who joins us as a lifetime member, irrespective of being a man, woman, but all the females watching this, I think ये 4 aspects पे अगर आप focus करोगे, you will really be able to become solid entrepreneurs, solid individuals, and your business and आप जो करते हो, it will be a natural extension of yourself. You will enjoy and it will grow. Number 1, कि पॉजिटिव विजिबिलिटी की बहुत जरूरत है. हमारा वो एक कोर प्रिंसिपल है, हम अपने सारे मेंबर्स को बहुत पॉजिटिव विजिबिलिटी देते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ये आपका 360 days, 365 days, you should be visible as a business, as an individual. Personal and professional branding go hand in hand. दूसरी चीज है गाइडेंस एंड क्लैरिटी की बहुत जरूरत है. इसीलिए हम अपने मेंबर्स के लिए बहुत सेशन, बहुत ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट्स के साथ सेशन करते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, लीडरशिप, इन सारे टॉपिक्स पे. और आप लोगों को भी अपने लाइफ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने टीम के लिए एक एक टाइम रखना चाहिए कि मैं
monthly itna time khud I will put in training and self development. That is very important. Number 3, inspiration. हम एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं, हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं. तो बिजनेस लीडरशिप लीग इंस्पिरेशन के अराउंड बहुत काम करता है. सो अपनी स्टोरीज को शेयर कीजिए. हाउ यू हैव कन्वर्टेड अ चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी. तो इंडियन बिजनेस इंस्पिरेशन स्टोरीज हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ऑन जून 18 दिस ईयर. आप सब लोग चेक कीजिए, कम एंड पार्टिसिपेट. वी आर वेरी फ्यू वुमेन स्टोरीज, वी वांट मोर वुमेन टू पार्टिसिपेट. Fourth and the final thing, action. Execution is also very important. ये सब करने के बाद find the right partners. Don't look at vendors or people who will give you services. Look at partners जो आपको और आपके organization को आगे लेने में मदद करें. Transactional relationship में मत invest कीजिए. Long term partnerships में invest कीजिए. And as an individual, as a business, and as a woman, I think we know it better than men. बट ये सबके लिए दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल. फर्स्ट फोकस, आप क्या वैल्यू दे रहे हो, व्हाट इज दैट यू आर गिविंग, बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे क्या मिलेगा. जब ये सोच आपकी बदल जाएगी, ट्रस्ट मी, योर एनवायरमेंट, पीपल, एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज. That is what I say. So these 4 principles, all of you need to concentrate on. Superb. And I'm sure if you all follow those 4 tips, we'll be a better decision makers. We are actually, but this will enhance more. I'm sure all of the other women here will agree to me. Ritu, coming back to you, you know, I see that you have so many feathers in your cap. How do you manage that? Or आप सिर्फ community handle करते हो? You are in a job also, because you are an NLP practitioner, you're a life coach, you're so many things. So yeah, I am multi-talented. Can't help it. But that's superb. On a lighter note, I started my professional career जब मैं 8th standard में थी, तब से मैं शामक के साथ काम कर रही थी. Wow. 8 साल मैंने काम किया. I worked in movies like दिल तो पागल है and Tal also. Today, after this, I have to go back and see where were you there. Yes, it's very easy to spot. जो सबसे सुंदर लड़की थी वो मैं ही हूँ. I'm sure. And uske baad I got into BPOs and call centers where I was involved in a lot of teaching work. So HR में training, soft skills, hard skills, a little bit of everything. बहुत पैसे कमाए, बहुत अच्छी sales की. But every boss जब भी मुझे promote करना चाहते थे, they always said that you are best for sales and marketing. But somehow वो teaching का जो कीड़ा था मुझ में, I continued. I did a lot of international courses on life coaching as well. But unfortunately, there was a bit of a crisis in my marital life. I'm a single parent now. I moved back to Bombay about 8 years back. And तभी ये moms की community शुरू हुई थी क्योंकि मुझे एक वो I think एक vacuum हो रहा था. मैं अकेली थी and somehow I just wanted to connect और औरतों से भी who are also sailing the same boat. And एक WhatsApp group शुरू हुआ 20 औरतों का. वो 20 के अभी 50,000 औरतें हो गई हैं बॉम्बे में धीरे-धीरे organically. So it's been beautiful, and we've hosted more than 450 complimentary workshops in the last 8 years, online and offline both now. It's been amazing. I also volunteer with Facebook, WhatsApp, and Instagram India. I exclusively get invited for all their events as well. We've worked with a lot of Bollywood movies, worked with the best and the biggest brands of the country and international. Maza bahut aa raha hai, I must admit. That's a strong woman speaking. I'm sure. Wonderful, Ritu. It's been such nice listening to you. कि multitask भी हम लोग कर सकते हैं, you know. I actually have a very different. I have a very different perspective to multitasking. Nature instinctively ने औरतों को nest bearers बनाया है, nurturers बनाया है, and आदमियों को hunters and the breadwinners बनाया है. While I'm all for women empowerment, and yes, बहुत औरतें suppress भी होती है, तो अभी बहुत सारी opportunities create हो रही हैं. But the only flip side, because हर coin के 2 sides होते हैं, we should also not ignore the fact कि multitasking से आपकी quality deteriorate होती है, like it or not. ठीक है, आज की तारीख में women are expected not just to look after the house, look after the in-laws, parents, husband, children, but are also expected to be the breadwinners
and are also expected to look like Miss Indias and also expected to look like, cook like master chefs. तो इतना सारा juggling जब हो रहा है, तो stress out होंगे. There will not be opportunity for quality me time as well. So much has changed for women over the years. So many more responsibilities have come up. But एक बार अब ये thought डालें कि आदमियों के लिए क्या change हुआ है over these years. So I'm all, like I said, I'm not a feminist because for me, men are from Mars and women are from Venus. हमारे skill sets और positives और strengths एक जगह हैं, आदमियों के अच्छे हैं. जितना compliment करेंगे उतना better होगा. But अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारो by, doing it all. As Indra Nooyi rightly says, you cannot have it all. And that is the truth. Perfectionism का अगर आप में कीड़ा है, आप अपने आप को ही stress और burnout करोगे. Make sure, become a little selfish if that's what it takes. Make sure कि आप अपना भी ध्यान रखने, because if you are happy, everybody will be happy. Love yourself. पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे by doing everything in the world. अगर कोई और कर रहा है उनको करने दो. सोशल मीडिया में सब, जैसे मैं कहती हूँ, Facebook is equal to fakebook as well. Everything is good, everything is glorified. सब अच्छा है, perfect husbands, most intelligent children, stunning vacations. But जो स्क्रीन पे दिख रहा है और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है. So don't compare मत कीजिए. खुश पहले आपको खुश रखें और फिर दूसरे खुशियों के लिए. Yes, agreed to 100%, 200%. I agree. Wonderful. Thank you so much, विशाली जी. विशाली जी, आपने मॉमीज के बारे में बताया हमको कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे. अब थोड़ा इंडिया का फैशन के बारे में आप हमको बताइए कि वहाँ क्या चैलेंजेस थे और वो एक अगर कम्युनिटी है आपकी तो वो कैसे आप बिल्ड करते हो. India ka fashion was always my dream and a passion for which I wanted to work. Initially, when I completed my fashion designing, I started working in the year 2001 with artisans of Kutch. I'm basically born and brought up in Kutch. मैं भुज से हूँ, and post earthquake, they were facing a lot of issues in marketing their products because they already were, उनके घर टूट गए थे, उनके काफी सारे problems वो लोग face कर रहे थे. So I came in touch with one of the NGOs there and we started working for rehabilitation of those weavers and artisans who are there in Kutch. Because Kutch is a very vibrant place and you will find 15 to 20 different kinds of arts there. तो उनके साथ जब काम करना शुरू किया तब मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं कुछ करूंगी तो इसी फील्ड से करूंगी. Because I remember मेरे final semester में my project was hand embroideries of all the states of India. So these kind of wealth of artisans is there in each and every state of our country. So now if I tell you about today 2001 से अगर मैं 2022 में आती हूँ तो I'm connected with a project called Project Handmade in India which is powered by EDII and all. तो उनके वीवर्स के साथ आपको पटोला पता होगा. पटोला is a very famous sari. Yes. So patola saris, and there is an art called Tangalia. Tangalia is it has got a GI tag also. यहाँ गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के गांव में उनके वीवर्स हैं. तो वो एक ऐसा आर्ट है जो अभी तक लोगों को ज्यादा मालूम नहीं पड़ा है कि what is Tangalia. So I'm working closely in this project with the weavers of these villages कि उनको कैसे डिजिटली एम्पावर करें कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं. तो दैट्स हाउ इंडिया का फैशन में आई ऑलवेज सी कि मैं उनसे जुड़ के फिर हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें ऑल ओवर इंडिया से. सो आई एम वर्किंग फॉर इंडिया का फैशन and abhi I'm connected to the weavers here in Surendranagar district, Tangalia and Patola. And yes, I would love to connect with all the artisans in different states of India and take this, of mine. Wonderful, Vishali ji. It's so nice to get your culture all over the country, all over the world. It's बहुत अच्छा था. Coming to the last leg of building communities, I want you, all you ladies, to give us one motto, one
like Ritu said, Guru Mantra, one funda of your life, which you think that, you know, it's going to motivate the women around in helping building their own communities, their life. So just one tip from all of you, please, before we end this. So we start with Nidhi. Yeah, so one tip would be never give up attitude and everything is possible. अगर ये एक रखो याद तो बहुत like you know positivity, आप खुद positive हो और बहुत positivity side spread कर सकते हो. Also not forgetting to balance the life. जैसे हम women हैं, जैसे सबने कहा multitasking. I really respect Ritu the way she is. I adored. Actually, she was the one like मैंने जब social media start किया 3-4 years back. That Jams was the first community जिसका workshops मैंने attend किया, and I've closely following her, and the you know I'm really looking forward with her, like the way she's growing. All blessings to her too. And Vaishali also, like मुझे आपका help चाहिएगा for collaborating for growing India also. I would definitely connect with Shweta and Ginny, who are already a part of. So that is it. Collaboration will help, and that is how you all can persistently grow. Lovely. Thank you so much. I'm sure lot will be benefited towards it. Ritu, I need your tip, please. Your Guru Mantra. Though we know it, but I want to hear it from you. You are on, Ritu, you are on mute. So my personal Guru Mantra is, even if you cannot do great things, let's do small things, but in a great way. But that's my personal Guru Mantra. For Women's Week, I would actually like to read something, Ginny, if I have your permission. Sure, please, please. ये एक बहुत अच्छा forward चल रहा है WhatsApp में भी. English में है. I'm happy to repeat it in Hindi also. But अभी मैं फिलहाल English में कहूँ. A successful woman was asked to share her secret of success. She smiled and said, I started succeeding when I started leading small fights for small fighters. I stopped fighting those who gossiped about me. I stopped fighting with my in-laws. I stopped fighting for attention. I stopped fighting to meet public expectations of me. I stopped fighting for my rights with stupid people. I left such fights for those who have nothing else to fight about. And what I did is I started fighting for my vision, my dreams, my ideas, and my destiny. The day I gave up on small fights is the day I started becoming more successful. Small fights are not worth your time. Choose what you fight for wisely. Happy Women's Day to all of you once again. Super, powerful, brilliant, Ritu. And Shweta Padmaji, your Guru Mantra. Yes, so a lot of Guru Mantras today from all of you, but Ritu ne jo bola, obviously, aap always going ahead in life, the quality of problem you solve, the bigger the problem you solve, the better it is. So why waste your energies in solving smaller problems? So I would say that be focused on the problem that you are trying to solve through whatever you are doing, whatever business that you are doing. Long-term plan rakhiye, purpose rakhiye, build businesses where purpose meets profit. And बहुत सारे changes हो रहे हैं environment में, बहुत सारे inputs होते हैं. Everybody has a unique style. So short-term tactical approach rakhiye, but long-term you should be clear or where you are going and where you are headed towards. So that will make you very comfortable in a space. So don't focus too many on transactional things because uska future nahi hota. Long term sochiye, that will help you build your businesses, your careers and your lives. That's my message to all women on Wonderful. Shweta Padmaji, that was sweet and simple and so powerful. Thank you so much. Vaishali ji, आपका क्या motto है? आपका क्या mantra है for us? I'll say कि when it comes to a women, multitasking by default आ जाता है हमारे nature में. तो just like Ritu said कि बहुत सारा multitasking करना भी जरूरी नहीं होता है. You don't actually need to be perfect in everything, and not everything is to be done in a single day. All you need to do is do mindful multitasking. Keep a balance, prioritize and do mindful multitasking, and believe me, कभी कोई काम आज छूट जाता है तो it's okay. We stress out because आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज हम ये नहीं कर पाए. Don't do that.
be mindful multitasker and prioritize your tasks. And yes, always find few minutes of me time during the day. Just do what you love to do, or like I do sometimes, just don't do anything. Just sit and relax. Don't do anything. And just love yourself, accept yourself as you are. And believe me, आपसे ही खुशियां शुरू होती है. If you are happy, the whole family and the whole society will be happy. So focus on your happy mind rather than materialistic things which we don't achieve, and then we get into depression. आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. No. So that's I wanted to say. Wonderful, wonderful. Thank you so much for all you power women. I would just say one thing, that we women love the concern but not the sympathy. So I think we all have said that we would love to work towards motivating each other and work towards building our communities, building our own identity. I'm sure this is a perfect message on International Women's Day. Thank you so much. Thank you, Praveen ji. Thank you for this platform. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Gini, for hosting it so well. Thank you to all my co-speakers around, Vaishali, Sweta, Padma, Ritu ji, and of course, we had a lovely host also, Rajashi, who's quietly observing us. And thank you, Praveen ji, for amazing opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you. Forward for collaborating, and I need your help for my growing India community. Together, we can definitely help lot of Indian women and Indian arts grow together. Of course. Thank you very much, Jeannie ji, for moderating this so well, and thank you very much, panelists, for finding time and हम सबको enlighten करने के लिए. कितना मुश्किल होता है कम्युनिटी को हैंडल करना. कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, चाहे घर पे हो, चाहे कम्युनिटी के मेंबर्स हो, उनके इश्यूज हो, एक्सटेंडेड इश्यूज हो, कितनी सारी चीजें हैं. एंड दीज वुमेन आर जस्ट टेकिंग इन देयर स्ट्राइड. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ है, सब एकदम इजीली मैनेज हो रहा है, बट इतना भी इजी नहीं है, हम जानते हैं. लेकिन अगेन, एज वैशाली पुट्स इन, वी आर मल्टीटास्कर्स बाय डिफॉल्ट. So cheers to all women who are listening to us and who will be listening to this session. Wish you all a very happy Women's Day, and thank you very much for being with us. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.
Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a woman entrepreneur, do register your startup idea. Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is, if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as, having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. बैक अगेन। आपने किया कि नहीं सब्सक्राइब? व्यापार जगत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे इतने इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। #मेरा व्यापार में ऑन यूट्यूब लाइव हम आपके क्वेश्चंस लेंगे एंड वी विल पोस्ट इट टू द पैनलिस्ट्स, और तभी आपको जवाब मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग सेशंस बहुत सारे हो गए हैं सुबह से, क्लाइमेट चेंज के बारे में, चाहे अपने ड्रीम्स के बारे में, चाहे कम्युनिटीज जो विमेन कम्युनिटीज चलाती हैं उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से लेके अब आ रहे हैं हम बिजनेस साइकोलॉजी ऑफ विमेन के ऊपर। तो किसका इंतजार है? ट्विटर पे इतना ये सारा सब पोस्ट कीजिएगा, और हमें प्लीज टैग करना ना भूलिए, #मेरा व्यापार मेरी पहचान। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर मॉडरेटर फॉर दिस सेशन, रूपल राठौड़। इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है मुझे। Blessed and proud mother of a very good daughter, same with me, founder and CEO of firm Super Cleaning. Since 7 years plus से ये firm चला रहे हैं रूपल जी। We train less privileged people for cleaning and make them earn a dignified living. बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। I'm sure बहुत सारे लोग आपसे relate कर पाएंगे after they know and listen to this session. Our staff cleans sofa, carpet, home offices, factories, warehouses, auditoriums. आप कुछ भी बोलो, रूपल जी is the solution for this. And how can you help me? आप रूपल जी को कैसे help कर सकते हो? This is the best line. You can connect someone who is seeking work and wishes to earn. ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि आप ये नहीं दे रहे, आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, you are not feeding the man a fish, you are telling the man how to earn. So that is feeding the person for a lifetime. All the best, Rupal ji. Over to you. Thank you for the introduction. मैं खुद को blessed feel करती हूँ कि आज जो panelist है वो psychologist, doctors, psychiatrist ये सब है मेरे साथ में, और ये जो है इंडिया का burning problem है, especially youth के साथ में, कि बिजनेस के साथ में वो अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग इन ऑन वुमेन्स डे जो प्रवीण जी ने मुझे गिफ्ट किया है कि मैं उन लोगों को सुन सकूं। आई एम श्योर ये जो 1 घंटे का सेशन होगा दैट विल बी द बाइबल फॉर वर्किंग वुमेन, बाइबल गीता कुरान जो भी है
वो वर्किंग वुमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये इशू है ही कि वर्क लाइफ को और अपना पर्सनल लाइफ को उन लोगों को बैलेंस करने में स्ट्रेस आ रहा है। सो विल स्टार्ट विथ इनिशा जी। इनिशा जी, अपने बारे में प्लीज बताइए। आप बताएंगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी, मैं बताऊंगी उससे। एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डॉक्टर इनिशा। I'm Inisha. I'm not a doctor. I'm a psychologist. Okay, good afternoon, everyone. First, I want to thank Dr. Praveen for letting me be a part of this beautiful journey today. And I started my journey as an interior designer and as an HR manager years ago. And then I turned into an educator because I'm a proud mother of 2 teenage boys and I wanted to spend time with my boys. So this was one profession where I could spend a lot of time with them. And I am a counseling psychologist, an internationally certified past life regression therapist, a Reiki practitioner, and angel healing practitioner, and an oracle reader. And I think the society and God has been very kind to me, and I think of being constantly productive, ये रियल प्रेशर है, आई विल टेल यू। ये सब पे है अभी। आई एम रियली ब्लेस्ड कि अभी मैं एक्सपर्ट्स और काउंसलर्स के बीच में हूँ, कि मुझे अपनी प्रॉब्लम का भी इस सेशन के द्वारा सोल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशा जी, हमें ये बताइए, वेयर डज दिस स्ट्रेस कम्स फ्रॉम? Okay, stress. First, let's understand what exactly is stress, and then we'll come to where does it come from. Stress is basically our body's response to pressure. You know, the feeling of being overwhelmed or unable to cope with mental or emotional pressure. Everyone has different stress triggers. You know, when they can be work stress, they can be relationship stress, they can be parenting stress, business related stress, stress from peer pressures, and of course when your kids have exam, I think that's the biggest stress for all moms especially. So you know, when we look after our well-being, it can actually help us deal with the pressure and reduce the impact that the stress has on our life. And this is sometimes called developing emotional resilience. Resilience is just not your ability to bounce back, but also to face your problems and to overcome them. There are lots of ways to manage stress, which everybody knows is there on Google. Every psychiatrist, every psychologist is saying the same thing: meditation, deep breathing, exercise. But there is one way which I think is very, very important, and I would like to bring it up. That is to set up boundaries. Especially for women, to learn to say the word no. I think if we can do that, we are going to be really, really sorted. Thank you. We have often heard this word successful businesswomen या successful businessmen also. So according to you, what is this successful businesswoman? How, मतलब एक tag मुझे मिल जाए कि मैं एक successful woman हूँ, successful businesswoman या successful women, तो according to you मैं कब successful बनूंगी या मैं कब successful हूँ? Okay, see, success is very subjective. सबके ख्यालात इस पे अलग-अलग होते हैं. According to me, success is to be able to make a positive impact in someone's life by becoming an enabler to other women and support them to fulfill their dreams and achieve their goals by helping them to navigate them through their challenges. It also means to show up every day, each and every day, not because you feel you have to prove your worth, but because you're driven to succeed, and that you get your power from within as a woman, not from what others think, approve, or expect from you. Thank you. Thank you. इनिशा जी, मैं आपके तरफ से पॉज चाहूंगी और मैं तृप्ति जी के पास एक मेरा सवाल है कि तृप्ति जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और बताइए हमें कि आप क्या करती हैं।
Ma'am, can you please unmute yourself and Thank you so much. First of all, wish you a very happy Women's Day. And Dr. Praveen, thank you so much for this opportunity, and wonderful host and moderator Rupal. Regarding like introduce करने की जब बात आती है तो as you said, तृप्ति गांधी मेरा नाम है, साइकोलॉजिस्ट हूँ. एकाग्र फोकस्ड ऑन पॉजिटिव की फाउंडर हूँ. ये शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. बचपन से हमें कहा जाता है कि ऐसा करो, हम वो करते जाते हैं, सीखते जाते हैं. पर जब हम खुद जीना चालू करते हैं, गलतियां करते हैं, तब कहा जाता है ऐसा क्यों किया. तो वो क्या चीज है जब ऐसा करो हम सीखते जाते हैं और फिर जब अप्लाई करने की बारी आती है तो ऐसा क्यों किया, ऐसी वाली क्वेश्चंस आती है और हम सफर करते हैं. तो बीच में क्या गैप रह गया, क्या चीज हमें जरूरत थी एडजस्ट करने की विथ न्यू लर्निंग, क्या हम कुछ बैलेंस नहीं कर पाए, क्या कुछ हमने ज्यादा अप्लाई किया, कहीं कुछ कम अप्लाई किया, ये गड़बड़ कहाँ हुई. हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपे होते हैं. अगर इन कारणों को ढूंढ लिया जाए, खोज लिया जाए, तो बहुत हद तक जो हर्ट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सारा कुछ खत्म हो सकता है. तो एकाग्र का मकसद यही है कि जो भी परेशानियां हम रोजमर्रा में जीते हैं बिना वजह से, जिनकी जरूरत नहीं है, हम में सब में इतना पोटेंशियल है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और अपने जो एडजस्टमेंट करना, एग्जीक्यूशन को जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है न्यू इंफॉर्मेशन के तरह, वो करते अगर जाएं तो जो हर्ट है वो इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा. सो एकाग्र में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गैप को हम बता सके पहले से. हर ट्रांजिशन लाइफ का में ये चीज जरूरत होती है, हर चेंज के साथ, हर चैलेंज के साथ अपने आप को वापस से रीओरिएंट न्यू इंफॉर्मेशन की तरफ करने की जरूरत होती है, वो हम करते हैं. थैंक यू रूपल. It was nice listening to you, ma'am. और मुझे भी काफी आज नॉलेज मिलने वाला है, खजाना मिलने वाला है, ये तो मुझे पक्का मतलब है ही. So, ma'am, मैं आपसे there is one question. How do you think women have approached setbacks in their lives and their business? अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वापस वो कमियां निकालना या फिर किसी न किसी को पॉइंट आउट करना, ये लाजमी सी बात है, चालू हो जाता है. बट आई डोंट वांट टू do that. We all know how to overcome the setbacks. Yes. Let's talk about that. Yes. Let me, though I will point out कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, not individual, but कहाँ मिस्टेक हो रही है, वो चीज हम बात कर सकते हैं. एक तो माइंडसेट का इशू, माइंडसेट जो हमारे अपब्रिंगिंग के कारण अनायासा ही डेवलप जो हो जाता है माइंडसेट, इन द सेंस एक जो फियर ऑफ फेलियर है वो विमेन में ज्यादा देखा गया है कंपैरेटिव मेन, या फिर फियर ऑफ फेलियर हर किसी में रहता है अगर हम अब बोले तो. ये माइंडसेट डेवलप कैसे होता है उसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है. या फिर विमेन की एक है जो परफेक्शन चाहिए, परफेक्शनिस्ट ट्रैप में जो फंसे होते हैं, उसके कारण भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है. एक्सेप्टेंस की जरूरत जो रहती है, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके कुछ करने की जो ललक वुमेन में रहती है कि नहीं मुझे तो ये करना है, चाहे मेरी ये मतलब है मुझ में ये कैपेबिलिटीज या मैं कर सकती हूँ या नहीं. ये जो जिद ठान के रखी होती है वो कभी कभी बहुत मुश्किल में डाल सकती है. एंड कई बार जो फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम एक पर्टिकुलर जो चीज है उस कंफर्ट जोन में बैठे रह जाते हैं कि ठीक है चल रहा है ना, अभी अच्छा चल रहा है, लेट मी नॉट गो समवेयर वेयर जहाँ पे अननोन है, नया कुछ है. तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो चीज खत्म हो जाती है. तो ये सारी चीज जो है दे आर लेस रेडी, दे आर लेस प्रिपेयर्ड फॉर सेटबैक्स. तो जो माइंडसेट है वो आई एम नॉट सजेस्टिंग एवरीवन इज डूइंग दैट. वी हैव राइट नाउ वंडरफुल पैनलिस्ट हु हैव मेड मार्क, मतलब वंडरफुल अपना जगह बनाई है उन्होंने, और ये सारा जो मैं बोल रही हूँ उसको पार करके आगे आए हैं. बट स्टिल जो नहीं आ पाए उनके बारे में हम बात करते हैं. तो ये माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. अपने आप को कैसे प्रमोट करना है,
किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस को आपको बताना है या आप क्या करते हैं उसको बताना है, ये सारा इस माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। और ये माइंडसेट डेवलप क्यों हो रहा है? हमें बचपन से हमारे साथ जो लैंग्वेज बोली जाती है, इन द सेंस कि अगर मिस्टेक्स करने के लिए कितनी फ्रीडम्स हमें दी गई कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये तो परफेक्ट होना ही चाहिए। इसकी बजाय जो फेलियर है उसको एक प्रोसेस ना देखते हुए उसको एक फ्लॉ के जैसे अगर पॉइंट आउट करवाया जाएगा तो आपको वापस से हिम्मत कम होती है कि आप कुछ कर सकें। या फिर अपॉर्चुनिटीज कितनी आप एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किए जाते हैं या फिर एनकरेज किए जाते हैं टू स्पीक अप व्हाट यू वांट। कितनी बार ऐसा होता है कि लड़के तो घर के ही हैं, घर में ही रहने वाले, जो भी होगा छुप जाएगा। लड़कियों को बाहर जाना है, सो दे आर सर्टिफिकेट्स, दे नीड टू बी परफेक्ट। तो उस चक्कर में इतनी ज्यादा उनके ऊपर जो स्पॉटलाइट होती है, सो दे फील कि अगर कहीं पे भी फेलियर हुआ यानी इट इज एन अटैक टू देयर पर्सनालिटी इंस्टेड ऑफ इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। Today you don't know, tomorrow you may know something. So how you are taught, कैसे आपको दिमाग में क्या चीजें डाली गई है या फिर आपने ली है, whatever it is, I'm not blaming any parent और जो भी है, कि जो आसपास घटता है उस हिसाब से जो माइंडसेट बना है उस हिसाब से विमेन के लिए फेलियर लेना थोड़ा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इवन सुपर क्लीनिंग में हम लोग फीमेल को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग विद ऑल दोस थिंग्स, लाइक जो आप कह रहे थे, आई कुड रिलेट दैट विद माय फीमेल स्टाफ मेंबर्स। तृप्ति जी, और एक बात जानना चाहूंगी मैं, वेल मैनेजिंग, सो हाउ they have been able to mitigate or even reduce its effects on their aspirations or right. Like as you said कि आपने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये नोटिस किया है कि फियर देखा गया है, सब कुछ है। तो जो हो गया उस पे मिट्टी डाले वैसी वाली बात हम करते हैं। आगे क्या करना है? We can just change the mindset, see failure as a process of learning process के जैसे अगर देखा जाए, not in flaw के अपने capabilities पे point out है या ऐसा कुछ ना देखें। ये एक mindset change करने की आवश्यकता जरूर है। तो इससे काफी हद तक का जो है हर्ट है या जो डर है वो कम हो सकता है। परफेक्शनिस्ट ट्रैप से हटना बहुत जरूरी है। We are living in society to share our expertise. We cannot be perfect. हर चीज में हम perfect माहिर नहीं हो सकते. That is why we are living in society. What you know, I cannot. What I know, I have to share with you. So you need not be perfect in everything. Whatever you know, it is just about sharing. Every perspective is unique and different, which is important. We are all pieces of puzzle, basically. So we have to come out of this perfectionist trap, basically. Then सेल्फ अवेयरनेस का एक्चुअली आजकल जो बहुत हम सब लोग की मेरे इमोशंस कैसे आप पे असर करते हैं या आपके इमोशंस मुझे कैसे अफेक्ट करते हैं या मेरी क्या लिमिटेशंस है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, मुझे क्या मोटिवेट करता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू एंटर इनटू समथिंग, बिफोर यू कंट्रीब्यूट, बिफोर यू कोलैबोरेट, बिफोर यू डू एनीथिंग। तो ये सारे चीजें से भी काफी कुछ हद तक प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल सकता है। कंफर्ट जोन में रहना सबसे बड़ी वीकनेस मैं मानती हूँ। जो आता है बहुत अच्छी बात है। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरे पास से आज कुछ हट जाता है, गायब हो जाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे नहीं भी हो सकता है। मेरे लिए अगर बहुत दुख है, किसी के लिए अच्छा इसमें दुख की क्या बात है, ऐसा क्यों होता है कि किसी को ज्यादा दुख होता है, किसी को कम दुख होता है। तो यहाँ पे जो कंफर्ट जोन की बात है, अगर मेरे पास जो है उसको मैं इतना वैल्यू दूं, अनड्यू वैल्यू, मतलब रियलिस्टिक नहीं हो वो कि है छोटी सी चीज लेकिन हाँ मेरे पास ये है, मैं इसके अलावा मतलब मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल फील हर्ट। उसके खोने का डर भी रहेगा, फियर ऑफ फेलियर डेफिनेटली रहेगा, फियर ऑफ लॉस डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अगर आपका रियलिस्टिक अप्रोच है किसी
ऑब्जेक्ट की तरफ, and you're not in a comfort zone, you are exploring more possibilities, more opportunities, you're open for new ideas, new initiatives, newness in your life, then definitely जो hurt है वो realistic ही रहेगा, and I mean you will not feel it more. So idea is to be ready, be prepared for each change and challenge, so that I mean you need to keep adjusting with the new information. As I said earlier, your execution need to be adjusted with new information basically. वेरी नाइस। ये हेडफोन्स मैंने आज इसीलिए, यूजुअली मैं नहीं लगाती कि एक भी शब्द किसी का मैं मिस ना कर जाऊं, इसीलिए मैंने आज लगाया है। So तृप्ति जी, मैं राबिया जी से अब पूछना चाहूंगी, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, हमें बताए व्हाट डू यू डू, एंड हम आपसे थोड़ी देर बात करेंगे। Hi Rupal, and good afternoon to everyone. Greetings to all. Good afternoon. And namaste, sat shri akal, and everyone in the world. बहुत सारा good night, good evenings होंगे. Myself Dr. Rabia, as Rupal has already said my name. So introduction कुछ नहीं है. To be honest, we all carry a lot of taglines with us, lot of titles with us. But I think the best part to introduce myself is that कि मैं खुद से खुद को compare करती हूँ every day. And I try to be a better version of myself every day. Because what I feel, there is no comparison between you and the other person. Everybody is unique in its own. Everybody has something good in themselves. But what you can do, the other person cannot do. And what other person can do, you can't do. So myself, Dr. Rabia, and I'm trying to bring a change in myself. As Mahatma Gandhi has already said that, to bring a change in yourself, to see the change around you. So this is what I'm applying in my life as well. It's been a good number of years that I've been working. Started with the as a customer care executive with the BPO industry, then moved to banking sector, then moved to hospitality sector, then moved to IT sector, then moved to NGOs, then moved to education sector. So yes, I've been working for my own online venture for last 7 years, which is catering towards the education, NGO, profile building, and lot many things for the society, for the humanity, so that we can all have a better place to live in. This is all about me, and I don't want to get into deep introduction of myself. I am available on LinkedIn. My entire titles and taglines are there on LinkedIn, which is a professional media platform. And yes, Facebook also, it is more towards the professional media platform now. Less is like social media engagements only with the professionals that I'm making on Facebook. So you can connect with me to know more about me as a professional titles. That is all about me. Thank you, Rupal. थैंक यू मैम। हम ये तो जान गए कि आप क्या करते हो। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पी बिजनेस वुमेन क्या होनी चाहिए, बिकॉज दिस सेशन इज अबाउट विमेन बिजनेस साइकोलॉजी। तो व्हाट इज हैप्पी बिजनेस वुमेन? Thank you once again for putting up such a wonderful question, Rupal. Happy. First of all, I would like to thank Dr. Praveen for giving me this opportunity to come here and connect with so many, eminent personalities and like-minded people, I would rather say, because Anisha also beautifully said, and Trapti ma'am also very nicely said that yes, failures, setbacks, हर किसी की लाइफ में होते हैं. How you get adapted to it, how you learn from it, that is what you make you different, and that is what makes you actually successful. क्योंकि failures के बिना it is not possible for us to achieve something, right? तो जब तक failures नहीं होंगे, and failures, there are people who take them as okay fine, I'm a loser now. एक वो लूजिंग की आ जाती है, अपने आप में एक एटीट्यूड आ जाता है कि आई विल नेवर एबल टू गो बियॉन्ड दिस. तो कंफर्ट जोन, जैसे त्राप्ति मैम ने वेरी ब्यूटीफुली शी सेड कि कंफर्ट जोन, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन टू बिकम हैप्पी. Happy and sad, happy business woman, not happy businessman. For me, in my dictionary, happiness is something
when you see somebody happy because of you. Like Anisha also said कि जब आप successful हो तब होते हो जब किसी को दूसरा कोई actually happy होता है because of you. For example, we have lot of corporate sector, we have lot of schools, employer बहुत ज्यादा ऊंचे वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते रहते and they keep hiring people. But I believe कि yes, we are also growing and the team is also growing. We are able to hire as many resources as we can and we are able to give them the employment opportunity. बहुत लोग हैं हमारी अभी there's lot of poverty across the globe. Poverty तब खत्म होगी when we collaborate together, when we connect, when we work together and we are able to create wonders and miracles. और उसके कारण हम किसी एक इंसान को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाए, जिसके घर में खाना मिल सके, जिसके घर में दिया जल सके, जिसके घर में लाइट आ सके, आई थिंक तब in my dictionary that is something called happiness. I am working towards the profile building of lot many people, profile building of the university students, school students, not only students. I'm working towards the profile building of the professionals even, because as professional we are working in a boundary called of work office environment. कोई principal है, कोई अपने ही उसमें organization को grow करने में है. But for me, I'm working towards a profile building program where I connect those individuals to different platforms and they can showcase their talents and skills to that platform as well, to where they are getting connected. And that platform also are able to get the opportunity as well as the एक उनसे पॉजिटिविटी आती है. Why? Because they are connected to them and they are able to showcase their talent और उसका फायदा they are benefited, that platform is getting benefited from that individual, so that that individual can also help the others to build that skills. For example, Anisha has a skill set of doing NLP kind of program. She is doing some therapies. Trapti मैम के पास कोई और स्किल सेट है, बट जब ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फॉर एग्जांपल मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आके मेरे कनेक्शंस के साथ जुड़ेंगे, सेशंस कंडक्ट करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, तो उनको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा. So this is what it is called, the profile building program that I'm working on. And thanks to Almighty, thanks to the people who are connected with me, they are very happy and they're very satisfied. So जब मैं उनको देखती हूँ ना, so I'm actually happy. I'm feeling happy about it. That yes, I'm able to create something different for everybody. Not only for myself, but for the people who are connected globally on my platform. So that is, in my dictionary, a happy business woman or a successful business woman is actually, if I'm able to make one person smile because of my work, because of my actions and because of my efforts, I am a happy businesswoman. Great. कोई एडवाइस या कोई टिप्स आप देना चाहोगी बिजनेस वुमेन को? I think प्राप्ति मैम ने बहुत beautiful tips दी है. निशा जी ने भी बहुत, my friend Nisha has also given very beautiful tips. Just to add on to it, never have that give up attitude. Always say, yes, I can and I will be able to do it. When you have that positivity and positive attitude, and please get adapted to the changes and challenges in your life. Everybody knows कि वो हम ECG के लिए जाते हैं तो एक straight line आ जाती है. So straight line means if you feel that your life should be very straight, smooth, you won't enjoy life. What will you learn in your life? What purpose you have in your life? You are born on this earth to have a purpose, right? Always have a purposeful life. Get adapted to these challenges and have a courage to overcome it. एक लड़की जब माँ बनती है उसके लिए चैलेंज होता है, राइट? आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, आपके फिजिक में, आपके मेंटल स्टेटस में कितने चेंजेस आते हैं. बट इफ यू आर नॉट रेडी टू बी अ मदर, how will you cope up with the other situation? It is a very skill set. It has to be a very simple skill set of each and every female, every woman on the earth. और एक ये blessing होती है
भगवान की तरफ से ऊपर some divine power is there, you have a blessing to become a mother. अगर एक औरत एक माँ बनने की अपॉर्चुनिटी लूज कर देती है ना, फीलिंग कि हाँ मेरी बॉडी या मेरी फिगर में प्रॉब्लम आएगी, देन आई थिंक चेंज के लिए तैयार करो कि यस, दिस चेंज is good for me, is good for my family, is good for my life, is good for my body, is good for my mental health and physical health. And then you see what you achieve in your life. There is nothing that makes you stop. We all are unstoppable, but there has to be, as Rapti ma'am said, कि mentality, जो आपका state of mind है ना, उसको change करने की बात है. Mental state आपका change होने की बात है. According to the globe, according to the world, women are very emotional. But I'll tell you, women are also very tough. When somebody challenges you, when somebody challenges a woman, they actually take a challenge that, yes, now I can do it and will show you. How can you say that I cannot do it? I will show you that I can do it. So please get adapted to this kind of attitude that, yes, you are unstoppable. Nothing can stop you. बस अपने आप को एक स्टेट ऑफ माइंड अपना आपका पॉजिटिव होना चाहिए और रेडी होना चाहिए कि यस, आई एम अनस्टॉपेबल, दैट्स ऑल अबाउट इट. आज बहुत सारे टेक अवेज लेके जा रही हूँ. डरना नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर काम करना है, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, ये सारे अफर्मेशंस लेके जा रही हूँ. तो आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड मैं हूँ. एंड मैम प्लीज कंटिन्यू. यू वेरी. सो आई वाज सेइंग कि अपना mindset ऐसा change कीजिए that you need to be a better version of yourself itself. You can't compare yourself. I can't compare myself with Dr. Raina. I can't compare myself with Miss Rupal. I can't compare myself with Miss Anisha. I can't compare myself with Dr. Trapti. Dr. Raina is very good. She is a posh trainer. She is excellent. I do not have that skills and I would be happy to learn those skills. As Trapti ma'am said, ki learn, enhance yourself. It is very important to learn, unlearn and learn. This is an evolving process that life must go on and you must go on in this life. हमारी सबकी लाइफ में पेंडेमिक आया. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम. मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान. हर व्यापार को दे पहचान. हर व्यापार को
Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a woman entrepreneur, do register your startup idea. Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is, if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as, having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women's health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. Parents are not to be blamed, and especially the mother. And because the mother is a nurturer, the caretaker, and also somebody who's there to transform the world. And she's the most courageous and the most beautiful person I've ever found till now. And I always draw inspirations from my grandmother, from my mother, my mother-in-law, and my sister-in-laws, and my sister, because each of them have their own power. They don't have to scream their guts out and say, hey, I'm powerful. हम लोग को चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम कितना पावरफुल हैं और कितना कर सकते हैं. चाहे हम एक होम मेकर हो, चाहे हम कंपनी चला रहे हैं, चाहे हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कॉर्पोरेट में भी कर रहे हैं. We all know what we are doing, and we don't need to be always explained or said that this is what I do, this is what I deserve. Please come and talk about it. Tell me how it is. Am I good enough? Am I not good enough? And we don't need any acknowledgement for whatever we do, because we are already doing enough. And the word I am enough has to be bold in our head. So the psychology of women has to turn with the change of mindset. Any woman who comes up to me and says, hey, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बोलती हूँ, भाई आपकी गलतफहमी है, आप already बहुत कुछ कर रहे हो. You are already doing a lot. Yes, if you really feel you're not doing a lot, then you have to start changing what you call your affirmations, which I think Rabia ji has very beautifully brought out a lot. I'm unstoppable, I'm capable, I'm going to be hitting a 4-target figure, I'm going to be bringing in more business, I'm going to connect with a lot of people, I'm going to be a people's person, I'm going to be a lovable person, I can care enough for me and my family, and a lot more. It all comes one to each to all, because everybody's affirmations will not be the same. और अगर आपने एक गोल को अचीव कर लिया, आपका नेक्स्ट गोल ऑलरेडी बन जाएगा कि मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए लाइफ में. So people who are there at MSME sectors, people who are there as entrepreneurs, startups, because we are at this beautiful platform, and that is FEMPRENEUR. We are talking about vyapaarjagat, and all the ladies who are from, say, mid-level to supreme level of their business. I would always say, आज स्टार्ट किया तो आज सवेरा हुआ, आज से चालू करो. आगे पीछे ऊपर नीचे पिछला अगला कुछ नहीं सोचना है. If you've started, that's good enough. It's like saying at least you made a start. Next,
Channelize what exactly do you want to do. If you don't have the resources, you have to get them. If you don't have the finances, then you have to work on them. If you don't have the goals right, if you don't have a business plan, if you don't have a model, then you have to get somebody, learn it. So the first is learn. Unlearn comes only when you have egos, when you have problems in learning, when you have problems with people. And that's again a very individualistic thing. सबको प्रॉब्लम्स नहीं होती है, अगर आपको हो रही है तो आपकी प्रॉब्लम है, उसको सुलझाना सीखो, ठीक है? If you have a problem with the lady, if you have a problem with people not liking you, people not loving you, that's your problem. Work on it. People don't have to love you at all. People don't have to like you at all. Sorry to say that. For running business, you have to like yourself first. You have to like what you do first. You have to be passionate about it like mad, even if there's nobody who's going to come up and tell you, hey bhai, आप कौन सी दुनिया में बैठे हो, आपकी ड्रीम कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली है. मैं आपको बोलती हूँ, आज 4.5 साल के बाद मैंने राइट टू राइज खड़ा किया है और मैं 6 साल हो गए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ और 23 इयर्स से मैं काम कर रही हूँ. और इसके लिए मुझे किसी ने नहीं बोला था, मैं आगे बढ़ती गई. अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी महिला कर सकती है. Any woman can do this because we all have the power within. And unfortunately, because I've not heard words of Trapti and Inisha, I'm sure they would have been equally powerful, and Miss Sargisha ma'am. But with Rabia's words, I'm sure we have enough takeaways and enough beautiful things that we've heard today. And we know that we all have it all. The only human psychology that we need is that we are here to stay, we are here to learn, we are here to grow, and we are not going anywhere. What is women? Women is wheel of family, ocean of knowledge, mirror of children, address of love, and navigator of life. This is what I define as woman. I will send it to you on the chat. You can share it with every woman you know, because that is going to be really, really powerful. And with the work I do, yes, I work with a lot of corporates, a lot of NGOs, MSME, startup entrepreneurs, जहाँ पे मुझे अलग-अलग women, अलग-अलग girls, अलग-अलग दूसरे gender के लोग भी मिलते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि भाई हमारी साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम ये नहीं कर सकते, और मैं उनको यही बोल सकती हूँ, आप पहले उसको लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या. You just can't say I need happiness. What is happiness to you? Define it. I need money. How much money do you need? I need success. What is success to you? Write it down to get more clarity. Then you can charter a path from 0 to infinity. Right? अगर आपको तारों पे पहुंचना है तो पहले आपको पता होना चाहिए आप पहले धरती पे हो. धरती से तारों पर आप कैसे उसको लेके जाने वाले हो, right? बिल्कुल. So human psychology, woman psychology is more that we always feel ourselves low. Many women are highly empowered already. We are not born low. We are very powerful, confident, courageous, people of high grit compared to man, and we are high risk takers. That is our USPs. We always go and get what we want. It's just if we want. Yes. Yeah. मैम आप साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़ी हुई है, एंड जैसे कि आपका काम है तो ये कोरिलेट कैसे होता है, एंड हाउ साइकोलॉजी इज हेल्पिंग यू इन योर बिजनेस. अगर कोई एग्जांपल भी आप दे. तो आइडियली साइकोलॉजी मैंने जब मैं पॉश की दुनिया में आई, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, मैं I hold a PhD in IT from VLSI Chip Design Engineering University of Westminster 16 years back. लेकिन जब मैं ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग में आई, उसके बाद since 5 years I have been working into the areas of law, which is all into लोगों को समझने के लिए, उनकी mindset change करने के लिए, to change people's mindset, because people feel that if you're in abuse and harassment and pornography, child abuse, women abuse, you have to always punish the person, either male or female, whoever's done it. I feel that only when it's at an extreme position, then you have to. Otherwise, if you understand the psychology of the person, अगर कोई बच्चा कोई चीज गलत करता है, for example, I come up to a college and I find a girl is harassing a boy, और अगर मैं corporate house में हूँ जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि board leaders एक woman को grow नहीं करने दे रहे, they are not allowing her to grow the leader,
position because they feel insecure of her knowledge, skill, or expertise. If they don't allow to grow, there has to be something in her attitude or something in her growth that is triggering the other person, or the male is having some issues with regards to his attitude that he needs to rework on his mindset. So psychology does help us understand the behavior, the mindset, the beliefs of youth, children, individuals, human, male, female genders, other genders. It always helps us to realize the unseen or the unheard. जो चीज दिखती है वो सही नहीं भी होगी, and जो चीज नहीं दिखती है वो सही भी हो सकती है. Okay, things which are real sometimes are not seen or not heard, but they come behind. So ideally, I would say 3 A's: appreciate yourself, acknowledge the others, and always feel that you have more to learn, because apart from appreciating and acknowledging, you also have to ascertain yourself to reach the top. So uske liye learning is always on the go. Never feel that you will never fail. Never feel that you will always be on the top. That will never happen. And there is nothing in the world that you say that it is only yours. We all have learned from each other. If you share, you will grow. Grow, yes. If you don't share, you will stay where you are. God bless you. थैंक यू. इनिशा so जी और much. तृप्ति जी, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगी विमेन को, बिजनेस विमेन को? Should I go first? Yeah, please. Okay. First of all, I must admit I have learned so much from all my co-speakers. Thank you so much. It's lovely being on the same platform with as all of you. I would like to just give 3 advices. The first one is be consistent in staying true to your values and be disciplined by showing up every day for yourself, not for others. Whatever you do, do it for yourself, not for others. Second, measure your success by your standards, not by anybody else's. And the third one is be mentally prepared for your highs and lows. Consistency kabhi bhi nahi hogi business mein, highs and lows hamesha honge, but don't ever allow the lows to stop you or demotivate you. And as everybody's been saying the same thing, that use your failures as a learning to move forward. Just keep moving, even if it is taking small baby steps at a time. Just keep moving, don't stop. That's it. Thank you, Rupal. Thank you so much. Thank you. Yeah. So एक चीज मैं जरूर सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने बहुत आसपास बहुत सारी विमेन को ये बोलते हुए सुना है, काश उस समय कुछ कर लिया होता, काश उस समय हमें करने का मौका मिला होता. एक ही चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर आपने आज डिसाइड किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ वो डिसीजन सेलिब्रेट किया जाता है, वो विन सेलिब्रेट की जाती है, उसके बाद सिर्फ आपको आगे ही बढ़ना होता है. कई बार मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों को देखती थी कि कितने कम उम्र में वो लोग कितना कुछ स्टार्ट करके एस्टैब्लिश कर चुके हैं, एंड दे आर डूइंग सो गुड. I started and I established myself when in the age when everybody gave up. Oh. I started there. So anytime you start, any day you decide, that is your win. So don't stop yourself. Decide today and keep growing. मैं ये वाला वीडियो हर एक बिजनेस वुमेन को भेजने वाली हूँ, जितने को भी मैं जानती हूँ आज. ये उनके लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है. Yes, over to Rajsi. I don't know if I should say this is a beautiful ending or I should say this is a beautiful start, because ये end तो पैनल डिस्कशन का है, लेकिन ये स्टार्ट बहुत सारी जर्नीज का होने वाला है. So thank you for yes. You want to say something? I just want to end this with, as Trapti ma'am beautifully said, कि जहाँ से शुरू करो वहाँ से
वहां से आपकी अचीवमेंट हो जाएगी. So I would like to put it across in such a way, age is just a number. Age is just a number. Do not ever think that age is stopping you. Keep enhancing yourself to empower others, and never forget to be empathetic. Very important to be compassionate and empathetic towards yourself as well as others. Women की problem यही होती है, they are not able to, as Dr. Raina said, कि खुद के respect नहीं करते, they don't value themselves. The day you start valuing yourself, the day you start respecting yourself, you see everybody around you will start valuing your work, will valuing your efforts, and will start respecting you. That's all about it. Thank you so much. Thank you. One more time, beautifully said. कितनों की जर्नी आप सभी मिलके अब शुरू करने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पैनलिस्ट्स एंड रूपल जी फॉर योर टाइम. थैंक यू. जो रियल टाइम आपने स्पेंड किया हम सबके साथ, सारे व्यूअर्स के साथ एक्चुअली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रवीण जी. रूपल जी, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी. क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, आज भी घर की डोर उसके हाथ में ही है. बिल्कुल. Rupal has been so sweet. You made us feel so good about ourselves. Yes, and you were really. You are. मैंने सिर्फ गुड फील नहीं करवाया है, आप लोग हैं, and you are empowering women. आप जो काम करती है आज के समय में इसकी बहुत 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 जरूरत है. Absolutely. Thank you, Rupal, for making it so special. Thank you, Dr. Praveen. It was a very beautiful. Thank you for making world a better place. आप जो business mentor, counselor, psychologist and psychiatrist का पैनल है, इन सब से मतलब जो सुन के मुझे आज मिला है और मैं जो लोगों को फॉरवर्ड करने वाली हूँ, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, बिलीव मी. Thank you once again, Dr. Thank you, Dr. Praveen. Thank you so much, Dr. Praveen, I would like to say thanks to you. इतने अच्छे लोगों को साथ में लाने के लिए thank you so much to Dr. Praveen. The credit goes to you, the man behind the scenes. Actually, he's the person. Thank you so much. Very thankful to you. Thank you once again, and it was lovely meeting everyone. Thank you. Same. Yes. Hello everyone. Imagine how beautiful this world will look when every individual can trust themselves and sail through all the difficulties in life with decision making to problem solving, from self-discipline to perseverance, from reliability to dependability, with self-acceptance but without dependence. Imagine this picture looks more beautiful when this self-reliance is celebrated throughout with lots of enthusiasm. I, Tripti Gandhi, founder Ekagra Focused on Positive, congratulate vyapaarjagat for organizing FEMPRENEUR's Conference 22 to celebrate self-reliance, AATMA NIRBHAR BHARAT. I wish them all the very best. Thank you so much. Hi, I'm Basudha Srivastava Narula, founder and COO of Employee Services. We are a young and bespoke technology company, and we are automating the employee life cycle management system. I'm really happy to be part of vyapaarjagat, and I'm really happy to see that a lot of people are coming up and they are achieving their dreams to be part of this big ecosystem of entrepreneurship. It takes a lot of passion, it takes a lot of courage to leave their salaried job and start working for the dreams that you have and the passion that you have for. And it's a time for all of you to be recognized for the hard work, for the passion, and for the nights and the day that you have spent to achieve your dreams. And it's time really to be recognized around the world. Thank you so much for your participation, and all the best to you. Hello everyone. Myself, Mrs. Arpita Doshi, innovator and founder of Nutrition Dynamic Foods LLP, located at Ahmedabad. Under brand NDF, we innovate and manufacture health beverage premixes for millennials, working professionals and senior citizens dwelling in urban topography
suffering with inflammatory non-communicable diseases like diabetes, cardiovascular, cancer and obesity. As a woman, I always dreamed about making my own name and fame. I always dreamed to be recognized by my capabilities. And that can only be accomplished when I dreamed of having a business. When I dreamed of having an enterprise, which is not just found and led by a woman, but is also innovated by a woman. In this journey of enterprise, many ups and downs are foreseen. Paths have never been smooth. Balancing work and life has always found difficulties. In spite of all such difficulties, under able leadership of Shri Narendra Bhai Modi, women's got a special recognition for which we really thank him. Vyapaarjagat founder Mr. Praveen Parmar has not just only supported our PM's vision and mission, but by organizing FEMPRENEUR awards and conference event, he is truly making women's AATMA NIRBHAR. I would appeal to all of you, please join vyapaarjagat and let's help to spread the world about women enterprises. Thank you all. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब मैं ये समझ रही हूँ कि आपको सेशंस इतने पसंद आ रहे हैं कि आप हमें क्वेश्चंस नहीं भेज रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे तो थोड़ा सा दिखाइए प्यार और ये मोमेंट को क्लिक कीजिए। आपको जो जो सेशंस पसंद आए, आपके कमेंट्स सारे सब ट्विटर हैंडल पे डालिए और डू नॉट फॉरगेट टू टैग अस #मेरा व्यापार मेरी पहचान। We have another powerful session coming up by Naisargi Shah. Let me introduce her and then I will switch it on to her, only her, right? Naisargi Shah, she is a certified NLP trainer, transformational coach, and a soft skill trainer, especially in body language and emotional intelligence. Turned finance student to HR within 18 years plus of experience. Arey wow, I didn't know this. In corporate world, with that experience in personal and professional life, helping people to enrich their lives so that they can reach the slogan, what she loves to say is, be limitless, be you. Over to you, Naisargi. Yes. Thank you, Rajshri, for a wonderful introduction, and thank you very much. Yeah. Yes, of course. Today's topic, I would like to say, is champions of change. Yes. Somewhere, very important thing I would like to say is progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. Yes, cannot change anything. So good afternoon, everybody. Hello, everybody out there who are watching us live. Thank you, Praveen Bhai, Dr. Praveen Bhai, and vyapaarjagat for giving me a wonderful opportunity as a speaker and allow me sharing my vision, my ideas of Women's Day. And something special, which I always feel about Women's Day, is there with you all. And yes, a special thanks to Vaishali Ben, the founder of MTM Group. She suggested me my name. That's why a deep gratitude to, of course, Rajshri has given a wonderful introduction. Yes, of course, I always keep on saying with everyone that enrich their rich, enrich your rich to reach there. Yes, to be limitless, be you. Something more to it at my qualification is that mother of 2 boys and a dog, driving my own company and passionate to fulfill my dream to satisfy my soul. In this journey of my professional and personal life, I've been through with people, and with that experience, I have strongly believe in creating a program for this young millennials. Yes, of course, young millennials जो बहुत powerful है and the highest population of the world. Yes, they are the future of our lives. अपनी पूरी
कायनात का एक फ्यूचर उन लोगों के हाथ में. They are the 60% of the population of our country, of the world as well. So with this program, it empowers them, their parents, as well as creating a ripple that spells progress, not just for the individual, but for the country as well. This is something which I always share when I share about myself, because this is my vision to create. मैंने मेरा institute खोला है जो Indian Institute of Mind Evolution, उसका एक mission है. So here I am there with that. This was a very small and brief introduction which I always share. Yeah, today we are celebrating Women's Day. So first of all, happy Women's Day to all the beautiful women out there. हर एक women, हर एक लड़की, हर एक girl के सपना होता है. Yes, celebrating that Women's Day. Today we are celebrating Women's International Day. With that, we are celebrating 3 important things. Yes. In current generation, अपने अभी का माहौल जो environment है, उसके साथ हम 3 चीजें बहुत सुंदर से celebrate करना चाहते हैं. That is champions, challenges, and changes. These are the 3 most important things which we are celebrating right now. हमने 3 दिन में, this is the 3rd day of the vyapaarjagat, and we are celebrating that हर एक जनों ने, हर एक lady ने, हर एक women ने एक बहुत अच्छी stories, important message दिया है. हर एक ने diaries बनाई है, पूरी boards भर दिए कि ये takeaways है हमारे. The same way we all women are celebrating who dares to innovate, lead, and uplift others towards to move more equally and inclusively at a workplace, at a home place, अपने घर में बाहर, and socially everywhere. And this is the time to stand together for the women worldwide. अभी अपनी दुनिया सिर्फ अपना city, अपना state या अपना country नहीं रहा. It's worldwide. Yes. So join us to congratulate all the women this year in 2022, the champions of the change. Yes. ये चैंपियंस ऑफ द चेंज मैं बोल रही हूँ, क्या है? व्हाट डू यू मीन एक्चुअली? आप लोगों को किसी को लगता है तो कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ. क्या है आपके दिमाग में रिगार्डिंग चैंपियंस ऑफ चेंज? इन माय पर्सपेक्टिव, आई वुड लाइक टू से चैंपियंस ऑफ चेंज इज द पर्सन, इज वो बंदा होता है कि जो बहुत इंटरेस्टेड होता है कुछ नई चीज को सामने लाने में. द इनोवेटिव, अ डिफरेंट थिंग इन समथिंग, लाइक कुछ भी होता है अपने प्रोफेशन में, अपनी जगह पे, अपने घर में, कहीं पे भी एक बदलाव लाने की कोशिश करता है जो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जरूरी भी होता है at that point of time, and the person is so determined to make that change, and if that happens, that is for betterment. So वहां पे एक प्रोग्रेस शुरू होता है. So that is which I call it as a champions of change. आपको मैं एक information देती हूँ. Champions of Change is an award also in India. National award है जो president के हाथ से दिया जाता है. And they call and they give, and that's a really something which is very important in our lives. और अभी की दुनिया में ये बहुत जरूरी हो गया है. क्यों पता है? हम लोग इस generation में वहाँ पे it's not the matter of money, it's not the matter of the information. We are now in the world of the social media, we can say digital world, we can say something about them there. अभी सिर्फ social एक neck है, वहाँ पे हम आए हैं. So that's what I call it. क्या qualities होती है, क्या qualities अपने अंदर होनी चाहिए, क्या होती है उस women में जो champions of change में होते हैं. The most powerful things which I see is that influential and engaging with others. Yes, of course, all women are there, which I have seen since last 3 days. जिनको मैंने देखा है, and I feel that they are the most powerful ones. Why I call women as champions of change? कोई अंदाजा लगा सकता है, कोई शेयर कर सकता है. अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हो तो प्लीज शेयर विद दैट. अगर क्या आपको लगता है कि मैं वुमेन्स को क्यों बोल रही हूँ? Why women are so powerful? Why they are in a way that they can change anything? उनका determination, उनका जज्बा, उनका जोश जो होता है to change the things, because their intentions, their ideas, their empowering thoughts जो होते हैं वो betterment के लिए होते हैं, creating more better world around them. So because they possess such a powerful, empowering determination to grow and make the world better place for wherever they are standing, they try to make. आप सब यहाँ पे एग्री होंगे कि women जहाँ भी खड़ी होंगी वहाँ पे वो लोग एक better place बनाने की कोशिश हमेशा में लगी रहती है. And if you think you are the one, and if you think you want to be one, and or you are on the path of it, let me share you something interesting. You can find it and you can understand, you can see it. हम 10 महिला जो सिर्फ इंडिया में है, and they are worldwide famous and they are known as the champions of the change. मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, and that will be something very interesting.
और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी women हैं उन्होंने दुनिया बदल दी है. They have created an history. They are known as champions of the change. Yes, one of the 10 महिलाओं के नाम बता रही हूँ, 10 women I am sharing just bit of them. Then we'll go ahead how we can create that change within us. क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या करते हैं. First lady which I would like to talk about is the fiscal scholar Geeta Gopinath, a Harvard economist who was a farmer entrepreneur's daughter. आप सोचिए एक फार्मर की डॉटर फार्मर एंटरप्रेन्योर की डॉटर है. शी इज ऑन एन हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट लिस्ट. यस. सेकंड इज दिंगिंग एक्सप्रेस हिमा दास, द इंडियाज फर्स्ट इंडियन एथलेट. उसको हम स्प्रिंट रनर बोलते हैं. यस, शी इज द सेकंड लेडी. नॉकआउट Mary Kom, the Indian Olympic boxer, the only woman to achieve the convent #1. Yes. Third, not but the least, Sky Warrior Avni Chaturvedi, the flight lieutenant Avni Chaturvedi, young Indian Air Force officer, became the first Indian woman fighter pilot to fly MiG-21 Bison solo. Then there is biotech pioneer Kiran Majumdar-Shaw. Today she runs a 68th, ranked as a 68th on Forbes list, most powerful woman in the world, and is the richest self-made woman, billionaire of India. Yes, you can imagine. I'm talking about ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, हम बात करते हैं. Pepsi Queen Indira Nooy, she has consistently been ranked among the world's 100 most powerful women. Yes, she is also featured in the Fortune list in 2015, the second most powerful women in the world. Second most. आप समझ सकते हो, second most. Tales of Underdog Richa Khar is the founder of the well-known brand Zebev, and as a notable and acclaimed as a brand. Now Richa Khar, a journey was not difficult to climb to this level what she is. Uski journey kabhi padhni chahiye. It's very interesting and to know this thing. And of course, monarch of wellness, Vanna Luther, founder of VLCC. Kuch aur naam hai. Falguni Nayar, the age is just a number. Falguni Nayar, the Nayaka's brand which we all know. And mother of ventures, Capital Vani Kala, right? These are all beautiful ladies who have proved themselves champions of change. मैंने सिर्फ 10 नाम लिए आपके सामने. And this 10 names, if you go and search for the histories, you get lots of things to know about them. And all this are just 10 numbers. मैंने सिर्फ 10 number आपको बताए हैं, but they have broken stereotype and stood up for their rights. They are an inspiration to men and women having displayed explanatory dedication in their respective fields. Yes. बहुत है. 10 तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि just आप उनको अपने साथ कोरिलेट कर पाओ. You can link yourself with them. कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन अपने दिमाग में आती है, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हिट होती है. एंड हमें भी इस दिशा में जाना है. We want to make our brand, our company, our product, our services in a way that we can create it. And कोई भी barriers, कोई भी problems ऐसा नहीं है. It's an impossible thing we cannot do. As the old age, हम लोग एक बात सुनते थे ना, एक चीज हम सब लोग सुनते थे, that the only thing that is constant is in the life is change. Changes are happening all around the world. हमारे पूरी दुनिया में सभी जगह पे changes चलते रहते हैं. But what happens when the change happens? We grow in our personal life, in professional life. We grow every day, each and every day. Yes. With that growing, older comes the changes, the way we think, the way we feel, the way we act, the way we articulate our thoughts. बहुत सारी चीजें होती है जो बदल जाती है. And we also experience a change in our personal, professional life. The companies continuously have making changes. बहुत सारे relevant ऐसे changes होते हैं जो हर एक industries में आते हैं. Every industry is coming to an. अभी तो changes बहुत fast हो गए. We have to accumulate with that, overcome with that. हमें उस trend के साथ रहना होता है. तो what happens at that time? हम छोटी सी चीज बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं. What we all are right now in front of. एक कैमरा का innovation जब हुआ था, that was very small thing, and now we can think that what camera is with everyone's hands.
ये इनोवेशन है, रिवॉल्यूशन है, बेटर सोसाइटी के लिए एक ड्रामेटिक एक्सपीरियंस होता है अपने लाइफ में. अगर आप देखो 50 years back what the camera has the life, and now you think about the camera what we are looking for it. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं we can talk about, but yeah, right now changes we are talking is an inevitable and always occurring. There is no way to outrun it. हमें कहीं भाग नहीं जाना है changes. We have to fight and we have to challenge and we have to overcome and we have to win that changes. How we should do that, that is an attitude we choose to respond with that. It's a choice, not compulsion. So I have seen that there are only 4 ways where people respond to the changes. कहीं कोई बता सकता है तो बताइएगा please. Let me share, let all of you share me in the comment box if possible, or you can recall it. One of the thing, the way we respond to the changes is एक critics होता है. The second is bystanders. Third is victim, and fourth you all can guess for it. बहुत जरूरी है, guess कीजिएगा. That is the change champions. Yes, change champions होते हैं जो उसको respond करते हैं. किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. There are 5 things which are very important when the changes occur in our life. और उसको किस तरह से deal करना चाहिए. As an NLP trainer, I always deal with the mind. And for me, the changes first occurs in the mind. अगर हम mind से उसको अपने एक subconscious mind में, अपने एक mind's eye में create करते हैं कि अगर this change has to be taken in, then how we should take it. उसको किस तरह से लेना चाहिए, क्या होता है उस समय पे. So let's talk about it. First and most important thing which I always see as a change is occurring. और अगर हमें इस championship को जीतना है, this change की championship को, तो किस तरह से, and how can we become the icon of our product, our service, our field, our way. Maybe it's our family also. वहाँ पे भी changes बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे stages होते हैं. Every changes we are facing with it, so we can make it. The first thing which I feel is, and it's obvious which we can face, understand and accept your emotions. It's very, very, very important, friends. Very important कि अगर कोई changes आता है तो क्या होता है. सबसे पहले normally how we react is we have that rush in our mind to react. Yes, friends, at that moment we are in rush. हमारा mind उसको react करने के अंदर चला जाता है. But it is very important when change occurs, उस time पे we don't forget and thorough with the steps. Just think, change will always bring about a new emotions in you. आपके अंदर एक ऐसा नया emotion आएगा which you have never felt before. तो उस emotion के साथ किस तरह से हम deal कर सकते हैं? How to deal with that emotion? However, we shouldn't stop. हम उसको बंद नहीं कर सकते, उसको dwell नहीं कर सकते. All those emotions, we should work to balance them and maintain the perspective. Yes, उस समय पे, at that point of time, we should take care that वो emotions को समझे. Then we react. Try to understand that किस तरह से इस emotion को हम balance कर पाएंगे. उस emotion को समझने की एक depth जाना चाहिए. Take a while, take a step back at that point of time. Yes, emotions को समझना खुद के लिए बहुत जरूरी है. And for women, if they know their emotions very well, I will always tell that समझते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं. Because at that time exactly you are self-aware, you are well aware with yourself. क्या हो रहा है आपके अंदर. Second very important thing is take some time. जब emotions नए होते हैं, नए changes होते हैं, तो हमें उसको उस तरह से लेना है. Take some time to step back and analyze what this changes means to you. आपके फायदे में है या आपके नुकसान में है, या आपके अंदर जो ये changes है वो किस तरह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है उस time पे. Is it for good? It is for making you powerful, empowering. और आपके आजू बाजू की सोसाइटी में किस तरह का उसका डिस्टेंस, मतलब क्या डिफरेंस वो क्रिएट कर रहा है. So to identify that, take a step back, little back, then need to happen in order to achieve the entire change. अगर आपको उस change को entirely absorb करना है, then this process will allow you to objectively stabilize your emotions and eliminate the noise within your mind. मैं उसको noise बोलती हूँ. अपने दिमाग में एक negative thought होता है, and उसको हम
अगर उस टाइम पे बंद कर दे and we start analyzing, then we will be more stabilized in our emotions and we will be more better way to cultivate our thoughts. और उस चेंज को हम बेटर वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं. छोटी सी चीज यहाँ पे बता दूं, ऐसे बहुत बड़ी है. Nowadays the people, those who were I think so before 2000 वाले जो बंदे होते हैं, मतलब 50s और 40s और 60s में रन करते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बहुत टफ होता है. But they have started accepting that change. And उस चेंज के साथ वो लोग एक अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. Otherwise there are lots of things which you all can understand, but yes, of course this is something, उस नॉइज को, ये नेगेटिव है, उसको बंद करें. Rather start analyzing that change and organizing that change. Yes. Third most important is make sure your approach to overcome the obstacles and understand that change does not happen overnight. एक दिन में नहीं आया था, एक रात में नहीं आया था. It has been taken a while to come through that. So don't rush. Try to rush the desired result. हम अपने results ऐसे ही नहीं ला पाएंगे. अपने दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं हो सकेगा तुरंत ही. You have to understand, you have to flow with it. And while it may seem tempting to give up, especially, keep some patience, remain positive. New challenges, try to be positive in that moment. Yes, there are some outcomes, because हमें हमेशा एक देखने की आदत होती है. But changes has to build up with lots, many, क्या बोलते हैं, courage के साथ आता है. That is very important. Yes. Keep patience, remain positive. Results शायद तुरंत नहीं मिलेंगे, but yes, of course. Yes, that makes a lots of difference. I can say it makes a lots of difference. Yes. Fourth point is acknowledge the small victories. Yes. For women, I would like to say, those who are listening over right now, do understand this thing. It's very, very, very important that छोटी छोटी चीजों में विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना सीखिए. That creates a beautiful changing process. Yes. पूरे प्रोसेस में हर एक छोटी सी विक्ट्री होती है ना, उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए. It can help fully break down the process, to break down in a way small bit sizes, छोटी छोटी चीजों में components to help yourself envision, anticipate the results. छोटी छोटी विक्ट्रीज बहुत बड़ी विक्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाती है. किस तरह से होती है, that is a process and this becomes a practice. ऑफिस होता है या घर होता है, दोनों जगह पे अगर ये प्रैक्टिस डालते हैं ना, तो इट गिव्स अ स्मॉल एनर्जाइजर. आई ऑलवेज से ये छोटे छोटे आइस ब्रेकर्स होते हैं, एनर्जाइजर्स होते हैं, जो आपको हमेशा पिलर की तौर पे काम करते हैं. जैसे हमें छोटी सी भूख लगती है तो हम एक बाइट ले लेते हैं. इफ वी नीड समथिंग वी टेक समथिंग, बट डोंट वेस्ट योर विक्ट्रीज. छोटी विक्ट्रीज को वेस्ट मत कीजिएगा. दे आर सुपर पावरफुल energizers, icebreakers in our life. कहाँ से कहाँ. And there's an optimized outlook, which is very important for maintaining. They will push yourself through the change. हर एक change के अंदर ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा up and up will keep you leveling up yourself. Yes. And fifth, last but not the least, take the ownership and eliminate the change. Keeping an open mind remains flexible and maintaining your sense of humor throughout the change process and will help you preserve. And of course, remember that nothing will happen unless you acted. Yes, friends, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा. And बदलाव बहुत जरूरी होता है. When you want to reach to your dreams, your success, your vision, your ideas, आज मुझे I'm earning 100. If I want to go to 500, I have to put a lot of efforts. But क्या बदलाव लाएंगे, क्या change लाएंगे? So it will be more better. Than these steps are really reckoners for you all, which can make more powerful, more empowering to you. So this is something very, very, very important for all of us to make it. किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे तो होगा. जैसे मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई that people respond to only 4 type, like 4 ही तरह से changes को react करते हैं. तो अगर हमको, if we want to become the champions of change, तो किस तरह से करना चाहिए, ये एक बहुत important है. And women are challenged with so many things. Families होती है, responsibilities होती है, other social responsibilities are there. At the same time, they are standing with the man in the business, in the profession, in the work, in any way.
So there is an additional responsibility of work-life balance also. So it is not easy, but it's not impossible. अगर खुद की चाहो तो वो हो सकता है. And that makes more powerful, more empowering at every stage of our life. Yes. So I always say that women are the champions of the change. They can make it if they determinedly एक अंदर अपना एक dream, एक vision बना देते हैं, तो women can do, they can create this wonderful change within them, in society, in nation, in world, anywhere they are standing. So this is very, very, very heart-throbbing when we are talking about the champions of change. And of course, each and every woman is their own champion of change, which makes more powerful to the society. Yes. So thank you, everybody, for giving me a wonderful opportunity for saying something about champions of change. And thank you, vyapaarjagat, Dr. Praveenji, and Rajshri, definitely you as my friend. Yeah, thank you. I hope you all must have learned and had something informative session for this. So I would be happy to share the feedback आप share कीजिएगा, that will be giving me an idea about it. Yes. Great. Thank you very much. जैसे मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आपके सेशंस हमेशा मुझे कम लगते हैं कि और कुछ सुनना है, और कुछ जानना है, और कुछ सीखना है. So similar is this session कि और कुछ होता तो और ज्यादा मजा आता, और थोड़ा टाइम हमारे पास होता. But time constraint and session constraint है. But there is many more things to do, many more sessions to come. So thank you very much for Naisargi for your time, and we'll see you again. Thank you very much. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ruchi. House is a dream for everyone. I was looking for my house from a very long time, and finally when I was having a difficulty in getting a loan for it. Because I am a resident and my husband is non-resident. So we were looking for a joint eligibility because we wanted a little bigger loan. So we tried doing with many of the banks, but still there was some issue. Then one of my close associates, he basically introduced me to Ruchi Agrawal from Loan Unit. And since Ruchi knows the industry very well and she has a very good relationship with all the banks, she started working on my assignments, and she took all the documents, mine and my husband's investment return, salary slip, house documents and everything. And she started processing on it. And within 15 days, we got the eligibility and we got the disbursement on the due date when builder was asking for it. So all the process went so smooth, and we were so happy at the end of it that we got everything on time. Thank you so much, Ruchi. सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, विश्वास दें, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, हर व्यापार को दे पहचान।
जगत। Yes, I know I was mute. मेरा व्यापार मेरी पहचान. Did you subscribe to vyapaarjagat TV? If you have not, please do that right away. You have been missing a lot of sessions. मैंने देखा है सुबह से आपने comments बहुत कम किए हैं. Please comment on our YouTube channel while you are watching us live, so that हमारे जो panelists हैं, हमारे moderator हैं, तब उन तक हम question पहुंचा सके. Without wasting any more minute of this, let me introduce you to our moderator, Shalini ji. Shalini ji is competent administrator at HR management professional है जो 14 plus years से she is doing her super career. I have a long introduction of her which says so many things about her. She has strong problem solving and decision making skills which she implements in her profession. She possesses extremely positive and task oriented, and she's an enthusiastic personality. She has ability to analyze problems, identify alternative solutions, project consequences of proposed actions, and implement recommendations in support of goals. So much of problem solving, ma'am. There is so much to read about you. There is so much to tell about you. I would rather have you speaking about it. Over to you, Shalini, ma'am. Thank you, Rajati. I hope I'm audible. Yes. So for a brief introduction about myself, so basically I hold an experience of over 20 years basically into various kind of job profiles. And I've been an entrepreneur myself also. So I was running a food business for past 6 years. I am actually. And other than that, I'm working as a head HR also for one of the companies right now. So that's it. And I'm politically active also. And I am state president for Wiki Consultancy Council Karnataka as well. So this is my newest role. So now I'd like to introduce my speakers today, Meeta Patel, Sapna Shankarji, Sushmita Das Gupta, and Neha Vaid. So all of you ladies, I think I do have a lot of introduction about you, but वही जैसा कि राजवी ने भी बोला, आप अपने मुंह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेस्ट रहेगा, because you know the best about yourself. So let's start with Meeta. Hi, very good afternoon all. I hope I am audible. Yeah. Yes. Hi all. Very happy Women's Day to all of us, first of all. And my name is Meeta Patel. Basically I am an entrepreneur for the past 5-6 years now, very new. Previously मेरा work experience रहा है काफी, मतलब I have been working since I passed out my college. उसके बाद से we have worked for many other industries, hospitality industry, and then I moved to hospital industry as a healthcare worker now. So I am basically a professional, healthcare professional. I have my consulting firm. So I help hospitals build quality practices with them. We also help build the hospitals for in construction and everything. So yes, this is my journey for the past 20 years. It's been an amazing journey so far. This is a brief introduction that I am basically into a healthcare sector. So yeah. Okay. So next, I'll move on to Sapna Shankar. Please introduce yourself. Have we lost her? Okay, Sushmita ji, meanwhile. Ma'am, आप mute पे हो. Hi, good afternoon and happy International Women's Day to all of you and all of us. I have been a serial entrepreneur for the last 14-15 years. And actually my latest venture was all about tea. I am a tea artist. I teach the art of making and drinking good tea. But 2 months back, I also joined a full position with a company called Hurix Digital, and I'm their
head of marketing, looking after marketing for the business. It's a content solution management company. As an entrepreneur with almost 14 years, I started my company, in 2008 in the middle of global meltdown, and another global meltdown is supposedly happening very soon. So I am hoping all of you are and putting your feet firmly into the ground and getting things sorted. All the best. Okay, so moving to next, Neha. I'm basically a professional healthcare professional. I have my consulting firm, so I help hospitals build quality practices with them. We also help build the hospitals for construction and everything. So yes. Is she audible? No. Yeah, ma'am. So far. Right. I am actually hearing someone else speak, so I paused. Am I audible? Yeah, you are audible, but there's some background noise. Yes. I thought so. Somebody else was speaking, hence I waited. All right. So, yeah, it's better now. Yeah. Okay. All right. Hi. Firstly, I'm super happy to be celebrating Women's Day with such amazing women here, and I'm so happy to be on this forum. Being a woman is something I've been very, very proud about, and everything that I do is connected with creating value. I own a creative content studio called Pendy Media, and I'm also a mentor and consultant. I'm also India's first and only wordpreneur, hence my branding is Neha Ved Wordpreneur. I operate in the space of communication solutions as well as editorial consulting. If I'm working with brands and individuals, I help them create solutions for their brands, such as websites, emails, blogs, newsletters, etc. If I'm working with people in the editorial space, I also help them publish books and give them mentoring and guidance to create books. I work on all kinds of storytelling avenues, and essentially what we focus on is building a brand personality and building the brand story. So that's essentially what I do. I am on a couple of brands forum as their head of communication, as a consulting head of communication on their board. At the same time, I'm also a part of a couple of prestigious forums. For example, I'm the national vice president for the National Council of Women's Health and Reproductive Rights. I am also closely associated with vyapaarjagat right from the beginning of vyapaarjagat and the FEMPRENEUR Awards and convention as well. So these are some of the brands also which I'm associated with. That's my 16-year journey in a nutshell. I'm also a published author and poet with 8 world record anthologies to my credit. Wow. Okay, so moving on to Sapna ma'am. Let us hear about you, please. Yeah, can you hear me? Yeah. So very good morning to all of you, and I say good morning to all the beautiful ladies in the world. So let us start with a bright journey, all of us, and let us take it together. Today I'm here, and especially many thankful to vyapaarjagat, to my Dr. Praveen, who has made this wonderful platform for many women, and it has given a very wide visibility and to many people, and a large exposure where they can view themselves in a better way. This is one of the thing, and regarding me, I am from Mysore. My company name is Belo Products, and we manufacture Ayurvedic holistic incense sticks, which is reviving the culture which was embedded in our lives 5,000 years back. So this is regarding to sustainable and a living lifestyle and enhancing our lifestyle in a sustainable and a happy living style. Thank you, Shalini. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you all of you for the wonderful introduction. And I'm feeling already very honored to be between you ladies. Okay, so to start with, nowadays we talk a lot about gender equality. How do you see women entrepreneurship prospect in gender equality era? So let's start with Sapna ma'am. What your input on that? Thank you, Shalini, for this. Well, I say yes. Today, I mean, women are becoming very in wide aspects and more better performance and enhancing their views and even their perspectives in a very wider way in the society.
yes, they are taking the roles and objectives not only in their daily lives, not only in their either taking care of the children or the family, but they have come out in a very, very bigger way today. And it is, rather than, I say, it's a equality, rather than understanding, rather than balancing the situations, making more profitable, not only in the terms of money or monetary, but also in the terms of balancing, in the making a society in a bigger way, in a mission way, where they are pursuing their passion and mission into successful entrepreneurship journeys. So this is what happens today. It is not only enhancing the lives of their personal lives, even regarding taking care of the children, making of starting from the coffees till the curds to the nights, but also seeing themselves in a better view and making their journey in a happy and successful way in the companies, or as an entrepreneurship, growing themselves, or you can say, I mean, as a woman, as a role model in many aspects and many views. And not only this, I can say even the GDP growth of the economy is also growing today very, very vitally. And also, I mean, women are taking a real major role and important role in all the aspects where they are. And the what I can say is the important aspect how a woman works is they work honestly. They, I mean, respect the ethical values, and also not only this, they take it very much in the upfront, like they are 10 steps ahead, either in the matter of just upfronting themselves, or even thinking also on even emotionally also. I think, I mean, tomorrow this emotional EQ will be a very big aspect in all the corporate companies, and they will be playing a very big role for tomorrow's world. So when I say equality, I mean, women are playing a very great role in their own respects, and they are achieving success in greater heights. Thank you for this, Shalini. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for your input. Neha, ma'am, what do you think about the same? I've personally been a big advocate of gender equality, more than it being about feminism or it being about men are ahead. Personally, I think gender equality is the way for the society to be if we really have to be a progressive society. Having said that, there's a definite visible change. While it did begin with people trying to create more opportunity for women, the whole wave of feminism was such that people were quite a lot focused on women. And now when we look at it as of today, we can definitely say we are moving a lot more towards gender equality, undoubtedly. And in fact, I would say meritocracy is the way to go. It's something that we follow very strongly at our in our company and in our office and work culture, in fact, because it's not about which gender you belong to. Your capability is not defined by the gender. If we are saying that women can do all kinds of roles of men, even men have started doing a lot of roles which were traditionally, ordained for women. We've seen male nurses, we've seen chefs, we've seen fathers being stay-at-home dads so that mothers can go out and, have an office-going career. We've had them taking up more sensitive roles as well. So I think it's definitely a wonderful era for women to be able to thrive in, and gender equality is slowly but surely where the society is moving, and definitely the way offices and corporate cultures are also evolving, for sure. Absolutely. Meeta, ma'am. Ma'am, you're mute. Yes, yeah, right. So very well said, Neha ma'am and Sushmita ma'am and Sapna ma'am and all. So I think gender equality, the best example, my personal example I would set is every day me and my husband, we both start our days saying, "Aaj tumhara schedule kya hai?" We both ask the same question to each other. So we are equally, involved into all these things. We are equally busy, but then we are equally spending time for each other. So gender equality currently, per se, it's like, it's not now International Women's Day only. Even International Men's Day is celebrated as good as Women's Day now. And I think it will be more in future.
मुझे लगता है आगे से 2-3 साल बाद या 5 साल बाद मुझे लगता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे चला ही जाएगा, बिकॉज नाउ वी ऑल आर इक्वल. इट्स नॉट लाइक एक पर्सनल वुमेन्स डे के लिए स्पेशली कुछ किया जा रहा है एंड ऑल. यस, बट ऑब्वियसली इट्स स्टिल currently in India per se abhi ek stage par hai ki these things are now encouraged and they are also inspired. The women are looking forward to all these things and probably itne sare big stars hain, big people who are across politically also women are into it now completely. So sabko dekh ke there is a lot of influence in women ki nahi hame we have to step out now of that particular mindset कि नहीं हम लोग को बच्चे ही संभालना है, हम लोग को घर ही संभालना है. एंड थैंकफुली मेल्स इन आवर लाइव्स हैव बीन a very big inspiration obviously. So there's a very huge movement happening in the entire world now. Yeah, very right, ma'am. So Shweta ma'am. Hi. Good to hear all these, wonderful comments. And I don't know if I would call myself fortunate or unfortunate because I do not have a husband at home whom I can say, what is your schedule today? Now, going back to, I would like to throw some numbers before I can get into this comment. There are 432 million women in India who are in the workable age. 432 million. Of that, 343 million, almost 90% of them are not in paid formal work. So when we are talking about being gender equal and stuff like that, the number says otherwise. We are absolutely not equal in terms of earning our own bread for ourselves. That could be for many reasons. Now, what I have experienced over the period of time, talking to different people, women, girls, men, boys, is that there are two sets of blocks that we have in our head. The first set of block is an internal block. When a woman asks, am I capable? And the second block is when outsider asks, which I call external block, is she capable? Now, the problem is that when a woman starts from am I capable position, then she has double work because she has to first make herself believe in herself and then make everybody else believe that she is capable. Now, if I can start from the place where I am sure I am capable, I'm confident, I should be allowed, and I do not need permission to be allowed, I think that this external challenges becomes easier. I'll give you an example. I was talking to a girl. She is from Tirupur and she was doing her master's degree. So I assume that she comes from a pretty well-educated family, and she pinged me on LinkedIn and she asked, ma'am, can you help me in with my entrepreneurship ideas and etc. I said, yeah, sure. So she wrote me a lot of things saying, this is what I want to do. And we had exchanged a lot of emails, phone calls, etc. But at the end of it, she asked me something which kind of shook me. She said, ma'am, but I don't know if my parents will allow me to do this. Now, I don't think, it may sound cliche, I don't think a guy would have told me this ever, if my parents would allow me to do this. And that's what I mean by the internal barrier as well as the external barrier. So gender equality, long way to go. Gender equality is like this. First, we have to reach here as a woman. To be even saying it is equal, we are here. So I am hoping that the International Women's Day continue for as long as it is required for it to make women aware and face these challenges well and be successful. Thank you. Can't agree more actually, yeah, because everybody is facing their own separate issues actually. Some people, few of us are really lucky to be called gender equal. So, but do you think that society is supporting women entrepreneurship? And like, if you think otherwise, then what are the challenges? Okay, see, there are privileged people like us where
society is helping us. My parents have always been okay with whatever I do. So there is a segment of people whom we are associated with, whom we see ourselves around us. But there's a whole set of people where it doesn't occur like that. There, every step, there's a challenge for women. There's a girl who stays next door, my neighbor in the apartment. She just got married. She's 21 years old. She has to leave her job because her husband doesn't want her to work. And she's 21-year-old. So if I look into this, in fact, she's a pretty capable woman. I told her if she want to work with me, I would offer her. She doesn't even have to leave the house because she's just next door. Her father did not allow that. Okay, so if we are in that situation, we can say that we need to change the mindset of the people. I'm hoping in my next generation, the people's mindset are changing. In this generation, we are struggling. I'm hoping that when my children's age, no, I'm not married, so not literally, but the children that grow up will be different kind of people, and it will be a different kind of world. I'm just hoping that because I think in my home also, I see that my brother is and his wife is giving the right education. So my nephew who is studying alone and stays alone in Bangalore, he can cook, he can clean, he can do everything. And sometimes I pull his leg and say, okay, you are marriageable. Abhi tera shadi hoga, kyunki tere ko sab aata hai. So, you know, and he's a guy and he is very proud of that. So I think thoda thoda to change ho raha hai. And I'm hoping that by the time ye log jab adult ho jayenge, shadi wadi kar lenge, tabhi jaake thoda sa wo imbalance change hoga. Very true, very true. Even I have 2 sons and I make them do the same. So I can relate. So what do you think, Meeta ma'am? Very rightly said, Sushmita ma'am. Actually, men ghar mein ho, nahi ho, that is a different thing altogether. Even I don't have any kids and we are not planning. We are very happy currently the way we are. But yes, as ma'am said rightly, that the next generation after, I mean, when supposing we are parents, तो हम लोग इसी तरह से रेज करते हैं हमारे बच्चों को that there is an equality at all the stages. तुम्हारा काम तुम्हें ही करना है, लड़के का काम तुझे खुद ही करना है. You are not going to be, helping each other or help you, not going to have any helping hand in future. So yes, शादी का पता नहीं whether they are going to get married or not. The systems are going to change 10 years down the line, 20 years down the line. We are not sure what's going to happen with them. But equality, as ma'am said, of course, मैंने 2-3 साल थोड़ा ज़्यादा कम बता दिया, but she is right. Probably it will take at least 10-15 years more for at least in India to get to that level of mentality. Probably abhi ratio is 40% of people are very much into this thing कि नहीं women entrepreneurship and females को ज़्यादा बढ़ावा दे and everything. Abhi problem is that government has to take certain efforts still to make initiatives for women. What is entrepreneurship for women? उनके लिए कुछ और लेकर आओ, उनके लिए special concessions होनी चाहिए, loans होने चाहिए and everything else. So we want to get out of that particular barrier very soon. Don't know when it will happen, but yes, there are initiatives that are already being taken. So yes, society at large thoda sa accept kar rahi hai, but abhi what we have witnessed for the past 20 years now, since we were born, like 80s, we have all been born of 70s, 80s ke hain hum log. To wo jo generation gap jo humne dekhi hai for the past 30 years, 40 years, that has actually evolved. We have been able to witness that change. And we are very proud as women. We have been, getting that particular influence from our parents, our family at large, our husbands, our spouses. So, of course, that is as a matter of fact, we are into that change position, but then it certainly takes time. Even in Western countries, I'm not saying that 100% of women entrepreneurship or women liberalization is there, but yes, wahan pe bhi abhi probably 70-80% of things are at this level. So, of course, society is willing to do that, but there are a lot of efforts still that government and as a society ourselves, we need to change, So that's my view on this thing. Neha ma'am. So, like Meeta, even my husband and I don't have children and we don't plan to have children. But I definitely see a big change in the way the children of today are being raised. When I said that I think as a society we are moving towards gender equality, the hope comes from the fact that while there is a lot to be done in our generation and there are a lot of challenges,
at least the next generation, there is a larger population being raised correctly. I'll give an example. One of my colleagues had put a post about her son, okay, where she said that her husband asked her son to pack tiffin for him and his sister, okay. He knew how to make a sandwich because he was a boy of about 12, 13 years old, and he knew he didn't have to cut anything, like it was all there. He made his sandwich, he made his sister's sandwich, who's younger than him. And when the parents came out, there were 2 more packets made for them. He said, but y'all are both also going to work. And the father said, yeah, but I was in a rush, so I asked you to help me. He's like, mom is also going to be in a rush. And that's when the parents realize that this boy is realizing that certain things, if they're like household duties or whatever it is not a gender defined thing. So given that, there is hope that where a lot of women earlier, they wanted to be entrepreneurs, and the starting is always going to be home. Even no matter how many opportunities are created for them, they will never be able to access those opportunities unless the domestic front is sorted. And families will not be, if families are not going to be enough supportive that, okay, her career is important, her desires are important, they will never be able to move into the zone where they can access those opportunities. Kareena Kapoor recently said, I'm very clear, I want my sons to see that I'm going to work. She did not say that Papa goes to work and I am here. She said both of us speak exactly in the same way so that they don't see us in different roles just because of us being parents. And that is, I think, the change which will allow women to pursue their entrepreneurial desires. I also come from a space where I earlier was in a job set up for many years. I did on-ground experience. About 3 years ago is where I set up my studio. But when I was doing that, my father had a lot of concern that, we've never had an entrepreneur in our family. How will you manage? I said, I know I will do. And while my father voiced his concerns, when he saw that I knew what I was doing, all he told me is, I know that you will crack it whether I understand or not, because we've not seen entrepreneurs in our family. And that was enough for me. I had my mother-in-law, who was my biggest example, because she's a single mother. I know how she's raised a family of 2 sons, and my husband is more sarvagun sampan than I am, to be very honest, because he was raised by a mother who was so that I am earning, I'm doing this is my career. And she did not just earn as in, okay, I have to be a breadwinner. No, her income and her earning was very entrepreneurial, because she's like, how do I create value? So when I see these examples around me, I have hope that as the domestic aspect of women's life changes, there is more hope for them to be entrepreneurs. And when that is coupled with the kind of initiatives that the government takes and the amenities that they provide, there's big hope. I think it's a great time for India as an entrepreneurial country, and for women as entrepreneurs as well. Oh, Sapna ma'am. Yeah. Can you just repeat the question, Shalini? Yeah, my question was that do you think society is supporting women entrepreneurship? And if you think otherwise, what are the challenges? Yeah, let me go first. Like, are we helping ourselves? How much justification do we have in helping ourselves? How much confidence have we built? These are the things we, see, example, I want to say, like when we were in our childhood, when we were going to our schoolings in kindergarten, we were doing so many stuff. Were we speaking anything about this? We were just happy. We were just, accepting whatever the role it was given, whatever the duty it was given in our school. We used to do it, right? There was no as a female or a male or anything for that part. We enjoy that part. When there is a full transformation today, then why is this judgment? Why is this taking to the other part? We have already been proven before, now, later, taking from the celebrities, from the heroines, or today to the role of chef in the woman. See, if a woman, when she was able to balance such a huge families,
when it was a joint family before, and today when she's taking many roles even in the outer world also. So it's so simple that woman is proving to herself day to day. It's not only with the confidence what we have in the society. It's just she needs a little support from all the people. Yesterday, I was just seeing a video where I think, many people would have seen because it was being forwarded in the WhatsApp. A girl who is an engineer, she came out with a low income budget from a cement pipeline. She could build a house with a minimum of 3 lakhs. When this project was taken, she was backed. She was backed not only, mentally, but also financially, even from her parents, from her in-laws. She didn't get support, but she stood herself. She worked very hard for 3 years, and today she has been taken by big corporate companies, and it is one of the biggest news in the BBC world today. And say, what about me? Today I'm running my industry very well successfully, though my husband passed just 2 years back, and I have 2 children. And today I've done a very successful journey entrepreneurship. So there are a lot of things like this, Shalini. I say, like, don't look as a aspect of women. Look for yourself as your potential. See that your passion and mission always is working with you, and always have that self-respect, and also these core values of yourself to build yourself. Thank you, Shalini. Absolutely agree with that. So moving on to the next question, women empowerment has become a focal point basically of politics, if you guys may agree. What do you think about initiatives taken by the government to encourage women entrepreneurship? So, Sushmita ma'am, can we start with you? Ma'am, you're mute. Yeah. I'll quickly share a story and then we'll go to the next one. So storytelling is, people like this kind of stuff. So about 7, 8, 10 years back, I don't remember, I went to a bank, one of the bigger private banks with whom I was doing my business. And I was running my company and they were my banker. And I went there to get a business loan under women's schemes. I didn't know what were the women's schemes. So I went to and meet the manager in the bank, and he looked at my application and he asked me, we cannot give you this loan, business loan, because we don't know if you will be going to be successful or not. By that time, I already had worked for 6 years as an entrepreneur. Then he said, there's only one way. If your husband is working in the IT in Bangalore, he can apply for a personal loan and I can give it to you. I said, sir, I cannot marry because you want to give me a loan. That's not my agenda in life. So I walked out of that. Now, cut back to 2019, when I was planning to take a loan again for some other business purposes. And I went to a pretty big bank and I gave them my proposal and they looked at it, and the gentleman who was the manager, he said, I think it is a better idea if you apply these loans under this government schemes. So the moral of the story is that in a matter of maybe 7, 8 years, I could see there's a shift in how people were treating women when they are going to ask for loan. Now, I didn't take that loan for whatever reason, so I cannot tell you what happened. But there are schemes, as I understand. Government has something called WEP, which is part of the Niti Yog, and SIDB is also part of that. So they actually help in. There are 3 parts in that schemes. It's called, the first one is for aspiring entrepreneurs, women entrepreneurs. So what they do is, this is a place where they come and this is a place where for influencing aspiring entrepreneurs to become entrepreneurs, the first step. The second step is that if you are an entrepreneur, there's a lot of knowledge sharing that happens here. And the third one is the hands-on support. You need any help, you need any logistical help, legal counsel, etc., it's there. Other than that, there is a lot of thing that is happening on the Startup India platform. There's something completely dedicated to women.
and a lot of other schemes that are there. But I think, again, I mean, the important thing is that one should be aware of that. I see a challenge that not many people are aware of it. And if you're aware of it, then how do you go and claim it? So that's a challenge there. There are schemes there. I think I'm sure there. The government of India projects that by 2030, there will be almost 31.5 million women entrepreneurs. So if they're putting that forecast in place, then I'm sure they have, the means to reach that numbers. So what we have to now understand is that how are those things communicated, number one, and how those things actually get implemented so that the women are helpful. So yeah, that's where I stand. First of all, good story. Kind of again can relate with everything. So Meeta ma'am, what's your take on that? Yes, certainly. The ma'am is really aspiring and inspiring both. So Sushmita ma'am, your stories are really amazing. We'll have to have a tea with Sushmita very soon, all of us. Always. Yeah. So coming back to the government schemes and all, yes, there are, as I earlier mentioned, that still in India we'll have to have government government initiatives for women, empowerment and entrepreneurship. Of course, there are many schemes. Ma'am just highlighted one of them, which is WEP for Women Entrepreneurship Platform by SIDBI. I understand. There is one more scheme with the Bharatiya Mahila Bank. I guess it was especially for the underprivileged of women entrepreneurs, and which was merged with the State Bank of India in 2017, as I understand. So again, SBI has taken quite a lot of initiatives in terms of giving good interest loans on for women, in terms of housing loans or in terms of their business development things and all. So that is one. And there have been certain, I was more successful, the one which has been currently Beti Bachao, Beti Padhao scheme has already been quite largely advocated across the country. So as ma'am was asking that how the things are portrayed and how the things are being, conveyed, advertised and marketed is very important. So there are schemes, and there is something called Mudra Yojana for female entrepreneurs from a small scale to large scale, which has more into like the women who are having their own beauty parlors or small scale productions, things and all. So it can be food production also, and all. Not like Gru Yojanas, but certain kind of activities. They can have their own gyms. Currently in Ahmedabad, where we are, I am currently. So there are a lot of gyms. The owners are women, for that matter, and they are like aged women. I was very surprised to see a few days back. I just went to an inquiry section in a gym, and there was a 68-year lady who was the owner of the gym, and she was like working out at that particular moment. And I was like, oh my God, if she can, why can't we at this particular time, at this age? So now those are things. And there is Annapurna scheme for women who are like jo Gru Yojanas and Gru Udyog se jude hue hain, to unke liye bhi काफी सारी चीजें हैं that government has shared. So yes, there are a lot of initiatives, but as ma'am said, that unless and until they are conveyed, unless and until they are marketed and advertised in a proper manner to reach out to each and every individual, it is always going to be a challenge for all of us. Yeah, ma'am, what's your take on that? Any experiences? So honestly, I have also felt that there has been a lot of reformation and opportunities created by the government. Meeta has mentioned a lot of the names of the schemes, so I'm not going to repeat them. But there has been a lot of provisions made, especially from an economic point of view. A major part of why women entrepreneurs have not been able to, go ahead and fulfill their desires and entrepreneurial dreams is partly because funding time. Now, the loop is such that they don't have their own capital to start their own business because they were not really working, they were not working. I think they were not earning. Let me be a little politically correct also over here. They were not earning members. When they started becoming earning members also, they were in the space of sustenance. Well, sustenance wale mindset se nikalte is where entrepreneurs started developing. Now also, but I would say even though the government has, created quite a lot of, economic opportunities, which is amazing, there's also one thing I wish was a little different here. The space for which they are nurturing, creating opportunities and nurturing entrepreneurs
is still in the space of tiffin service, salon. It's like that grah udyog pehle jaise hota tha, mahila grah udyog. It's a little bit more elevated version of it. I'm not saying that there's anything bad about it, but what happens where there are more ambitions? When are we going to see more Vinita Singhs or more Falguni Nayars who are able to talk in terms of crores of investments and sit there and be able to command that? Because if you're a true entrepreneur, getting a 50 grand loan or a 1 lakh or even a 5 lakh takka loan may not really do much for you if your business needs a lot more seed funds. So it would be amazing when we are able to. This is great because there's momentum, there's some movement. Okay, at least we are not at 0 or 1. We can say we've probably come up on the scale somewhere at 4 or 5 in terms of women entrepreneurship and government opportunities that are being created. But the scale definitely needs to be a lot more larger than it exists, because what is happening is we get private funding. If we are really talking about being able to make India truly AATMA NIRBHAR, which is a wonderful movement, we still have more male-led businesses getting a lot more benefit in the AATMA NIRBHAR mission as opposed to women-led businesses. Women-led businesses see more scope in privatization. And I would repeat someone like a Falguni Nayar for sure. I would repeat a Vinita Singh also over here, or a Namita Thapar, for example. But we would definitely love to be in a zone where we could play the bigger number game for sure. If we have to truly have an entrepreneurial boom with women entrepreneurs. The opportunities are immense, but the scale definitely needs to be bigger. Absolutely. Sapna ma'am, what's your take on that? Yes, well said, Neha. This is the real practical things right now which is happening. Well, here we have to understand more little bit deeply with what we are having right now. See, there's a lot of things, and actually the government, there are many schemes which has come out from the MSME, where we are not able to take the maximum potential from the government basis. That is because either lack of knowledge, either lack of support, or either lack of understanding where your business has to be in the position to be led. So here many organizations nowadays have been collaborated and are acting as a bridge for the entrepreneurs and between the government, where we have to come out more and get to know the knowledge and support from them, and also on the procedures how they will be well laid. The other side, when you are, undertaking or running a business, you have to be well understand that, in which place or in which position you have to be placed under the schemes or under the government, or what type of product or service you are able to be given from your side, so that even the government can give you the maximum help when you're in need. So it's not only from the other side seeing the government, you should also be well understood about your own way of putting and making it out to see the successful. Either it may be from the investor side as a private sector, or from the government side. When you have maximum opportunities from the government, you should understand your business structure very well to be laid ahead. That is the important part where see nowadays what is happening. Yes, women are coming out, women are trying to do so many business, that okay, fine. But see, from all these years, what was happened, women had been pressurized as a only to a limited thing. So they were made to be not to be decide or not to be independent taking decisions either in the house or in the society. So to come out of this and to be more, confident and to stand themselves, to understand that maybe it will take time, because financial, which is an important part, they have to take it as a very important role for the society and from the house field also. It is personally and professionally what I see. Very well said, ma'am. So
here I would like to ask, like, what are the challenges you guys feel like, since all of us are entrepreneurs? So what are the challenges you people have faced, or you think that the other women entrepreneurs face? And how do you suggest to meet those challenges? Yeah, this is a very good question. Yeah. Yeah. Sushmita ma'am, please enlighten. Okay. Yeah. See, I really do not, I don't know. I mean, the way I think, I really do not even think that something is a challenge or not. I just go ahead and do it. But having said that, there are some silly things that has happened. For example, when I started my career as a entrepreneur in 2008, and I progressed. The silliest and something which really annoyed me is people will look at me and tell me, you are very young to do this. So after a while, and somehow, I have gray hairs which started from when I was 28. And so I used to show them, I mean, see, I have gray hairs. What do you mean I'm too young? Okay. So I actually literally, after a lot of this kind of experience that, okay, you're too young and stuff like that, I literally stopped putting colors on my hair so that people will at least not think I'm too young to do stuff. I think it's a bias in people's mind that ye choti ladki kya karegi? I mean, what is she going to do for us? This is a silly thing. I ignored it. It doesn't really matter to me. I got things done as I wanted to be. So as I said, I mean, after I have done something, I have realized that that was a challenge. But when I was starting anything, I never really thought ki ye challenge tha mere liye. Some of that I got from my mother, and that is my own experience. So these are the only. I always bootstrapped. And then at some point of time, there's a private equity company who came and picked up a large stake in my company, and I sold out that company. So all those things happened. So I really cannot say they were in the interesting thing is that in my tea thing, when I call myself a tea artist, in fact, people look at me and say, what is that? Because there is not a single tea artist in the internationally or in India. So I actually created that designation for myself because I wanted to showcase exactly what I want to do, and that helped. So that kind of broke down a lot of challenges that way. Being a marketing person all my life helped in creating a positioning for me very clearly. But I am 100% sure that a lot of women face a lot of challenges, but for me it was that way quite okay. And my father once told me, I come from a business family. Nobody in my family has ever been into services, but these are all they're all businesses, and I'm like a service oriented business. So my father once told me, what kind of a business you do that does not make sound? And so one day I had to make him sit down, and I told him, okay Baba, this is what I do. I give consulting services and stuff like that. And then he said, okay, good, I'm quite happy that you are doing this. So this is not a challenge, but this is like, breaking mental biases or understanding or those kind of stuff. Meeta ma'am. So in line with Sushmita ma'am, yes, challenges facing. I have a very funny incident. Initially, as I said, I was working as an employee for an organization, right? So the mindset I had created for myself कि नहीं मतलब किसी और के लिए काम करना और खुद के लिए काम करना is there are two different things. 15-20 साल से किसी और के लिए काम करके फिर खुद के लिए काम करना and proving that to people was a challenge, because जब मैंने मेरा खुद का business जब मैं enter हुई to scale it to a level, जो लोग मुझे already जानते थे, they were my clients, they were my colleagues and everybody, and जब मैं negotiate करती थी business, when I went out to negotiate in terms of money, in terms of getting the project and all, तो मुझे वो लोग बोलते थे कि पक्की businesswoman बन गई है. I said, what is pakka businessman? What is pakka businesswoman? And that only happened when you negotiate for money.
So for them to understand that me being a female, going there, negotiating about money, telling them my terms, this is how it is going to be, it was very hard for them to, get that thing into their mindset. So it took me 5 years to now change my own mindset कि वो लोग तो ऐसा बोलने ही वाले हैं, but you are not supposed to get into that feeling कि you cannot do it, but then you have to dictate your own terms. So it takes a little time for some women, especially जो women पहले से थोड़े से soft होते हैं, who have already worked under some other people, and then they're trying to do business. So my message to all those girls and all those women out there is going to be that ये challenge आपको face करना पड़ेगा, number one. Secondly, you don't have to prove yourself every time. जो मैम ने और even Neha and Sapna ma'am all have said that you don't have to stop proving yourself, number one, कि ये आप नहीं कर सकते, ये आप करोगे, और am I capable of doing this and all. So question yourself in another way. How are you going to do that, first of all, right? Instead of can, you convert your questions into how. So that will make a lot of ease in your challenges. Family say agar aapke paas full support hai, then everything can happen. Then don't again make can ke jagah how pe create karo. How can you change your family's mindset in this? Well, you have to make sure that they understand what you're doing and they understand you are doing it in a right way. I still remember when I was just started my job, so my grandpa used to milta hai, that is our grandfather's mentality. They ask कि खाना तो मिल जाता होगा, खाना इसमें include है या खाना इसमें include नहीं है, those kind of questions are there कि वो लोग हमें पूछते हैं generally. And then there are a lot of other things in terms of challenges that when you're working as a woman, as a housewife or everything, you are an entrepreneur at all levels. Every woman is an entrepreneur wherever she is, whether she is working outside or whether she is managing home. So all are managing directors or directors of their own lives. So that mindset has to change. कि नहीं हम लोग खुद यही करते हैं and all. So challenges, of course, there are different ways to deal with it. How family pursues it, how your society pursues it, you have to overcome them accordingly. So that's my say. Thank you so much, Meeta ma'am. Neha ma'am. So I'm going to take a little cue from Meeta and add something to what she was saying. That why is it that when a woman is negotiating, the money is an issue. Okay, it often is like itne paise kaun mangta hai, and that's a challenge I think is faced by a lot more women entrepreneurs on the negotiation table as compared to men. It's assumed that the men know what they are talking, and they have justified the fee that they are commanding or the deal that they are asking for. Women often have to give a lot more justification. I personally feel that, women need to actually begin with themselves in this case. It's not about convincing others. It's about being sure that you know what you're saying. Because a lot of women, Vicky, this year, International Women's Day, Vicky, all of them have been promoting the theme of, break the bias. Okay. I'm going to go ahead and say, also break your conditioning, because it is not a good quality in a woman. A lot of women feel that. Men don't feel that, because men feel that paise ke bare mein aur kuch socha to bhai hum log pagal hai. Men are so wired to think everything money wise that women ke liye, whether it is financial literacy, whether it is a financial ambience itself at home, is usually different compared to men. I personally would love for women to make that change and break that conditioning in their head that if you know that you have a skill or a product and it is valued at so and so price and it commands that price, or it commands a particular fee for your servicing or consulting or whatever, unapologetically and confidently say, this is what it is. If you start seeing yourself as a brand in your head itself, people are not going to negotiate or argue with you also after a point. I have had cases where I facilitated that change in my mindset, and I have seen that people did respond differently. It became a lot easier to close deals at the value that I thought was correct
when I very confidently say, put out the vibe that I know what I'm saying. The door to negotiation is not open. Don't men also do that, and they crack these and they come back with highest sales revenue and whatever trophies. I think women entrepreneurs can do that and make sure that they are equally firm in their approach when it comes to money matters, because वो भी हमारे हक की कमाई है. So let us not be apologetic or in doubt of the amounts that we quote. लाख मांगना है मांगो, करोड़ मांगना है मांगो, हक से मांगो. नहीं मांगोगे तो guarantee you are not going to get it. मांगोगे तो scope तो है. You're opening the door to get what you demand is fit for you. Absolutely. You have to have your own conviction. As long as you are convinced, the world will not need convincing. Absolutely. Absolutely. Sapna ma'am. Yeah. Challenging is a very, very interesting word. It teaches you to learn. It teaches you to refine yourself. It teaches you to boost your confidence. You learn a lot in this. That is what challenges are. You have challenges in the incubation stage, seeding stage, growth stage, business stage. Even after having success also, you'll be having challenge how to balance the success in your life, how to go to the next stage. So these challenges are every aspects you see challenges. It's not only in a business, it's not only in your personal life. It is the mindset, how you take it to a better stage of yourself, challenging yourself day to day. That is how you can see as a challenge. And yeah, as an entrepreneur, always I say, like, when you're learning is the first thing to take up any challenges. Learning is the first thing to skill yourself. Learning is the first thing to make yourself more knowledgeable and more, more exposed yourself in all the ways. So when you are facing challenges, you adapt to learn, adapt to change, and you adapt to make yourself in that proving stages or making yourself in successful. What you do, you try to, push yourself in a better way. That is what challenging keeps you to. It is a never ever ending learning stage. The biggest example is myself. When my husband was not there, it was a very, very new thing for me. It was a total transformation where I was in a full, total household, homemaker. And I took up this challenge. And today I'm a successful entrepreneur and I won many awards. And today I'm running my business globally and today nationally and internationally. So this is what we have to learn. What I say is just accept, learn, be open-hearted, whatever comes into your life. So challenge will become a very small, minute word in our lives. Thank you. Yeah, very true. So quickly now, one last question, and this one I want it to be really short and sweet. Literally one phrase advice for fellow women entrepreneurs. To start with you, Sushmita ma'am. Okay, so be yourself. Don't try to be a man. Have confidence and have conviction. That was really short and sweet. Neha ma'am. Believe in yourself and don't be hesitant to try out something new. But at the same time, do not disregard the advice or suggestions of people who've been there and done that. A lot of people feel, no, I know, I will chart my own path. Yes, you can chart your own path. But if people who come with certain experience give you advice, it's sound advice. So take it, heed it, and unapologetically follow what your heart says. Unapologetically. That was a very good one. Sapna ma'am. What I say is never give up. Never give up. Be in your present mood. Understand the consequences and be more practically and use your logistics whenever you need to put it in a right way, and always
do the right thing at the right direction with the right intention and at the right time with the right approach. Meeta ma'am. As I earlier said, every woman is an entrepreneur by herself. So, of course, be yourself, whatever you are. The one more important message I would want to give to all women who are aspiring for being an entrepreneur or who are already are entrepreneur, make sure that you duplicate yourself. If you want your company to grow, if you want your entire thing to grow, you have to make sure that you are duplicating yourself in terms of training your second line always. That is only help you grow from where you are. So I have learned that over the past few times. So I think that's the very important message that we all need to understand, because once we think that ye hum hi kar sakte aur koi nahi kar sakta, that's where you stop growing. So let's do that. Very true. Very true. So I guess that was quite insightful. All of you, thank you so much. And I believe that end of the day, what I understand from all this is just own your life. Don't hesitate asking for help if you need it. Just go with whatever your heart says. Over to you, Rajati ma'am. Thank you very much, Shalini. Very well moderated, and panelists were awesome. I think the last part was the best part that I took interested me the most. First was never give up, duplicate yourself, that is train the second line, yes, but don't be a man. So that was something. Aaj Women's Day pe chalega, no problem. So thank you very much. Don't try to act like a man. Act like a man. Yes. Sometimes what happens when you are in a company running it, you are expected to behave like as a woman, as a man would have done. So don't do it. Be your yes, be the women. yes. Absolutely, absolutely. I pride. also, yes, sorry. Take pride in that. Take pride in being woman. Absolutely, absolutely. So we are all very proud women on this very special day of ours. So wish you all a very happy Women's Day, and thank you very much for taking time out and for this session. So thank you very much. Thank you very much, Shalini Madam. Thank you so much. Thank you so much, Shalini. Thank you so much, all panelists. It was a pleasure. We'll keep in touch. Thank you, Shalini. Thank you, Dr. Praveen and Rajashree for taking up this initiative. And once again, happy Women's Day to all of you. Wish you the same. Thank you. Thank you. Dear all, please do not forget to subscribe on vyapaarjagat TV. And we are waiting for your comments, and do share your comments, pictures, love on our Twitter account. Also, do tag us with Mera Vyapar, Meri Pehchan. Thank you. Hello everyone, I am Dr. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting. Everyone happy is not necessary as much as having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is pretty much everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women's health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better, better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. Hello wonderful ladies. An inspired me and an inspiring you is the fundamental for any growth. And I'm very happy that FEMPRENEUR 2022 is all about you and me. Hi, I am Nikisha, an idea to implementation coach, and I help people build their dream businesses. Working with more than 1,000 entrepreneurs and helping them build investable startups
The importance of a community and a platform cannot be ignored. I'm very happy and excited to be a part of vyapaarjagat, which provides such platform to women entrepreneurs. So come on, be there and let's enjoy and be a part of this happening FEMPRENEUR 2022. Tune in and see you there. Hello everyone, myself Rupali Shah, owner of Trends Look Fashion Jewelry. हमारे यहाँ ऑफिस वेयर, डेली वेयर और वेस्टर्न वेयर की ज्वेलरी मिलती है, जो जिस बंगलो बोडकदेव पर हमारा शॉप है। सबसे पहले तो मैं व्यापार जगत का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये फेमप्रेन्योर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उन्होंने ऐसी महिलाओं को नॉमिनेट किया है जिसने अपने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद अपना एक व्यापार शुरू करके उसको अपनी एक पहचान बना दिया है। और यहाँ पे उन्होंने स्पीकर्स भी रखे हुए हैं जो व्यापार से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे और इससे भी कई सारी महिलाओं को फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच व्यापार जगत कि आपकी वजह से ऐसी कई महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ और बिजनेस जर्नी सारे समाज के सामने शेयर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। Warm greetings to everyone out there. I'm Nidhi Virmani, the founder of Pratibhalya. Like you, I also play different roles in my life. I am a wife, I'm a mother, a daughter, daughter-in-law, I'm a sister, mentor, teacher, and a proud womanpreneur. Every woman has a journey to share and inspire the society. And believe me, not everyone gets this opportunity to share her achievement with everyone. And I'm glad to tell you that I have got this opportunity as a speaker to share my story with you all on this International Women's Day celebrated by vyapaarjagat. I would like to congratulate vyapaarjagat for taking up the mission of AATMA NIRBHAR BHARAT. I truly support and admire this mission of celebrating and supporting women entrepreneurs. Girls, this is the right time, the golden time, wherein we women are getting so much of opportunities, support and guidance to flourish our businesses and to make India a self-reliant country, truly Atmanirbhar. If you are an entrepreneur, come forward, share your story and inspire your fellow members. And if you are not, do attend this event, get motivated, get guidance, and it is like very much possible that this event is a life-changing event for you all. Till then, see you all, keep smiling, keep rocking, and all the very best. Thank you so much. Entrepreneur, एक ऐसा प्लेस। We are live. हमने देखा कि हम क्लाइमेट चेंज में कैसे मदद कर सकते हैं उसको स्लो डाउन करने में। हमने ये भी देखा कि हम हमारे ड्रीम्स कैसे फॉलो कर सकते हैं। हमने ये भी देखा आज कि कम्युनिटी ड्राइव जो कम्युनिटीज चलाती हैं विमेन, उनके इश्यूज, उनके चैलेंजेस या उनके लर्निंग्स क्या क्या है, कैसे वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये कम्युनिटी एक इंटैक्ट रहे और विमेन सपोर्ट विमेन, लेग पुलिंग ना हो, क्लीशेज ना हो जो इतने सालों से चल रहा है, जो हम सोप्स में देखते हैं, वो कभी नहीं होता यस इन कम्युनिटीज। फिर हमने ये भी देखा कि विमेन की साइकोलॉजी क्या होती है जब व्हेन दे स्टार्ट देयर ओन जर्नी एंड व्हाट ऑल चैलेंजेस दे हैड फेस्ड बिफोर। घर से ही चैलेंजेस शुरू होते हैं, बाहर के तो चैलेंजेस बाद में आते हैं। Now we are going to meet one very wonderful person, a female pilot. But before that, one more wonderful person who is going to moderate this session. So I'm going to introduce Avni and she's going to take us forward. Avni is a graphologist and a symbologist from Mumbai. Avni wanted to help small, medium and large businesses to set their logos right to ensure they become successful. The vision of Avni was always clear to help others reach full potential. And here too, she was clear to help business reach full potential. She underwent a lot of learning and research in this field and was certified into scientific logo analysis. She started a new mission, Avni's Logo World, to help grow your own business
with the right logo. Her mission was appreciated by many and she got many clients too. Congratulations for that. She was also awarded the International Indian Awards for extraordinary contribution to the society, inspired by Modi government in association with OMG Books of Records. Avni scientifically analyzed logos of many and she designed the perfect logos for many, and the positive result shocked the owners who had been doing business since years. All the best for your journey, Avni. Over to you. Thank you so much, Rajashri, for such a lovely introduction. It gives me immense pleasure to introduce Captain Jill Parikh, co-piloting Go Air. Welcome, Captain Jill Parikh. She is from Mumbai. Hello. She is from Mumbai. Jill did her flying in 2007 from US, awaiting for an airline job. Finally worked as an instructor with an Indian flying school for 2 years, along with which she completed her graduation BSc Aviation from Mumbai University, followed by MBA in Aviation Management. In 2010, she joined a leading corporate and worked there for 2 years as a trainee first officer, and post which she was unemployed. So yes, ups and downs are there with everyone's life. And here we see she decided to do her A320 TR in 2012, but to her bad luck, Kingfisher Airlines collapsed and her rating made her no good to get a job. She did fashion designing and joined her mom's fashion business to support her. But passion to fly was there within her. Continuing in her struggle, she managed to get a job in 2018, and here she is finally flying the baby bus, the Airbus 320. The wait paid off. She says, patience is the virtue, never give up, because her dream is to fly over the rainbow so high. That's superb, Captain Jill Parikh. We welcome you to the platform. Thank you so much for having me here. So, Captain Jill Parikh, as the first question to go, I would just like to know about how did you get this passion? Like, from when did you started dreaming to fly, and how did you get into this industry? What motivated? So, in my 10th standard, I went through this aptitude test, and they told me that I can become a fashion designer, a pilot, or a cardiologist. And fashion designing was in my blood because my mom's a fashion designer. And I stay very close to the airport. So I used to see aircrafts take off, land, and it really fantasized me that this is something that, is out of the box. And I really wanted to fly since then. The first time I ever sat in the aircraft was the time I went for my training to the US in 2007. And I was like, okay, I'm going to learn how to fly this big. And when I went, it was a 747, the jumbos. And I was like, wow, that was like a complete confirmed assurance that, okay, I really want to fly and be the women in the uniform. So. Wow. This is amazing, Dr. Jill. And this is, it's very nice to see when a woman achieving her dream. So at such a tender age, you decided to, see yourself flying, taking this as a career. And it is very nice to hear as well that even your mom is a fashion designer, and that was one of the career choices you could have made. So did your mom or your parents ever tried to convince you to go for the business which they are already into, do fashion designing, go for that, and instead of not going for this pilot or thing, this studies ahead? How was it from a family support for you for the same? So my parents from day one have always supported my decision. And they know one thing for a fact, that if she decides something, she'll make sure that she reaches the top of where she has to be. So my parents have been a real support system for me, and they always supported me in what I wanted to do. And when I was unemployed in 2012, I did my fashion designing course, like you mentioned, and I was a support system to my family. I was working for 4 years as a fashion designer. I used to hold exhibitions, and people used to come to me and be like,
why are you called Captain Jill? And I'm like, because my parents are really proud that I'm a pilot. But unfortunately, due to circumstances, I don't have a job. And that's why I am here. And one day, one captain's a wife was also a part of the exhibition, and she's like, you should not give up, you should actually be where you're supposed to be. And she was a big motivation to me, and that's when I started getting back into my flying. And yeah, today I am proudly wearing this uniform. That's just amazing. So it is always said that we don't know if we want to achieve something. अगर हम कुछ सोचते हैं, शिद्दत से कुछ सोचते हैं, कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो कहीं से भी हमें जो है वो मोटिवेशन या कहे या हमारे जो ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जो एक रास्ता होता है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आपने जैसे बताया कि कोई और एक जरिया, एक रास्ता, एक मोटिवेशन बन के आपकी लाइफ में आ गया, जिन्होंने आपको इस तरह से मोटिवेट किया वापस आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए. सो दैट वाज एन अमेजिंग पार्ट. बट कैप्टन जिल, वन थिंग आई कीप ऑन थिंकिंग ऑलवेज इज, जब से मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा कि अ वुमेन पायलट या एक एक विमेन को मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में सरवाइव करना, घर से दूर रहना, अपनों से दूर रहना, और फिर अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में मोटिवेटेड रखते हो, और कैसे आप इसमें अपना एक जो जगह आपने ऑलरेडी बनाई है, अपना एक स्थान बनाया है, वो कैसे आप बना पाए इसमें? तो फ्लाइंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पूरी मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है. बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लोग बहुत बोलते हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि ये लोग लेवर्स पे जाते हैं, पता नहीं क्या होता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी सोच है. टुडे in India we have 40% of women pilots, and which I'm very proud to say that it does not hold a male dominant industry anymore. तो मेहनत लगती है, शिद्दत लगती है. अगर तुम कुछ चाहो कि तुम्हें पाना है तो वो तुम बिल्कुल पा सकते हो, फिर वो मेल डोमिनेंट हो या वुमेन डोमिनेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत तुमको अपना फल देती है हमेशा. Very rightly said, and it was motivating कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि male dominance, female dominance. So all the women out here who are listening to us, who are listening to Captain Jill today, we need to take this message कि आप जो चाहते हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपका पैशन है जिसमें, वो जरूर करने का करेज रखे, इतनी ब्रेवरी रखे. सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा. एंड मेल डोमिनेंस वर्ल्ड में हम रह रहे तो हैं, बट वही तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट भी तो बनता है. सो आई रियली एग्री टू कैप्टन जिल कि इट इज नॉट अबाउट डोमिनेंस, इट्स अबाउट सपोर्ट, लव एंड केयर वी गिव टू ईच अदर. And today we see wherever we are standing, there is definitely a support. There is definitely that love and care which we all get from the people around us, though chahe wo male ho, female ho. So yes, I agree on this part, Captain Jill, and it was very well said. Still, Captain Jill, जब आपने ज्वाइन किया होगा, और आप इतने यंग हो आज भी, और आपने जब ज्वाइन किया होगा तो आपके बहुत यंग एज में आपने ज्वाइन किया होगा, तो गर्ल्स को कैसे ट्रीट किया जाता था इस इंडस्ट्री में पहले और अभी? क्या कोई फर्क है? आपको कैसा लगता है, या आपने कौन से स्ट्रगल्स और चैलेंजेस देखे हैं यहाँ पे? स्ट्रगल और चैलेंजेस तो होते हैं, बट वो तुम कैसे उसको लेते हो एंड हाउ यू लर्न टू फाइट इज अ डिफरेंट स्टोरी. Like I said, now since things are becoming very equal, अभी इतनी women pilots है इंडस्ट्री में, तो the things have changed. जैसे पुराने टाइम पे ऐसे होता था in some companies where they used to not let women go flying in the night. फिर कुछ एयरलाइंस में ये बहुत पुरानी बातें हैं जो मैं कह रही हूँ. बंकर शेयरिंग होती थी, तो वो मतलब वो चाहते थे कि 2 मेल हो ताकि इट्स इजी फॉर देम टू अकोमोडेट, कॉस्ट सेविंग. बट अब वो अभी बिल्कुल नहीं रहा. अब सारी वुमेन्स को उतना ही इक्वल प्रिविलेज मिलता है जितना मेल्स को मिलता है. women also get all the rights, all the equalities when it comes to aviation per se in India. That's very nice to hear. So
नाइट्स फ्लाइट वगैरह में भी आप बहुत कंफर्टेबल हो कैप्टन जिल, और आप कंफर्टेबली ये वर्क कर सकते हो एज अ फीमेल. एंड दिस इज अ ग्रेट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर women who are planning to pursue their career in aviation but having some doubts के ये सब में कैसे हम आगे बढ़ेंगे. And having said that, Captain Jill, आप it is I've read somewhere about you that आपकी community में you were the first women pilot. Okay, so वो कैसा रहा सबका रिस्पॉन्स और सपोर्ट आपकी तरफ, और कम्युनिटी से आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो जब मैंने पायलट बनने का डिसाइड किया, मेरे पेरेंट्स को सबने आके बोला, अरे सो बेसिकली आई एम द ओनली चाइल्ड, तो लोग आके मेरे मॉम डैड को बोलते थे, अरे आपकी एक ही बेटी है, इसको कुछ हो जाएगा, ये इसकी मौत हो जाएगी, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा. तो मेरी डैड ने एक ही बात बोली थी, मेरी बेटी है, मुझे पता है उसको जो करना है वो वही करके रहेगी. मौत तो होनी है तो रोड पे भी हो सकती है, हवा में भी हो सकती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू नो व्हाट यू आर डेस्टाइन्ड फॉर इज गोइंग टू हैपन. So I really did face a lot of social pressure, क्योंकि मेरे मॉम डैड को सब आके बोलते थे, अरे एक ही बेटी है, पायलट मत बनाओ, उसको मत बनाओ. बट मेरे मॉम डैड मेरे हमेशा से पिलर रहे हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ये सोशल प्रेशर से बाहर निकलने के लिए. और फिर वही लोग जिन्होंने मुझे ये कहा था, उन्हीं लोगों ने मुझे स्टेज पे बुला के मेरा फेलिसिटेशन किया और बोला कि हमारी कम्युनिटी में तुम सबसे पहली लड़की पायलट हो एंड आज हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन करती हो. सो आई वाज लाइक ओके, सो दैट्स द प्राउड मोमेंट बिकॉज आई एक्चुअली शट एवरीबॉडीज माउथ. एंड उसके बाद अभी तक एज ऑफ नाउ इन माय कम्युनिटी देयर इज नो गर्ल पायलट, बट आई रियली विश एंड होप देयर आर मोर women who listen to me and my story is an inspiration to them and really want to see more women flying up the sky. Amazing. Superb sharing. So कैप्टन जील, आप मैं चाहती हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं जो देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो फ्यूचर में एविएशन इंडस्ट्री में अपने बच्चों को डालना चाहते हो, या कोई ऐसी गर्ल्स होगी जो अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हो. उनके लिए आप कुछ गाइडेंस दें, उनके लिए आप बताएं कि उनको किस तरीके से जाना चाहिए, विच कैन बी अ राइट वे टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री. क्या क्या कोर्सेज अवेलेबिलिटी हो सकती है और कैसे उनको अपना करियर जो है वो इस इंडस्ट्री में बनाना चाहिए. प्लीज गिव योर इनपुट्स एंड गाइडेंस ऑन द सेम. पायलट बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है मेडिकल, 10+2 फिजिक्स मैथ्स. 10+2 फिजिक्स मैथ्स होने के बाद मेडिकल होता है, क्लास 1 मेडिकल, जो इनिशियल मेडिकल नानावटी में होता है अगर बॉम्बे से है तो, या तो बहुत सारे सेंटर्स है जिसको dgca.nic.in पे देखा जा सकता है. दैट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वेबसाइट. उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. 10+2 फिजिक्स मैथ्स करने के बाद, मेडिकल्स क्लियर करने के बाद DGCA के पेपर्स होते हैं, रेगुलेशन, मीटरोलॉजी, नेविगेशन और टेक्निकल, स्पेसिफिक एंड जनरल. वो पेपर्स पास करने के बाद आपको 200 आवर्स फ्लाइंग करनी पड़ती है, जिसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. दैट इज गोइंग टू गिव यू अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस. वो इंडिया में भी होता है, अब्रॉड भी कर सकते हैं. इंडिया में देर आर flying schools which give you scholarship, and there are flying schools which are only for women, which actually give women scholarship. So उसकी भी जानकारी मिल सकती है. And flying करने के बाद, once you have a commercial pilot license, then you can start applying in the airlines, and that's how you can be where I am today. This is nice to know. Basically, this can help many of them to go through the right channel. And as you mentioned, the website as well, that's the right way to go on the site and see all the details, look into it, and then go ahead with it over there. So this was great. Okay, अगर आपको ऑप्शन या चॉइस दिया जाए आज भी, तो आप पायलट के बजाय क्या चूज करोगे, in case if you have to go for an option? So if I was given an option, I would continue being a fashion designer and be an entrepreneur.
Because I have been there, seen that, done that. But yes, I am very passionate about what I am. So I don't really have a second thought because this is where I wanted to be. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत जल्द कैप्टन बनने वाली हूँ आज से एक डेढ़ साल में वही चाहती हूँ कि सबके ब्लेसिंग्स मेरे पे रहे और मैं जल्दी से अपनी सेकंड हर्डल को क्रॉस कर लूँ. Wow, wow, that's amazing. So, Captain Jill, what would you like to say about since I've heard a lot that your mother has been a best motivator for you, I think, or that's what you said even in the discussions what we were doing. So, please tell us how did she motivated you, and who else played a motivational role in your life from your family, from your friends circle, or from your teachers, etc. How did all supported you to be here, and what would you do to inspire other women with your story? हाँ, आपसे इंस्पिरेशन लेके आज तक में कौन कहाँ आगे बढ़ा, ऐसी कोई स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज हमें बताइए. वी आर वेरी keen to know that part of your life. So my biggest motivation is my mother. At today's age, she just started a new brand called Bumpo Jumpo. She sleeps for 3-4 hours in the night. She's awake at 3 in the morning. When I go for flights or when I'm coming back from a flight, I'm like, why is everybody awake in the house? And I see my mom's doing some work related to her new, the venture. एंड उसकी जो एंथुजियाज्म है, वो जितनी मेहनत करती है, जितना लगन लगाती है अपने काम में, उसको देख के मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी मॉम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं. शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. शी इज द पिलर ऑफ माई फैमिली. She supported me when my father refused to let me go again for another type rating which was costing me 20 lakh rupees. She was like, no, she can do it and she will do it. तो मेरी मम्मी की वजह से मैं आज हूँ जहाँ पे भी हूँ. And yes, my friends have also played a very important role. उन्होंने मुझे कभी give up नहीं करने दिया. They always motivated me कि मत इतना जल्दी give up मत कर. मेरे दोस्त मुझे कॉल कर करके बोलते थे, अरे यहाँ पे वैकेंसी आई है, अप्लाई कर, यहाँ जॉब आई है, यहाँ अप्लाई कर. उन्होंने देखा था मेरे में कि मैं इस प्रोफेशन के लिए बनी हुई हूँ और मुझे इतना आसानी से इसको गिव अप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है. तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. मुझे अपनी फ्लाइट से आके बैठ के पढ़ाया है कि अरे यार तू अब तो ये एग्जाम दे खत्म कर ले, जस्ट गेट डन विद इट एंड गेट अ जॉब. वी रियली वांट टू सी यू फ्लाई. So yes, my friends, my family, my parents have been a very big support, mentally, financially. And yes, it is a very challenging job because number one, you really have a lot of things. Like बोलते हैं ना कि अगर एक डॉक्टर एक गलती करता है तो एक इंसान की मौत होती है. एक पायलट एक गलती करता है तो वो 100 से 500 लोगों की जान जा सकती है. So it's a very stressful job, a very high paid profession, but eventually डॉक्टर गलती करता है तो वो जमीन पे ही रहता है. पायलट गलती करता है तो it can be the last day of that person's life. So it is a very challenging job, and you really need to be on your toes all the time. You cannot be, like even for a split of a second, you cannot think of anything else when you are flying. So yeah, it is a challenging job. It's a very high risk job, but it's a very I'm not able to find the right word, but it's a very respectful profession. So you're very looked upon. Yes. Yeah, respectful and highly responsible job as well. Yes. You are responsible for yourself as well as responsible for other lives as well. Exactly. And the focus, the level of concentration, the level of focus you need is
You know, you cannot Immense. immense focus and concentration you need. You cannot think of yourself, your health, your and you know what your parents must be doing, what your friends must be doing. चलो आज यहाँ मन कर रहा है तो जाते हैं, ऐसा करेंगे, या घर पे जाने के बाद ये करेंगे वो करेंगे. ये सब एक पायलट नहीं सोच सकता है when he is on duty, he or she is on duty. So yes, I agree to you that and yeah, it needs lots of courage as well to do this job. Yes. So I really you know, appreciate and feel proud when I am talking to you that so much of courage you have to, you know, do this job. One more last question I would like to know personally is how do you emotionally feel when you are away from home? And you know, it is like एक सिपाही की जिंदगी और एक पायलट की जिंदगी सेम होती है. वो जब जाता है अपने घर परिवार को छोड़ के, यू नो, बहुत कम टाइम के लिए एक तो आना होता है, ज्यादा टाइम वो घर से दूर रहते हैं, और जब वो जाते हैं तब उनको ये नहीं पता होता कि अगली बार कब और कैसे आएंगे. यू नो, अभी तो टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो गई है, बट यस स्टिल वी नो दैट एक सिपाही और पायलट की जॉब जो होती है वो हाईली, यू नो, इमोशंस उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू नो इवन पेरेंट्स फील के मेरा घर का जो सदस्य या मेरा बच्चा है वो घर वापस जल्दी लौट जाए ठीक ठाक से. सो आपके इमोशंस कैसे रहे when you flight for the first time, and when you still continue doing this work or job, how does the emotion plays with you? So I remember that day when it was my first flight when I was being released as a first officer, and it was 31st of December, and I still remember the day. And my parents were with me. I was doing a Bangalore, Bombay sector. My parents came from Bombay to see me getting released. It's a very big day as a pilot when you're getting released to fly an airliner. So my parents were on board, and then we landed, they clapped, and when I made an announcement, my parents were telling, ye meri beti hai, ye meri beti hai. And I'm like, okay. So it is a it's a very emotional, draining industry. There is no doubt about it. हम जब travel करते हैं, हम see अभी technology आ गई है, so you have video calls, you can talk. अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं रियाद गई थी, तो वहां हमको नेटवर्क नहीं था, तो मैं 2 दिन अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाई. So जब मैं वापस आई, my mom is like, "Ari, where are you?" So that level of excitement will always be there, even if I'm not there for a day or two. Emotionally, हाँ, parents, family, friends को miss करते हैं. But since we don't do very long flights, we come back home quite often. So that missing part is not that much. तो हमको मिलने मिल जाता है. So yeah, but we do miss family and friends. Like there have been times when I have to attend a family function and I have a flight. So of course I will choose to go for my flight and skip the family function. So emotional up and down तो सारी industry में होता है. वो तो सब जगह you have to know your priorities and, you know, work your way out. Yeah, but when duty comes first, it comes first. Yes. So it was wonderful talking to you, Dr. Captain Jill, on this platform. And just last thing, I would like to ask you whether you would like to say or give any message to on this Women's Day to all the women out here, to all the girls out here who's listening to you, who will listen to you in future as well. Would you like to give any inspiring message? Yes, I would like to say that never give up. Patience is the virtue. If you really wish and really dream to fly, then sky is your limit. Home is where sky is. And my dream was to fly over the rainbow so high is the reason why I am here where I am. And I'm really proud that I have very, very, very supportive parents. My mom, who's been my strength, my pillar, who supported me all throughout and is proud of me walking out of the house, flying the plane in this uniform. So never give up should be your attitude. Very well said, Captain Jill. And we are also very proud of you. Thank you very much. Thank you. Thank you from the bottom of our heart for being here with us and inspiring us with your inspirational story, and all that you said would be really very, बहुत काम का होगा लोगों के लिए. फ्यूचर जनरेशन को काम आएंगी आपकी बातें.
So really, really very thankful to you for this day you are over here with us. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for having me. And I wish all the women a very happy International Women's Day. Wish you the same, Captain Jill. Over to Thank you. Rajesh. Thank you. Thank you very much. Avni, I must say I am a bit jealous because you got to moderate this session. I am so thoroughly impressed, short of words and more of feelings. But I would like to appreciate one fact, which is maybe trivial to others, but you are in your uniform. That says a lot about how much character that the whole thing has for you. You know, even I am short of words as to what exact word I want to use for you, but the uniform says it all. So all the very best for all the flights and the captain thing that you are expecting to get. May you get it soon. And Thank all the you. very best, because our lives are in your hands. So we better keep you happy. You're safe. All the very best, and thank you very much, Avni and Captain Jill, for being here and sparing Thank time. you. Thank you for having me. Thank you so much, Jill, for sharing a very, very inspiring journey. And let me tell you, Jill, so, we are live on YouTube and there are a lot of compliments for you. Those who are watching, they are, posting a lot of wishes for you. And certainly, you will achieve whatever you have in your dreams. And we wish you all the best. And thank you so much once again for, taking out time for this particular conference on a very short notice. Thank you so much, Jill, and you have really very inspiring journey. Thank you so much, and Avni, thank you so much Thank for you, moderating Doctor. this particular fireside chat. Thank you so much. Thank you, Dr. Praveen, for having me. Thank you. Thank you. Thank you. सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, विश्वास दें, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। I'm a resident and my husband is non-resident. So we were looking for a joint eligibility because we wanted a little bigger loan. So we tried doing with many of the banks, but still there was some issue. Then one of my close associates, he basically introduced me to Ruchi Agrawal from Loan Unit. And since Ruchi knows the industry very well and she has a very good relationship with all the banks, she started working on my assignments and she took all the documents, mine and my husband's investment return, salary slip, house documents and everything.
and she started processing on it. And within 15 days, we got the eligibility and we got the disbursement on the due date when builder was asking for it. So all the process went so smooth and we were so happy at the end of it that we got everything on time. Thank you so much, Ruchi. Hi, I'm Basudha Srivastava Narula, founder and COO of Employee Services. We are a young and bespoke technology company and we are automating the employee life cycle management system. I'm really happy to be part of vyapaarjagat, and I'm really happy to see that a lot of people are coming up and they are achieving their dreams to be part of this big ecosystem of entrepreneurship. It takes a lot of passion, it takes a lot of courage to leave their salaried job and start working for the dreams that you have and the passion that you have for. And it's a time for all of you to be recognized for the hard work, for the passion, and for the nights and the day that you have spent to achieve your dreams. And it's time really to be recognized around the world. Thank you so much for your participation and all the best to you. Hello everyone. Myself, Mrs. Arpita Doshi, innovator and founder of Nutrition Dynamic Foods LLP, located at Ahmedabad. Under brand NDF, we innovate and manufacture health beverage premixes for millennials, working professionals and senior citizens dwelling in urban topography, suffering with inflammatory non-communicable diseases like diabetes, cardiovascular, cancer and obesity. As a woman, I always dreamed about making my own name and fame. I always dreamed to be recognized by my capabilities. And that can only be accomplished when I dreamed of having a business. When I dreamed of having an enterprise, which is not just found and led by a woman, but is also innovated by a woman. In this journey of enterprise, many ups and downs are foreseen. Paths have never been smooth. Balancing work and life has always found difficulties. In spite of all such difficulties, under able leadership of Shri Narendra Bhai Modi, women's got a special recognition, for which we really thank him. Vyapaarjagat founder Mr. Praveen Parmar has not just only supported our PM's vision and mission, but by organizing FEMPRENEUR awards and conference event, he is truly making women's AATMA NIRBHAR. I would appeal to all of you, please join vyapaarjagat and let's help to spread the word about women enterprises. Thank you all. Hello everyone. Imagine how beautiful this world will look when every individual can trust themselves and sail through all the difficulties in life with decision making to problem solving, from self-discipline to perseverance, from reliability to dependability, with self-acceptance but without dependence. Imagine this picture looks more beautiful when this self-reliance is celebrated throughout with lots of enthusiasm. I, Tripti Gandhi, founder Ekagra Focused on Positive, congratulate vyapaarjagat for organizing FEMPRENEUR's Conference 22 to celebrate self-reliance, Atmanirbharta. I wish them all the very best. Thank you so much. तो आपने सब्सक्राइब किया व्यापारजगत टीवी? आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? अपनी कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने सारे व्यूज यू कैन पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन ट्विटर
और हैशटैग आपको तो पता ही है क्या करना है ना, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हमने बहुत सारे सेशंस देखे 2 दिन में, आज लास्ट दिन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। क्लाइमेट चेंज से लेके हमने एक पायलट को भी सुन लिया कि वो कैसे अपनी उड़ान भरती है, पहले कौन से प्रॉब्लम्स थे, अब वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है, एंड हाउ शी इज एंजॉयिंग बीइंग देयर, हाउ शी इज सो मोटिवेटेड बीइंग देयर। अब हम ये देखेंगे कि ये घर पे रहने वाले लेडीज जिन्होंने इतना सारा बिजनेस किया, कोविड को भी फाइट किया, वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, वो कौन से इश्यूज फेस करते हैं, और बहुत सारी चीजें। आई विल नॉट टेक एनी मोर टाइम टू टॉक अबाउट द सेशन, वी विल गो टू द सेशन. So I will introduce the moderator Monali ji, and then we can carry on. Monali is an educator since 22 years. Later started Elite Academy, which she ran for 9 years. She restarted it from home. She's a content writer working as a freelancer for 15 years now. Presently working on the seasoningpan.com, जो उनका blog है. Also a food writer for many brands. She is also on several educational assignments online as education content creator and also trans creator in vernacular languages, more so of novels. So there is lot of creative things to her personality. Over to you, Monali. All the best for the session. Thank you, Rajasi. Thank you for giving me this opportunity. 2 पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगी आज। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों को बांधकर दुनिया सारी, हर पल को रोशन करने वाली वो एक ही शक्ति है, वो है नारी। तो किसी भी समाज की उन्नति उसकी समाज की औरतों की उन्नति से है। बाबा अंबेडकर जी की 2 पंक्तियां हैं जो हमेशा बचपन से पढ़ी है और आज जाके वो चीज समझ में आती है। नमस्कार, मैं हूं मोनाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं आप सबको। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक विषय पर चर्चा करने के लिए। हम घर से क्या क्या काम करते हैं, कर सकते हैं। इनोवेशन एट होम, सारी चीजें घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम, so innovation also can begin at home. That is how we perceive ourselves as women. छोटी सी already राजसी ने मेरे बारे में काफी सारा बताया। We are very good friends since quite a good time now, and we have seen the ups and downs of COVID together, and we know how everybody we had stood with each other. किस तरीके से हमने हर चीजों को मैनेज किया, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी। That was more important. So हम बातें करते रहेंगे एक दूसरे के बारे में, but I think एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सबका। तो सबसे सीनियर मोस्ट हमारे पास जो है वो है बेला जी। बेला शाह जी, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू मैम। मैं अभी आपसे मिली थी 2 दिन पहले आपके काउंटर पे फिया फूड फेस्टिवल में, और मैंने खाया भी खूब सारा था। तो प्लीज आपको इंट्रोड्यूस कीजिए आपके ब्रांड के बारे में, आपके काम के बारे में प्लीज। So good afternoon everybody, and happy Women's Day to everybody. मेरा नाम बेला शाह है, and मेरे को हिंदी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है, तो you will have to pardon me for speaking and fumbling. Absolutely fine. Absolutely fine. Yeah. So I have a brand called बेलेसो करके एक मेरी मिठाई की शॉप है। मेरी शॉप अभी 1.5 साल पहले ही थी, और मेरी जर्नी घर से शुरू हुई थी। लाइक एनी कॉमन वुमेन, आई स्टार्टेड वेरी स्मॉल। 15 साल पहले मैंने खाली दिवाली में मिठाइयों बेचने का काम किया, जस्ट काजू कतली, एंड द फर्स्ट ऑर्डर 40 किलो आया था, तो मैं बहुत खुश थी। वो भी मेरे घर से ही आया था, मेरे ब्रदर ने मेरे को सपोर्ट करने के लिए दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने चॉकलेट सीखी, और चॉकलेट्स आई वाज पहले ही साल में मेरे को एक बड़ी फार्मा कंपनी में से मेरे को चॉकलेट का ऑर्डर आया 12,000 टिन का। आई वाज सो इलेटेड बिकॉज उतना भी ऑर्डर हमको कैसे करने का, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू फॉर्मुलेट एंड हाउ टू
finished, we were at a big quandary. Gradually, my journey began, and I started evolving, and I made a lot of different sweets, and now I have a sweet shop at CG Road. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's a very inspiring journey. We are learning from you. Yeah. We will come again to you later. Let's go to Mrs. Jalpa Mistry. Can you please introduce yourself, ma'am? Hello, everyone. Happy Women's Day to all lovely ladies. My name is Jalpa Mistry. I'm a content creator and a food blogger. I'm a founder and a host of a YouTube channel, Jalpa's Kitchen. Jalpa's Kitchen is all about simple, easy, and healthy homemade food. Jalpa's Kitchen is also active on Facebook and Instagram. By education, I'm MSc Medical Microbiologist and work with very well-known corporate lab for 5 years. After KIT, it is not possible for me to go out and work with corporate. Then I have started working on my passion and followed my dreams. Before started my YouTube channel, I was associated with one Gujarati website and have posted more than 120 recipes and food articles over there. My YouTube channel Jalpa's Kitchen is having more than 150,000 followers. I have received a silver play button from YouTube. Last year, I have presented many recipes on popular Gujarati TV show named Rasoi Show at Colors Gujarati channel. This is all about me. Thank you. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you. Next I would love to introduce Meghna Oza ji, who's a very good friend of mine also. Please, Meghna ji. Please unmute yourself. Yes. हेलो, सबको प्यार भरा नमस्कार. हैप्पी वुमेन्स डे. मैं मेघना ओझा, मैं डाइटिशियन हूँ और मैं आई मोटिवेट पीपल टू लिव हेल्दी लाइफस्टाइल बाय सर्विंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान. मेरे को आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग, सो आई लव टू राइट health topics and create awareness amongst the people. स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखना है, खुश रहो स्वस्थ रहो is my motto. I spread smile, I laugh a lot and I love myself. थैंक यू मैम. जस्ट टू ऐड समथिंग, मैम ने अपने बारे में एक चीज नहीं बताई जो हम सब बहुत गर्व से उनके बारे में कहते हैं, और वो हमारी ब्यूटी क्वीन है, हमारे पूरे ग्रुप की, हमारे पूरे शहर की ब्यूटी क्वीन है. उन्होंने 2021 में स्टार इंडिया, फॉरएवर स्टार इंडिया टॉप 3 में किया था, एंड वी आर ऑलवेज so proud of her all the time. Yes, I love fashion modeling. Can I speak something about that journey? We will come back to you, ma'am. We will come back to you. Yeah, ma'am. Okay. Yeah. Okay. Last but not the least, 7 समंदर पार हमसे कोई मिलने आया है, and she is none other than Dr. Ruby Bakshi. Welcome, ma'am. Thank you so much, Monali ji, for a wonderful introduction. 7 समंदर पार सुन के हम emotional हो गए. Namaskar and happy International Women's Day to all the women watching us, and also men, because men also need to celebrate women. So आज का दिन बहुत I would say शुभ है in a way कि I am meeting my global sisters जो कि 7 समुंदर पार हैं, and at the same time hearing such beautiful stories कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं. यहाँ बैठे मुझे गूज़बम्स कई बार हो रहे थे. कोई खाना घर पे बना रहा है, कोई ब्यूटी क्वीन है, कोई अपनी मिठाई की शॉप खोल रहा है. जो चीज़ें मुझे यहाँ बहुत मिस होती हैं वो सब चीज़ें आप बोल रहे थे, तो उससे I was feeling the connection. So मैं यहाँ पर आई एम एजुकेशनिस्ट, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को. बट कोविड के दौरान मेरी जर्नी शुरू हुई एज द एड्यूप्रेन्योर. मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपना बिजनेस करूंगी, क्योंकि मैं पूरे टाइम मैंने खाली जॉब की है, खाली यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी एंड बच्चे, वो मेरा घर था, वो मेरा जीवन था. But during COVID, it gave a lot of
opportunities and avenues to me as a woman, as a mom, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा काम करती थी कि घर पे ही रहती थी और घर के थ्रू लाइक द मोमेंट मेरे लेक्चर्स खत्म होते थे मैं घर आ जाती थी. बट इस दौरान मैंने अपनी एड्यूप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट की, विच इज हैविंग माय ओन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म as well as giving lectures and training programs from the house. जो कभी नहीं सोचा था, it was just happened during COVID. जैसे कहते हैं ना, जब आपके पूरे जगह पे अंधकार छाया हो, उस दौरान मुझे एक लाइट दिखी टनल के उस पार, जैसे कहते हैं. एंड इट वाज कंप्लीटली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ड्यूरिंग द टाइम जब सब लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, हम एक दूसरे के सहारा बनने की कोशिश कर रहे थे, सिटिंग इन होम, जस्ट एज अभी हम सब सामने बैठे हुए हैं जूम पे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न बिट मोर. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम एंड वेलकम. अभी आप हमारे देश में हैं, ऐसा ही सोच के हमसे बात कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल. जी. सो सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है. अब मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ जो पर्दे के पीछे वाला सच होता है. आज एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हम हार्ट टू हार्ट, 1-to-1 ओपन बात कर रहे हैं. ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि हम औरतों को ये लगता है कि जब तक हम ऑफिस नहीं जा रहे, जब तक हमको चेक नहीं आता सैलरी वाला, या अकाउंट में खुद के पैसे नहीं होते, तब तक हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती. सो आई वुड लाइक टू से दीज ऑल फैक्ट्स आर रॉन्ग. इट्स नथिंग टू डू विद दैट. इवन मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है काफी टाइम, बट life takes you to a different phase. You go through बहुत सारे अलग अलग उतार चढ़ाव से हम सबको जाना पड़ता है, सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं. पॉइंट ये है कि हम उस चीज से कैसे बाहर निकलते हैं या फिर उस चीज का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, तो सॉर्टेड है हम, है ना. तो everybody has the same story, like with children, with kids, with a nuclear family, it becomes really difficult to work for in a full time job. So the same thing happened with me, पर मेरे साथ एक added जो duty थी, वो थी मेरी mother की. After I lost my father, my mom came into depression, and after some time we came to know that she was a patient of Alzheimer's, and she needed 24/7 somebody to be around her. And just to tell you that she was a principal. So पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया जहां उन्हें हमारी जरूरत पड़ती. So that is where I decided to be home, take care of my child, take care of my mom, and take care of my career as well. So this is how घर से काम करना शुरू किया. काफी सालों से, उस बात को भी आज 15 साल हो गए हैं कि मैं हर चीज घर से कर रही हूँ. एवरीथिंग, बी इट माय एजुकेशन, एकेडमिक प्रोग्राम्स दैट आई एम डूइंग, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. काफी लोगों को शर्म आती है कि ट्यूशन क्लासेस बोलने में शर्म आती है. मैं बच्चों को घर में पढ़ाती हूँ, शर्म आती है. क्यों आती है मुझे नहीं पता. मुझे तो बहुत गर्व होता है कि आई एम यूजिंग माय एजुकेशन to build the next gen. Mothers do that, right? So I'm doing it for others also, and I'm very proud of it. This is how my journey began. हाँ, हम आगे और भी बातें करेंगे और भी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. एक चीज जो काफी लोगों को जो सुन रहे होंगे, हम तो कर चुके हैं इसलिए हमें पता है where the challenges and barriers, but सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हर औरत को इस चीज को डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो है फैमिली का सपोर्ट. घर से बाहर निकले नहीं निकले और घर पे रह के भी काम करना इज द मोर चैलेंजिंग थिंग. ऑफिस जाना बहुत आसान है. आप घर से निकल गए, वो 8 घंटे आपके लिए ऑफिस में है, आपको पता है घर से कोई आपसे कोई उम्मीद नहीं करेगा. लेकिन जब आप घर से काम कर रहे हो, you're working at home, everybody is looking forward to you. So I want to know how challenging it is from working from home, and how important, कितना important है
कि फैमिली हमें कितना सपोर्ट करे, या हमारे पार्टनर्स, हमारे बच्चे हमें कितना सपोर्ट करे, या आपकी जर्नी में वो कैसा रहा। आई स्टार्ट विद बेला जी प्लीज। आप सबसे सीनियर मोस्ट हो, आप हमें प्लीज बताइए। So मैं आपका सुन रही थी तो I could relate to a lot of things what you were saying. Okay. So like everybody has a journey. So for me, life started. I mean, my husband's factory shut down suddenly, and we had a huge financial crisis. That time I was 42, 45. I don't even remember what I was. I didn't know what to do. I went for the different jobs. Couldn't get a job because at that age nobody gives. I was very creative and passionate about cooking. Or my friend said, "Why don't you start doing something from home?" That time I started selling falafel and lasagna and nachos, and nobody knew about that. So like I was in Ahmedabad, मेरे nachos shops में से वापस आ रहे थे because nobody knew what nachos was. You mentioned, and then I started. I didn't have anything else to do, so I started doing mithais for Diwali because we had to make two ends meet, and my children were very young. So there was a lot of support from my children, though they were very, very young. They used to come back they were very pampered because we had everything in life. And then suddenly there was nothing in life. So they had to fend from themselves. We used to make mithais. They used to help us wrap even at 4 o'clock at night. My husband was helping me in packaging. My daughter, slowly things evolved. Now my daughter is a ceramic designer. She helps me in the creative part. My husband helps in the packaging part, and my son, who is a commerce graduate, is helping me in the marketing and the listing part. So life has evolved. I have grown, but it was a long, tough journey. But I did it, and I'm happy for what I've done. Wonderful, ma'am. Wonderful. जलपा जी, आप बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ फैमिली सपोर्ट। मोनाली जी, जैसे आपने कहा कि आफ्टर किड हर एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर जाके काम करना, एंड स्पेशली जब आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खुद पे आ जाता है, एंड नया नया मदर हो तो फिर आपको पता ही है कि पूरा दिन उसमें ही चला जाता है। बट मेरे बेटे का जब जन्म हुआ तब उसके बाद मुझे 1-2 साल तो मैंने वो मदरहुड बहुत एंजॉय करा। देन आई वाज थिंकिंग कि ये तो अच्छा ही है कि बेटे घर पे रहती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती हूँ, बट खुद के लिए भी कुछ करना है। एंड मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट थी तो मेरे बहुत सारे ऐसे हॉबीज नहीं थे जो मुझे टाइम मिलता था कि मैं कुछ करूं। बट यस, फिर कुकिंग इज माय पैशन फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड माय मॉम इज एक्सीलेंट इन कुकिंग। तो शायद ये हेरिडिटी है कि मुझे कुकिंग सीखे बिना ही ऐसे देख देख के आ गया था, एंड माय फूड वाज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। धीरे धीरे मैंने वो चालू करा, एंड माय फैमिली इज सो मच सपोर्टेड। आई एम लकी इन दैट पोर्शन, एंड सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेरा बेटा है जो 11 साल का है, एंड ही इज अ बिग सपोर्टर टू मी। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, जो भी करो आप, एंड जब आपका जो हॉबी है वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो सोने पे सुहागा ही हो जाता है, एंड सच में वो जर्नी खूब बहुत ज्यादा अपने हम लोग एंजॉय करने लगते हैं। तो फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन every business or every work actually. Absolutely ma'am, absolutely. मेघा जी, आपकी क्या राय है, बताइए। Yes, I'm blessed with 2 children, राम लखन। जो मैंने जब ये शुरुआत की मेरे प्रोफेशनल कैरियर की, it's been 25 years of my marriage. लास्ट 10 साल से मैं बीए में डाइटिशियन के कैरियर में हूँ। सो मेरे बच्चों को मैंने घर पे how to operate machine, how to take vegetables from market, and how to serve when guests come, और जब बीमार हो तो क्या करना, थोड़ा कुछ घर में करना चाहिए, वो सब मैंने थोड़ा ट्रेनिंग दिया है, and they are doing very well, and they are helping me in all my endeavors. They are my strength, so I'm happy for that. And yes, husband तो support करते ही है, and yes, thanks for this wonderful journey. Thank you, very good, very nice. What about you, Ruby ma'am?
वेल मैं क्योंकि इतनी दूर आ रही थी घर से और मैं कभी अपनी पढ़ाई के लिए भी पेरेंट्स से दूर नहीं हुई थी, सो फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर रह के कोई काम नहीं किया था, मैंने कभी खाना भी नहीं बनाया था। और यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे सब कुछ खुद करना था, मैं घर की नौकरानी भी थी, धोबी भी बन गई, गार्डनर भी बन गई, सब कुछ खुद करना था। सो इट वाज रियली अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योंकि मैं घर की बड़ी लड़की थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ मम्मा यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हर चीज करना, सो दे विल फील बैड, बिकॉज हमारी अरेंज मैरिज थी। सो दे वुड ऑलवेज फील हमने अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया, इतना दूर भेज दिया, बेचारी सब कुछ खुद कर रही है। सो इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। माई हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट इन द बिगिनिंग, क्योंकि हम लोग दोनों अपने माँ बाप से दूर थे, तो दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे। एंड इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पे काफ़ी सोशल वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बिजी रहने का था। एंड यहाँ पर क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज थी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे उनका समझूं या अपनी समझाऊं। मैं उस असमंजस में थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। बट थिंग्स केप्ट ऑन स्ट्रोलिंग वेल, क्योंकि जब मैं लखनऊ में थी, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, जब मैं लखनऊ में थी तो वहां पर आई बिकेम अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज एट अ वेरी यंग एज। मैंने अपना MBA खत्म ही किया था और मेरी वहां पर जॉब लग गई थी। इट वॉज अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट वाला था। सब लोग शादी में बोल रहे थे, अरे अपनी प्रिंसिपल की लगी लगाई नौकरी छोड़ के इतनी दूर जा रही है, बेचारी को फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। आई वॉज लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स बट आई टुक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि नई चीज कुछ मेरा इंतजार कर रही थी, तो मैंने ज्वाइन किया। शादी के बाद पति का सपोर्ट मिला, जैसा जल्पा जी ने बोला, जैसा मोनाली जी ने बोला, बच्चे जब आ जाते हैं तो सब कुछ टेक्स अ बैक सीट। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा नौकरी तो होगी नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं फॉरेन कंट्री में, तो चलो पढ़ लेती हूँ। तो आई वॉन्टेड टू डू अ डॉक्टरेट, कि आगे चल के PhD काम आएगी लेक्चरशिप के लिए। जैसे ही मैंने एक डॉक्टरेट के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पता लगा भाई नन्ना परिवार आने वाला, नन्ना बच्चा आने वाला है घर पे। सो ऑब्वियसली आई हैड टू टेक अ बैक सीट, क्योंकि मेरे जो सुपरवाइजर उस टाइम थे उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल शो ऑन योर प्रोफाइल दैट यू हैव बीन वर्किंग, और ऑन योर पेज, ऑन योर डॉक्यूमेंट, दैट आपको 5 साल लग गए या 6 साल लग गए डॉक्टरेट करने में। सो आई टुक अ बैक सीट। ऐसे चलो कोई नहीं, बच्चा इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ाई होती रहेगी। So the kid came, another kid came, and my doctorate never happened. So, but I started working. That was important. I started working. मैंने अपनी lecturership यहाँ पर शुरू की। But क्योंकि हम लोग अपने देश से इतना दूर थे, मैं चाहती थी मेरे बच्चों में हमारे cultural values आए। I did not want कि यहाँ पर उनको बेबी सिटर पाल रही है तो वो बेबी सिटर की बात सुनेंगे, उनकी लैंग्वेज सुनेंगे, उनको देख के बड़े होंगे। तो ये मेरा और मेरे पति का एक डिसीजन था कि आइदर आई टेक अ बैक सीट और ही टेक्स अ बैक सीट, कि एक पर्सन को बच्चों के साथ घर पे रहना है। एंड हम दोनों क्वालिफाइड थे, बल्कि मैं उस वक्त ज्यादा क्वालिफाइड थी, बिकॉज आई हैड डन माय मास्टर्स एंड ही हैड डन हिज इंजीनियरिंग इन ही वाज अ बैचलर इन इंजीनियरिंग। सो आई सेड इट्स ओके, आई विल टेक अ बैक सीट, बिकॉज बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। एक माँ ही है जो बच्चों को कल्चरल वैल्यूज, अपनी लैंग्वेज, अपना रिचुअल समझा सकती है। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई टुक दैट एज अ चैलेंज और मैंने करना शुरू किया। बट लकीली उस दौरान द डायरेक्टर वेयर आई ज्वाइंड एज अ लेक्चरर वाज सो हैप्पी विद माय वर्क। उन्होंने देखा कि मैंने काफी चेंजेस कॉलेज में किए, उन्होंने मुझे एकेडमिक डीन बना दिया। I was under 30, not even a doctorate, and it was really a big thing on my CV to become a dean of a all-girls college. And throughout that journey, for last 15 years, मैंने कभी भी full time काम नहीं किया है। मैं ये काफी गर्व से कहती हूँ कि मैंने कभी full time काम नहीं किया। And in this profession, in this male-dominated profession, मैं कहूँगी, जब आप higher education में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, ज़्यादा मर्द ही होते हैं, औरतें कम होती हैं। बट उस दौरान आई लर्न दैट फैमिली इज अ बिग थिंग। मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं जब मैं लेक्चर्स के लिए दूसरी कंट्री में जाती हूँ। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई गेट इन्वाइटेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। मैं इंडिया भी आई हूँ, मैं अमेरिका गई हूँ, मैं दुबई गई हूँ, मैं बहरीन, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर। बट हम ऐसा हमेशा करते, जब भी मुझे ऐसी जगहों के मौके आते हैं, आई रियली वॉन्ट टू शेयर दैट आई ट्रैवल विद माई फैमिली। मैं हमेशा देखती हूँ बच्चों की छुट्टियां कब है। जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, देन आई ऑर्गेनाइज विद माय हस्बैंड दैट वी गो एज अ फैमिली। जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ, ये लोग घूम रहे होते हैं, और बाद में शाम को हम सब साथ में होते हैं। एंड जल्पा जी की तरह मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपनी मोटिवेशनल टॉक शेयर करती हूँ।
और विमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ. एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज टू नो दैट दिस वॉज बिकॉज ऑफ माई सन दिस चैनल वॉज बॉर्न. क्योंकि उसने कहा मम्मा आप हर जगह बोलती रहती हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो वन विल नो वेयर यू स्पोक. So it was because of my son, who at that time was just 9 years old. He helped me operate this channel, and my daughter, she helped me taking pictures and videos. So it's like a puri family ka ek team hai. I don't have any professional team who does that, but my children and my husband who take pictures and videos at these locations, apart from what we get from the professional trainers. And I'm enjoying my journey as a trainer, as a speaker, as a professor, as well as an author. एंड अगर आप मेरी बुक देखोगे जिसमें मैंने कोविड के दौरान लिखी थी, उसका भी जो कवर क्रेडिट है इज ऑन माय किड्स. दोनों बच्चों ने उस जो कवर है वो डिजाइन किया. सो आई डिडंट हैव टू पे एनी मनी टू एनी पब्लिशर, इट वाज जस्ट माय किड्स. सो दैट्स व्हाई आई से फैमिली का योगदान बहुत बहुत जरूरी है. आज अगर हम अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, यू नो डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई अपने कंप्यूटर पे फोन पे रहता है जब देखो तब, अगर आज हम अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उनके पास समय व्यतीत कर रहे हैं, कल को यही बच्चे हमारा support banenge, that they are going to be our support system. And I think as a woman staying away from Janmabhoomi India, I think I have learned a stronger way कि जिसको एक चाय का कप बनाना नहीं आता था, आज पूरे घर को संभाल रही है और अपने बच्चों को भी हिंदी सिखाई है और कश्मीरी सिखाई है, बिकॉज इट्स अ कश्मीरी इज अवर मदर टंग. सो हमने उनको कश्मीरी भी सिखाई है और हिंदी पहले सिखाई, क्योंकि हर जब भी वो इंडिया जाते थे सब लोग कहते थे हेलो बेबी, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, एंड कहते थे मम्मा हम इंडिया में यहाँ लोग हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, हर कोई अंग्रेजी में क्यों बात कर रहा है. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मेरे बच्चे इतनी शुद्ध हिंदी में इंडिया में बात करते हैं, लगता नहीं कि वो यहाँ के पले बड़े हैं. एंड एट द सेम टाइम जब वो फ्रेंच और इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स कभी कभी उनको बुलाया जाता है स्टेज पे बोलने के लिए कॉम्पिटिशन्स में, तो जब आप उनको सुनेंगे आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये इंडियन बोल रहा है, वो यहीं के बच्चों की तरह है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फैमिली हम एक दूसरे से लर्न करें, बच्चों को सिखाएं और उनसे सीखें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely fine, great, and hats off to you ma'am, hats off to you. This is a learning, and ये जो हमारा आज का टॉपिक है इनोवेशन फ्रॉम होम, ये आपने बिल्कुल आपके वर्ड्स में बहुत क्लियरली बता दिया कि we women cannot be all time a full time worker going outside and working, but जब भी हमने sabbatical लिया किसी भी वजह से, या फिर हमने शुरू किया घर से काम करना, डिसाइड किया for whatever reasons, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी लर्निंग, जो भी हमने इतने सालों में सीखा है और जो हम बच्चों को दे रहे हैं, every mother is an innovator. Because every mother is creating the next generation. So with our cultural values, with our education, हम अपने बच्चों को next level में ले जा सकते हैं. Talking about myself, मेरे जितने भी बच्चे हैं, students आते हैं, जो मेरे साथ शायद 8-8, 10-10 साल से एसोसिएटेड हैं, अब वो मुझे माँ करके बुलाते हैं क्योंकि ना आदत हो गई है, कई बार कुछ बोलने जाते हैं मैम और निकल जाता है मम्मा. I was like, fine, it's fine, काम बोलो क्या जानना है वो बोलो, what is your question? So you know that becomes very 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 flowing. So what I want to know from people like Jalpa ma'am and Bela ma'am, आप लोगों ने जो products आपके लिए start किए, वो आपने 100% घर पे ही सब कुछ किया. And even I am into it partially. I'll just tell you about myself. During this COVID, my husband lost his job, and he was from the hotel industry, and he was working with a very good brand. But you know, things were so bad at that time that नौकरी रहना बड़ी बात थी. तो 1.5 साल नौकरी नहीं थी उनके पास. इनिशियली लगा कि एवरीथिंग इज फाइन, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट जैसे 6 महीने 8 महीने गए तब लगने लगा कि नो, थिंग्स आर नॉट फॉलिंग इन प्लेस, एंड वी वर गेटिंग, यू नो, हमारे जितने भी रेवेन्यू था, लिक्विड कैश था, वो धीरे धीरे हमें लग रहा था कि अब वो क्रंच आ रहा है, दिख रहा है, तो कुछ करना था. एंड आई डिडंट नो, आई कुड सी माय हस्बैंड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, men go into depression, it is by default.
वो घर पे बैठ के नहीं रह सकते, कभी जिंदगी में उन्होंने शायद ये किया नहीं, कोविड ने ऐसा करवाया उनसे। सो आई जस्ट टोल्ड हिम, इतने साल काम किया ना, आराम करो थोड़ा टाइम, हम कुछ करते हैं, साथ में मिलके कुछ करते हैं। बट क्या करना था वो नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आया था, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर एवरीबडी, एंड कंटेंट राइटिंग का काम चल रहा था, बट दैट वाज आल्सो नॉट एट दैट पीक, but we needed to do something, and that is where I started doing food service, खाना बना के बेचना शुरू किया। काफी लोगों ने मजाक उड़ाया, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया, फिर धीरे धीरे यही चीज मेरा मेरा है ना, पैशन तो था ही पहले से, लेकिन दैट बिकेम माय आइडेंटिटी इन विद इन फ्यू मंथ्स। Thanks to all the mentors who have been with me always. I would like to thank on this platform the Food Entrepreneur Alliances and Multitasking Mommies who had been my pillars, and जिन्होंने मुझे आज एक नई पहचान दी है। मेरे ब्रांड का नाम है द सीजनिंग पैन, एंड मेरा एक ब्लॉग है theseasoningpan.com, जिसमें मैं रेसिपीज, रस्टिक रेसिपीज, द ग्रैनी दादी वाले रेसिपीज इंडिया के, उसमें वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक पॉडकास्ट भी है सेम नेम से, जो स्पॉटिफाई पे है, द सीजनिंग पैन पे, आप सुन सकते हो। अब शुरुआती है, 2-3 एपिसोड्स ही हुए हैं, बट आई स्टार्टेड इट, आई वांट टू गो अ लॉन्ग वे विद इट, एंड आई वांट एवरीबॉडीज सपोर्ट। सो मैं यही कहना चाहती हूँ उन लेडीज को जो हमें आज सुन रहे हैं, कि भैया घर से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपके किचन को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके सिलाई को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके एजुकेशन को यूज करके आप घर पे पढ़ा सकते हो, यू नेम इट, एंड आई कैन टेल यू हाउ यू कैन डू इट। आई बेट ऑन इट। तो बेला जी, आप मुझे बताइए कि घर से जब हम काम कर रहे हैं फूड रिलेटेड, तो किन चीजों का ध्यान आज की तारीख में आपको लगता है जो लेडीज करना चाहती हैं, उनको एक ब्रीफ में, कि क्या चीजों का ध्यान उनको रखना चाहिए? घर से जब काम करते हैं तो one thing is very necessary, that your product has to stand out. If you are doing the same thing, like अभी मैं nachos करूंगी तो मेरे nachos there are 20 people, I mean 100 people who is doing nachos. Lockdown में everybody has become a baker, everybody has become a halwai. So if you want to stand out, आपका कुछ अलग होना चाहिए, आपका कुछ यूनिक होना चाहिए, क्वालिटी तो सबसे बेहतर होनी चाहिए। क्वालिटी आप नहीं दोगे तो आपका कुछ नहीं दिखेगा। सो मैं शुरू से जब भी से मैं काम करती हूँ, मेरी क्वालिटी स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट दी नहीं है। आप खाओगे तो आप मेरा नाम लोगे, इट इज ओनली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ, यस। आई हैव come to this level. Like just now, I'm not boasting, but I'm very happy for myself. I've been nominated as one of the Times Food Award for the best confectionery and the best sweets in Ahmedabad. And I'm ranking in the top 5 sweet shops in Ahmedabad. So I have really come a very, very long way. It has been a very, very big struggle, but I'm so happy. So Monali, you don't have to feel disheartened, because everybody has a journey. बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत जर्नी होती है, और you can achieve it. But my tagline is purity personified, and I've stuck to it. कुछ भी दो, वो एकदम प्योर दो, कुछ अच्छा दो, कुछ इनोवेटिव दो। तो मैंने एवरी ईयर कुछ इनोवेटिव किया है। I have done sugar-free sweets, I've done fusion sweets. जो मार्केट में नहीं मिला है वो मैंने किया है। Like I have sweets with cranberry, I have sweets with blueberry, I have sweets with rose petal, I have sweets with apricots. You go to any place in the shop, you won't have it. They are all baked. They have a good shelf life. It goes to America, USA, everywhere. But you have to stand out. That is the bottom line. And you have to, even at this age, I go to classes and I learn. So learning is a never-ending process, because I had to unlearn, relearn, and go on learning. I mean, I have to learn till I die. Yes, ma'am. Yes, absolutely. I agree with you. I had shooted this question in this discussion as well, that अपग्रेड करना अपने आप को आज की तारीख में, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कितना जरूरी है।
तो अगर मैं तो ये कहूंगी कि ये पैंडेमिक में अगर लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया। मेरा एक भाई है, वो बोलता है कि अगर एक काला आदमी पैंडेमिक में गोरा नहीं हो पाया तो वो कभी भी गोरा नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक यूजिंग द टाइम प्रॉपरली। So, just Ruby ma'am, I would like to know that how important it is to upgrade yourself and how can you upgrade your skills being at home to do something which you can do from home, be it anything, like you are into many versatile things. So please just can you? That's a very very good question, Monali. I was laughing, मेरी हंसी खत्म भी नहीं हुई थी कि ये काला आदमी गोरा ना हुआ तो क्या किया। It's true. पेंडेमिक के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि आप घर पर थे, आप बाहर नहीं जा रहे थे, आपको बाहर जाने में ट्रैफिक में नहीं स्टक थे, आप बहुत सारी पार्किंग में नहीं स्टक थे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर रहे थे जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो उस दौरान आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी, लाइक लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वेर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज। जैसे बायजू ने काफी फ्री कोर्सेज ऑफर किए, कोर्सेरा ने काफी कोर्सेज ऑफर किए, इवन आई मस्ट हैव गिवन अराउंड 500 प्लस, आई कांट काउंट, बट मैंने 500 ट्रेनिंग कोर्सेज दिए खुद on different platforms, which I felt was a necessity because there were a lot of, मेरे खुद के parents were at home, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग घर पर थे जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, helpless feel कर रहे थे। At least young people were doing something, they were stuck on their gadgets, they were doing something, TV देख रहे थे, आदमी औरत time spend कर रहे थे, lot of marriages became like intact, क्योंकि पहले हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट इस दौरान क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, दे वर लॉक्ड इन द रूम, सो दे हैड टू गिव टाइम टू ईच अदर। सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग डजंट जस्ट मीन, और इवॉल्विंग जस्ट डजंट मीन टू enroll for a course. Training also means how we train our brains, how we train ourselves and our mind. And I think it's a learning experience. जैसे बेला जी ने बहुत अच्छा बोला, शी इज अ लाइफ लर्नर। अगर आप अपने को स्टूडेंट समझते हो तो आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हो। During the pandemic, even I went for a course which I never thought would be handy. I did it from a university कि कैसे अपने classes को interesting बताऊं online. उस दौरान मुझे पता नहीं था। I had enrolled for that course in 2019. September में मैंने enroll किया था, how you can use technology to make your classes interesting. बट उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि हम उसी चीज को करते रहेंगे। एंड दैट ट्रेनिंग एंड दैट सिचुएशन एंड दोज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग कोविड गेव राइज टू माय बुक। मैंने बुक लिख डाली क्योंकि जो चीजें वर वर्किंग इन माय फेवर, आई रोट इट डाउन एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग विद माय फ्रेंड्स, ऐसा करो वैसा करो। एंड इफ यू सी, ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट वेरीफाइड एज द काहूट एजुकेटर और काहूट ट्रेनर, which is a fun way of teaching children, which is a fun way of teaching adults as well as people working in the industry. So कभी नहीं सोचा था कि आप स्टोरी टेलिंग से या ऐसे खेलते खेलते लोगों को सिखाओगे, राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज सोचो, चाहे वो लाइक जैसे उन्होंने बोला कि इस दौरान काफी लोग हलवाई बन गए, काफी लोग मिठाई वाले बन गए। इट्स ट्रू, कोई भी प्रोफेशन कम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि आप अपने को ब्रेन को ट्रेन करें कि हाउ टू टेक दैट करियर, हाउ टू टेक दैट प्रोफेशन। एंड आई वाज विद मोनाली व्हेन शी वाज सेइंग मैंने घर में ट्यूशन देने शुरू कर दिए। In the beginning, I also started giving lessons in dancing to underprivileged kids. This is, I'm talking in 2002, 2003, because उस दौरान यहाँ पर बहुत यहाँ Switzerland is very expensive, cost of living is very expensive. So I started giving training क्योंकि मेरे दिमाग में था मैं इंडिया से तो दूर हूँ बट इंडिया मेरे दिल में है। So जो भी सिचुएशन या जो भी कंडीशन मुझे दिखती थी कि मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करूं या दिखाऊं अपने कल्चर के बारे में, I kept on doing. And during this pandemic, as Monali just asked this question, is whether you update your skills, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपडेट करना है। जैसे अगर कोई टीचर मान के बैठ जाए मैं तो टीचर हूँ, उम्र भर टीचर ही रहूंगी, तो नहीं चलेगा। उसको अपनी टीचिंग में कुछ तो नोवेल्टी लानी है कि बच्चे इंटरेस्ट पे करें, बच्चे उसको सुने। वैसे ही अगर आप मिठाई बेचते हैं या कोई भी काम करते हैं, जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे कि इसका नया वे क्या है, इसका फास्टर वे क्या है, इसका स्मार्ट वे क्या है। वी आर हैविंग ऑल स्मार्ट अप्लायंसेस बट वी हैव टू एक्ट स्मार्टली। एंड ये स्मार्टनेस तभी आएगी जब आप अपने
ट्रेन द ब्रेन करे, यू नो, नॉट जस्ट अपनी लाइक औरतें अगर खाली लिपस्टिक पाउडर लगा के समझे कि हाँ हम टनाटन हो गए, तो वो नहीं होता है आजकल. आजकल आपको तन मन से भी टनाटन होना पड़ेगा, एंड इट इज ओनली पॉसिबल टू consistently keep on training yourself by, you know, don't think कि मैं इतनी ऊंची पहुंच गई हूं तो मुझे कोई नहीं ट्रेन कर सकता. अपने बच्चों से सीखिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आपसे काफी होशियार हैं, तो अपने बच्चों से सीखिए, अपने इर्द गिर्द औरतों से सीखिए. एंड आई थिंक हैविंग सिस्टरहुड नेटवर्क्स ऑलवेज वर्क्स. व्हाट जल्पा इज डूइंग, आई वुड आल्सो टेक टिप्स आफ्टर द सेशन. आई एम गोइंग टू टेक टिप्स फ्रॉम हर हाउ टू गेट द यूट्यूब thingy, because No, in only fact, when you I was ask. just coming to Jalpa ji only कि आप अगर मुझे brief में ये बता सकें कि to all the women who are watching right now or Exactly. who would be listening to or watching this video later on, हम share करेंगे जी. कि घर बैठे हम क्यों नहीं कर पाते हैं. सोच, सबको क्या लगता है कि YouTube पे जिनके चैनल्स हैं वो शायद एक बहुत टीम लेके चलते हैं. It's not always like that. You have all those things with you at home, right जल्पा जी? तो आप एक छोटा सा हमें एक ये बता दीजिए कि इनिशियली क्या कर सकते हैं अगर किसी भी चीज का YouTube चैनल उन्हें स्टार्ट करना है, तो क्या करना है, बेसिक चीजें क्या चाहिए होंगी? वेरी ट्रू मोनाली जी, जो आपने कहा ना, सही बात कही कि YouTube चैनल सुन के काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म एंड यू कैन अर्न वेरी इजीली, बट आई मस्ट से इट इज नॉट. बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, कांस्टेंट रहना पड़ता है आपको, एंड पेशेंस भी रखनी पड़ती है. हाँ, आपको अगर YouTube चैनल चालू करना है तो पहले अपना क्या आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पैसे कमाने के लिए आप स्टार्ट करो, डोंट डू दैट. इतना जल्दी आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं. हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, आप अच्छी तरह से वो कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट. मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट करा. मैं जब गुजराती वेबसाइट के साथ काम कर रही थी ना, तो मेरे रेसिपी आर्टिकल्स और बहुत सबको पसंद आ रहे थे, एंड दे पीपल टोल्ड मी कि प्लीज आप वीडियो भी स्टार्ट करो ना रेसिपी जब कर रहे हो तो. मुझे लग रहा था मेरा जो वर्किंग स्पेस है बहुत छोटा है. शायद आप बिलीव नहीं करोगे कि एक वो टेबल मैट है ना, वो 2 साइज कर लो, बस उतना सा वर्किंग स्पेस है जिसमें मैं शूटिंग कर सकूं, क्योंकि बाकी क्या ऑक्यूपाइड रहता है. अपना जो प्लेटफॉर्म होता है ना, राइट, मतलब वो इतना नहीं बड़ी जगह नहीं है, बट आई हैव स्टार्टेड दैट. एंड सच मानो, मैंने जो दिल से स्टार्ट करा था ना, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतने वीडियो के बाद मुझे इतने व्यूज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे. लकीली 14 वीडियो के बाद माय चैनल गॉट मोनेटाइज्ड एंड आई एम अर्निंग मोर देन माय जॉब इवन. અને बहुत अच्छा मतलब चल सकता है अगर आप उसमें डेडिकेशन डाल दो. अपना कुछ भी करना हो ना, तो वो वही होता है कि बस दिल से करो, बी कांस्टेंट एंड बी पेशेंस. आप अपने ऐसे बोलो कि आज के आज ही वो मोनेटाइज हो जाए या 2-3 वीडियो के बाद, यू नेवर नो कि ऑडियंस को क्या पसंद है. तो पहले आपको वो स्टडी भी करना पड़ता है कि कौन सी रेसिपीज आप डाल रहे हो, मतलब वो क्या पोस्ट करना है ऐसे. और जो एवरी वुमन जो अपना ड्रीम फॉलो करना चाहती है, नॉट यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म एंड इज द लिमिट. एंड सीरियसली यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. पहले लोगों को लग रहा था कि वीडियो बनाने में क्या इतना बड़ा काम है, बट 8 और 10 मिनट का वीडियो बनाने में 5 to 7 आवर्स लगते हैं. मेरा 3 डेज का प्रोसेस है. जब मेरा बेटा स्कूल जाता है, 1 डे आई एम शूटिंग, दूसरे दिन मैं एडिटिंग करती हूँ एंड देन वॉइस ओवर. तो 1 वुमन आर्मी बोल सकते हो. कुछ भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं है, मैं खुद से ही कर रही हूँ. एंड टचवुड की सबको अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स चूज करती हूँ जो इजीली अवेलेबल हो, और सारी जो महिलाएं घर पे है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप अभी हेल्थ का भी आप देख रहे हो कि सब कुछ हेल्थ कॉन्शियस हो गए आफ्टर कोविड, तो बहुत ज्यादा, तो वो भी एक अच्छी चीज है. और मैं ये सारा कुछ ध्यान में रखती हूँ एंड देन ओनली आई एम पोस्टिंग माय रेसिपीज. तो आपको अगर चालू करना है कुछ भी यूट्यूब पे, तो प्लीज डू इट टुडे ओनली. आप ऐसा मत सोचो कि ये नहीं होगा. मैंने भी थोड़े टाइम पहले सोचा था कि मुझे लग रहा था 1 लाख फॉलोवर, तो मैंने कभी ड्रीम में भी पहले नहीं सोचे थे हो जाएगा, बट विद इन 2 years आई गॉट इट. सो यू कैन डू दैट इफ आई एम डू दैट. Absolutely, absolutely. That was really a booster dose for everybody. मैं तो एक ही चीज ये सोचती हूँ, especially for the Indian women, where everybody is not yet techno savvy. उन लोगों का एक ही सवाल रहता है. मुझसे काफी लोग काफी जगह पूछते हैं, आप लोग भी फेस करते होंगे कि
मुझे नहीं आता यूट्यूब कैसे करना है, मुझे नहीं आता इंस्टाग्राम कैसे करना है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, वन थिंग इज यू विल अपग्रेड योरसेल्फ, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट इवन दैट एजुकेटेड? सो यू डोंट नीड टू बी डिसहार्टेंड. मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट में घर से जो काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, वो है वर्ड ऑफ माउथ. मैं आपको बताऊं, वर्ड ऑफ माउथ से यू कैन जस्ट डू वंडर्स. आई हैव डन इट थ्रू आउट माई करियर, लास्ट 22 years आई हैव डन इट लाइक एनीथिंग. एक को बताओ, एक को पढ़ाओ, और 5 मिल जाएंगे, उससे और 5 आ जाएंगे. और इस तरीके से मेरे जो लास्ट काउंट था ना स्टूडेंट्स का, एट ए टाइम वी हैड 110 स्टूडेंट्स. सो ऑल सिंगल हैंडेडली हो जाता है, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल. The same way the food industry, where many people are, Jalpa ji is here, Bela ji is here. Bela ji, आपने तो जब स्टार्ट किया होगा तब तो ये सब कुछ था भी नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और फोन को. और एक चीज आज मैं एक शेयर करना चाहूंगी. अपने आप को मार्केट कीजिए प्लीज, अपने आप को मार्केट कीजिए. डोंट जस्ट वेट फॉर अदर्स टू मार्केट यू, दे विल डू इट. प्लीज अपने आप को सीना तान के मार्केट कीजिए कि आई डू दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज माई सर्विस एंड आई एम द बेस्ट. इस चीज को बोलने से ना डरिए ना शर्माइए. जिसको जो समझना है समझने दीजिए. आपको समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज इट. So we would be winding up this session. Last one liner I want from everybody. एक क्विक क्वेश्चन है कि आप लोगों के लिए रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फील गुड फैक्टर, कौन सा ज्यादा जरूरी है जब आप घर से काम कर रहे हैं? तो मेघना जी फटाफट. Satisfaction is the must, then recognition, and then financial freedom. Absolutely good. रूबी जी, आपकी क्या राय है इसमें? I think number 1 is financial independence, then second is happiness throughout, and third आपने बोला recognition, because अगर आपके पास financial independence है, then others will just follow. True. Jalpa ji? For me, work satisfaction and recognition on same level, and secondary it's a financial independent. आप सबको पता है कि every woman should be independent financially, and nowadays तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वो it is secondary, but yeah, it must. Bela ji, finally. So things change, your priorities change as you evolve. So when I started, my financial independence was a lot more important than recognition and appreciation. Now it's the other way around, and things follow. Financial recognition, not financial, is the last priority. Recognition and appreciation is the first, and because of that, financial independence automatically follows. Because you're recognized, you become famous. Things sell for itself, and then you are automatically get financially independent. So things evolve as you change. Absolutely, Bela ji. See, experience bolta hai. Thank you so much, Bela ji, for this insight. This was a wonderful session. I would like to thank vyapaarjagat. Thanks for छोटा word है. डॉक्टर प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस लायक समझा. आज तो मतलब दिल खोल के बात की सबने. And we want more and more people to get motivated this year कि अगले साल हम इसका 10 times ज्यादा कर सके, पावरफुल होके, पावर पैक्ट होके आ सके. बस एक ही चीज कहना चाहूंगी जो हमें सुन रहे हैं आज, कि आप खुद अपने बिगेस्ट मोटिवेशन बनिए. Become your own motivation. Every other will follow you. Just go for it. That's it. Don't think much. Just go for it. Thank you so much again, and happy Women's Day. Over to Rajasi, please. Thank you very much, all the panelists and Monali ji, for a beautiful session. Very well started in Hindi, जो हमें कब से चाहिए था, आपने वही कर दिखाया. Thank you very much. और जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन आप खुद है, वैसे ही कंपटीशन भी आप खुद है. आईने में देखिए, वही कंपटीशन है. So thank you very much for sparing time, especially Dr. Ruby, and of course all the other panelists. Thank you very much. Dear viewers, we are in for our next session.
Do not forget to subscribe on vyapaarjagat TV and do not forget to tag us. #मेरा व्यापार मेरी पहचान. Hello everyone, I am Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a women entrepreneur, do register your startup idea. Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is, if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as, having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society.
By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better, better and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. जहाँ किसी ने उड़ान भरी, जो एक पायलट बन गया, वहां पे ही किसी ने घर पे बैठ के इतना सारा बिजनेस कर दिया और इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया. आई एम श्योर ये सारे ऑनलाइन सेशंस जो आप अटेंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लाइव ऑन यूट्यूब, ये आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा टू डू योर बेस्ट. किसी और से बेस्ट नहीं, खुद ही कंपटीशन है हमारी. एंड विद दैट पॉजिटिव नोट, लेट मी इंट्रोड्यूस one very beautiful lady we have here as a moderator. Her name is Shweta. She is Mrs. Maharashtra subtitle Fitness Diva 1920. Wow. Thank Shweta is also an NLP practitioner and works in mental health awareness. She is a full-time employee as admin in Honeywell. She is passionate about hosting and has compared many corporate and casual events. She is a social activist, also associated with Nanna Gyan Foundation as core member. Welcome, Shweta. Over to you. Thank you so much, Rajasi. So I hope everybody is good here. And I want to wish you, आप सबको मैं wish करना चाहती हूँ Happy Women's Day. वैसे तो कोई स्पेशल दिन होना नहीं चाहिए. आई थिंक इट्स एवरी डे सबका विमेंस डे होता है, क्योंकि सुबह से रात तक हम सब भागते रहते हैं और सारे काम करते हैं, कुछ जॉब भी करते हैं. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, मॉमप्रेन्योर्स है, एंड ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट जो घर पे भी रहते हैं. वो मैं दोनों कर चुकी हूँ, तो आई नो कि कितना काम होता है. तो आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट द वन डे वी सेलिब्रेट. एवरी डे should be celebrated for us. So first of all, I would like to introduce Tanvi ji. So Tanvi is our Gujarat's first female represent in India Mrs. Universe. Oh my God, आपको देख के मुझे मिस से निकला है मुझसे. Sorry, Mrs. Universe 2021, and also she is an Indian Ocean Universe 21 and winner of Talented India 2018, right? And she's also into the beauty lifestyle. As you can see her, she looks stunning today, and she's also a fashion influencer, and she's into a classical dancer and Indian folk. And second, I would love to introduce Sejal Trivedi ji. Hello, Sejal. Sejal is she's having her 15 years old business, and she is so much into the jewelries, the diamonds, and something which women loves. I think Sejal, you are, can you unmute yourself? Yeah. Yes. So Sejal is into the diamonds, which every woman, I guess, I believe, I know every woman doesn't love. There could be somewhere other people who like other things as well. So this is an introduction. She is the owner of the Revati collection, right? So I would also love to introduce Divya Kotwala. I hope I'm spelling it correctly. Divya? It's Kotawala. Divya Kotawala. She's the owner of the jewelry line, and Manish, your husband, and Divya together have started this small business, which is not small anymore. And no, so I'm really sorry. I think I just missed. This is a 300-year-old legacy you're carrying. Yes. Oh my God. Yes, yes. This is really interesting. This is complete line of jewelry, which is carried from 300-year-old legacy, which you are taking it forward. And also, I would love to welcome Bhavini Parekh. Bhavini? Yeah, she is a fashion designer of Bunker Junko. Very interesting name, Bhavini. Thank you.
you are upcyclers. So I would love to know more while the discussion. And last not the least, I would love to introduce Suruchi Agrawal. Suruchi, are you there? Yes, yes. Hi Suruchi, I think we had a call before this. So Suruchi का profile इतना बड़ा है, मैं पढ़ती रहूँगी तो time निकल जाएगा. So Suruchi, she is the owner of Ghar Ki Bakery and also the owner of a papkul art hobby. It's very interesting. I think we should go. जब हम further discussion करेंगे तो हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में. हमें ये भी पता चला you are a pharmacist and MBA. So I'm really interested to know the journey because ये दो बहुत opposite चीजें हैं. One side creativity and one side this. So all of you welcome and thank you Rajyasree to give this to me over. And the most last not the least, I would love to thank sir for giving me this platform. So basically मेरा भी ये first one-on-one interaction ऐसे है online. So I really sorry अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो just it's fine. So I would love to ask first question on this big platform vyapaarjagat. So पहला मेरा question है हर एक का जो हमारा title है fashion of future industry. So one is into jewelry, one is into the pageants, one is in the designing. So हर एक के अपने challenges हुए होंगे, I'm sure. So one by one, I would love to know कि क्या challenges उन्हें face करने पड़े जब उन्होंने ये decision लिया था कि उन्हें या फिर जो जैसे किसी को legacy में आया है या किसी ने अचानक ये idea आया. I just would love to when they started. मैं जानना चाहती हूँ उन्हें क्या challenges face करने पड़े. So Tanvi, first, could I know more about it? Myself. Thank you, Shweta. Well, the question is kind of confusing for me. Would you like to know about the challenges or would you like to know about the future? Okay, so I think we'll go better with the future, as you say. So let's talk about it more. So what is the future of the pageant? Because मैं खुद भी एक pageant कर चुकी हूँ and I'm also into the Mrs. Maharashtra. I had been there. So I would love to know more about what is the future of the pageant industry from you. Future of the pageant industry. Oh my God, this is like really vast thinking. I'll speak in Hindi. Yeah, future ऐसा है कि see every industry has their own growth. Now, pageant industry was becoming very monotonous kind of industry in past years, but now people have really come up with different ideas where it is not just about the beauty, the outer beauty, right? जैसे हम even miss category में भी देख रहे हैं अभी height is not the criteria. Earlier the criteria was if you are 5'8", then only you can apply for this. पर अभी वो सब चीज निकल रही है. Height, minimum 5'2" height. If you see in the Mrs. category, Shweta, I'm sure even you have seen this. In the Mrs. category, we have female applying of the height of 4'11" or something. See such powerful women out there. So outer beauty is no more a criteria in pageants anymore. So anyone who has confidence, who has power to go on a stage, to change the lifestyle, to influence the people around, then I say that is the future. That is the future of pageants. That's really beautiful, and this is exactly same what I think because I have been there, and the height, the weight, the color, nothing is like it was earlier in days. Everything has changed, and I completely agree to you. So with the future, like in pageants, the clothes are also important. So as the jewelry. So I'll come back to Divya. I'm really keen to know about your future. Like my question will be same for you. So what about the future as already carrying the legacy for 300 years? आप 300 सालों से वो जो आपको क्या लगता है आप अपना up to the mark कर पा रहे हैं या और better कर सकते हैं या अब क्या बदला है? So yeah, thank you, Shweta. So basically, I feel jewelry
not only it has a beautiful future, but it also comes with a great, as the word says, legacies from the past. It brightens your present, and it is one of the best investment for your future. So jewelry is one non-perishable item जो सालों पर सालों legacy, grandmother, mother-in-laws, daughters and daughter-in-laws को pass on होता है. And आगे भी आप करते रहोगे जितना आप उसमें invest करते रहोगे. So when we talk about future, so jewelry का future will always be as shiny and glittery as it is for diamonds. And especially during the pandemic phase, जो चीज हमने बहुत क्लोजली देखी कि ज्वेलरी लेते तो सब लोग ही थे हमेशा से ही, लाइक थोड़ा सा मनी भी आप कलेक्ट करोगे. as a housewife, as a mother, as a grandmother, the first thing you want to invest is चलो थोड़ा ज्वेलरी ले लेते हैं. You will never say कि चलो मैं नया मेकअप ले लेती हूँ या मैं नया बैग ले लेती हूँ. मतलब everything is important, but ज्वेलरी की एक अपनी रेलेवेंस है, अपनी ब्यूटी है. एंड कोविड के टाइम ये चीज बहुत सामने आई कि कोई भी चीज खराब हो सकती है पड़े पड़े, ज्वेलरी नहीं होती. Jewelry will remain as it is, and it will not get spoiled, it will not deteriorate in its value, and it is something that's there for keeps. तो हम ऐसे ही at House of Kotawala, at our brand, we see jewelry कि चाहे आपका बजट 20,000 हो या 20 lakhs हो, आप जो भी ले रहे हैं वो आपके ओकेजन को तो ब्यूटीफुल बनाएगा ही, बट वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा, which is very that's really beautiful. So basically future of jewelry is the investment. I think people are not too much abhi gold hai, but still people are going towards the diamond and the rubies and other different stones, I think, and even the precious. So it's great. Like the future is really great. It could be the big investment. So it's same again. I'll come back to Sejal with the jewelry question. So you are into the jewelry business. So what do you think about it? मेरे पास चैलेंजेस थे. मैं 92 ईयर में कॉलेज में थी जब मैंने सीखा था बेसिक लेबर वर्क. तो तब इतना पता नहीं था, बट बिजनेस इज माय ब्लड, क्योंकि इन माय ब्लड, क्योंकि फादर भी बिजनेसमैन थे. तो कॉलेज के टाइम से मैं करती थी. तो आई हैव 25 years एक्सपीरियंस इन ज्वेलरी लाइन. सो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो लेडीज का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसा चाहिए, वो मैं बहुत अच्छा परफेक्ट उनको 100% सेटिस्फाई कर सकूं, ऐसा मैं उनको डिजाइन करके बना के देती थी. तो आफ्टर शादी के बाद 2 बच्चे हुए, थोड़ा स्टॉप हो गया, मगर 2 बच्चों के बाद भी चालू ही रहा बिजनेस. तो अभी बहुत अच्छा है, नाम है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत बेस्ट. चैलेंजेस भी बहुत आए, बच्चे बीमार, छोटे, जॉइंट फैमिली, मम्मी की कहानी है वो. मगर सबका सपोर्ट बहुत अच्छा था और मैंने किया और आज मैं आई एम वेरी हैप्पी. ऐसा नहीं है, अभी फ्यूचर में ऐसा है कि आप देखिए लास्ट 2-3 डेज में सिल्वर और गोल्ड की प्राइस टू मच हायर, बहुत हाई जा रहा है. तो अभी क्या है कि फॉरेन कल्चर आ जाएगा, आप देखिए, क्योंकि 22 कैरेट जाएगा और 15 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट आएगा. और ऐसा नहीं है, मेरा बेसिक काम बहुत अच्छा, मैं सिल्वर चांदी का काम बनाती हूँ, सिल्वर का काम कस्टमाइज, और जो ब्रांड जो है गिवा, शाइन वन, ये सब जो बेचते हैं वो मैं 5-6 साल से ब्रांडेड यहाँ बेचती हूँ ऐसा. और उनके प्राइस में और मेरे प्राइस में काफी डिफरेंट है. आप ऑनलाइन देखो और मेरा बहुत डाउन. और एक है कि मैं बहुत अच्छा सर्विस देती हूँ, तो मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, मेरे लिए वेट करेगा 15-20 दिन का भी, अगर मैं नहीं हूँ अवेलेबल तो. डेफिनेटली सेजल, इसके बाद मैं आपको कांटेक्ट करने वाली हूँ फॉर श्योर. Definitely. He is already, making all of us. Yes. Okay. ब्रांड मैं उस क्वेश्चन पे आने वाली हूँ. I must say, good brand. जानना चाहती हूँ भाविनी से. पहले तो मैं एक्चुअली ज्यादा नहीं था मेरे पास आपका इंट्रो, मैं सच में थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहती हूँ. बंको जंको मुझे नाम ही इतना इंटरेस्टिंग लगा है. सो व्हाट इज इट अबाउट?
I want to know, like मुझे जानना है, I think audience भी जानना चाहती है कि क्या है ये बंकुजा. हाय, सबको मेरा आदर प्रणाम. भाविनी फ्रॉम मुंबई. तो मैं यहाँ मेरी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से बंको जंको पे हमने स्टार्ट किया. तो इन 1990s, जैसे मुझे सबको एक कुछ करना है जिंदगी में, ऐसा होता है, वैसा मुझे भी एक कीड़ा था कि भाई होम साइंस किया है. सब लोग बताते थे क्या रोटी पकाना सिखाते. आई सेड मैंने मेरी अपने आप को बोला नहीं, रोटी इज नेसेसरी बट आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू डू इट, यू नो. एंड लाइक वो तरीके से मैंने कुछ करने के लिए एक ठान ले लिया. तो वो समय पे मैंने ट्यूशन चालू किए, फिर घेर बैठा और सब गुजराती चैनल आती थी, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन देने को जाती थी, जैसे भी मतलब. एंड ट्यूशन, कुकिंग क्लासेस, वो सब घर से करती थी. मेरी लड़की छोटी थी तो. एंड फिर वो टाइम पे मैंने सोचा कि इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आई वांट टू, मतलब मुझे और कुछ करना है करके. तो मैंने एक कंपनी में कनेक्ट किया कि मतलब मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम दोगे क्या. तो बोले आपके पास कितनी लेडीज लोग हैं. मैंने बताया कि 4-5 है, वो लोग कर लेंगे. तो कितने पीस करोगे आप. तो बोले 5-7 पीस कर लेंगे. बोले नहीं, हमें तो मिनिमम 100 पीस एक दिन का चाहिए. तो मैं बोली प्लीज आप दो तो हम ट्राई करेंगे. बोले नहीं हम ऐसे नहीं दे सकते. तो थोड़ा मैं डिप्रेस हो गई, अरे मैं काम नहीं मिला करके. तो मैं बाहर आई. लेकिन भगवान है, वो कोई आदमी ने उधर मेरा कॉन्वर्जेशन सुना होगा, तो ही केम आउट और उसने बोला मैडम आपको सामने लीला लेस है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा. लीला पेंटा होटल हैज अ बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मुंबई इन 1990s. सो वहां पे लैक्स ऑफ पीसेस एक्सपोर्ट के लिए बनते थे. तो मैं वहां पे गई. वहां पे भी उसने मुझे पूछा कि आप कितना बनाओगे. यहाँ पे 5-10 ना बोला मैंने, वहां पे 20-25 बोला. आई कांट ब्लंडर कि हाँ 100 कर लूंगी बिकॉज आई डोंट नो, यू नो. तो मैंने बोला 15-20-25 कर लूंगी. तो बोले नहीं मैडम हमें तो 100 पीस चाहिए, हम नहीं दे सकते, लेकिन आप अच्छे करके दिखते हो और आपको पेशेंट लगता है थोड़ा, मतलब तो मैं आपको एक ट्राई करने के लिए देता हूँ, लेकिन 100 पीस तो दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम दूंगा. हमें 1 दिन में चाहिए रहता है, लेकिन आपको मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा. आई सेड ओके फाइन, थैंक यू सो मच. और एकदम मैं तो एकदम खुश हो गई कि हाँ चलो. लेकिन टेंशन था कि 100 पीस कैसे करूंगी. घर पे लेके गए, फिर सब फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हम करेंगे. मैंने बोला क्या. बोले नहीं ये तो हमसे नहीं होगा. फिर मैंने मेरी जो बाई थी उसको बोला कि मौसी आपके एरिया में सब लोग क्या काम करते हैं. तो बोले खाना पकाते, खाखरा पापड़ बनाते. मैं बोली चलो. हम लोग वहां पे 4-5 पीस लेके गए. एक सैंपल शर्ट का था वो लेके गए, उसमें बीड्स लगाना था. तो मैंने इनको दिखाया कि ये आप काम करोगे क्या. बोले नहीं हमें नहीं आता है. फिर मैंने बोला अच्छा आप अभी क्या करते हो. तो बोले खाखरा बनाते, पापड़ बनाते. मैं बोली कितना कमा लेते हो. तो बोले हम लोग 20 रुपया कमा लेते हैं दिन का. मैं बोली आपको 50 रुपया कमाने को मिलेगा. तो हाँ लेकिन हमें ये आता नहीं है. मैं बोली आपको सुई धागा पकड़ना आता है, बाकी मेरे पे छोड़ दो. तो बोले हाँ ठीक है. वहां पे बैठ गए, वहां पे उनको सिखाया. एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड विद द वुमन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट थिंग्स. तो फिर उसके बाद मैंने माल बना के दिया कंपनी में 5 दिन में. वो करके वो लोग को 5 पीस दिया. शाम को तो मेरे पास वहां आगे पीछे से सब 15 लड़की आ गई. एक वीक के अंदर मेरे पास करीबन 50 से ज्यादा लड़की आ गई कि सबको काम चाहिए था, यू नो. तो ये तो माल बन गया, माल हमने दिया, माल पूरा रिटर्न, क्योंकि वो टाइम पे हमें नहीं पता था क्वालिटी क्या होती है वो सब. तो वो माल रिटर्न हुआ. मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिया मुझे प्लीज तू ये लाख का 12,000 कर देगी, तू ये सब बंद कर दे. तो दैट वाज द चैलेंज फॉर मी. आई सेड Bhavini, now you have to do it. Anyhow, I was crying, literally. I can't recall these days, and that was the challenge for me, and I accepted it. और फिर वहां से वो ऐसे मेरी जर्नी चालू हो गई. एंड वो माल हमने ऑल्टर करके दिया और अच्छी तरह से चालू हो गया. फिर उसके बाद तो कंपनी में से हमें मोर देन 25,000-50,000 पीस मिलने चालू हो गए. तो वो तरीके से हमारा 2 साल तक बहुत अच्छा काम चालू हुआ. देन आफ्टर दैट लीला लेस शिफ्टेड टू द तिरुपुरम एंड दैट वाज द अनदर चैलेंज. सो हम मतलब एक वुमन के, औरतों की जिंदगी में चैलेंज तो आती रहती, लेकिन उसको पीछे देखना ही नहीं है. आगे जाओ, आने दो, गिरेंगे उठेंगे, क्या होगा ना ज्यादा से ज्यादा. तो दैट इज देयर, यू हैव टू बी लाइक दैट. और वहां से फिर हमारी जर्नी चालू हो गई. फिर हम दूसरे कंपनी में कांटेक्ट किए और वहां से हमने गारमेंट का हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम मिला. उसे सरफेस ऑर्नामेंटेशन बोलते, जो है गारमेंट्स पे बीड वर्क, एम्ब्रॉयडरी और वो सब किया जाता है. फिर आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इन 2007. आई वेंट टू US फॉर माय डॉटर्स एजुकेशन.
वहां से आने के बाद मैंने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया, और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के टाइम पे मुझे पता चला कि ये तो कितना सारा स्क्रैप्स वेस्ट जा रहा है, लैंडफिल में जा रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मुझे कुछ तो करना है, आई वांट टू यूज दैट। और वो जो जो हम लोग बनाते थे सब खादी, हैंडलूम्स, इकट्स और सब में, तो आई यूज्ड टू कलेक्ट ऑल दैट पीसेस और उसमें से गारमेंट्स बनाती थी। और वो टाइम पे माय डॉटर के पास जॉब नहीं था, तो आई टोल्ड हर कि तू कुछ नहीं, तू खाली ये एग्जीबिशन कर करके। शी स्टार्टेड डूइंग द एग्जीबिशंस एंड हमें बहुत ही अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स आने लग गया। तो फिर तो मुझे भी मतलब लगा कि इसमें तो ऊपर से अच्छा ही है ये करने का। माय डॉटर इज अ कमर्शियल पायलट, कैप्टन जिल, शी अर्लियर शी वाज देयर। एंड तो उसने मुझे बोला, मॉम व्हाई यू आर नॉट मेकिंग द ब्रांड? आई सेड व्हाट, एट दिस एज एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट द MBA, नथिंग, हाउ कैन आई मेक द ब्रांड, यू नो, इट इज अ बिग चैलेंज फॉर मी। क्योंकि ये तो मैंने ऐसे जीरो से चालू किया है, यहाँ तक तो हम पहुंचे हैं, लेकिन अभी ब्रांड और वो सब करना चैलेंज था। बट वो बोली नहीं नहीं, तो वो भी मुझे क्लिक कर दिया कि वाई मैं अपनी ब्रांड नहीं बनाऊं। तो वो टाइम पे एक स्टार्टअप कंपटीशन आया VNIIT का, तो उसमें मैंने मेरा एप्लीकेशन भेजा एंड आई वाज सिलेक्टेड आउट ऑफ 3000 वीमेंस। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय स्टार्टअप चैलेंजेस। दैट्स अमेजिंग। एंड देन मतलब मुझे उन्होंने बिजनेस प्लान मांगा, आई डोंट नो द बिजनेस प्लान, हाउ कैन आई राइट द बिजनेस प्लान, क्योंकि हम तो काम करते थे, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। एंड आफ्टर दैट after this I've started, when we were talking about, मैं और मेरी लड़की बात कर रहे थे, उसने बताया कि ब्रांड करो, तो मैंने बोला हमें ब्रांड करना है, कुछ अच्छा सा ब्रांड नेम होना चाहिए, लाइक paperfry.com एंड एवरीथिंग, यू नो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी को। तो बोले कि हाँ हाँ, हर नेम इज जिल। तो बोले मेरे नाम से जे से ही रखना है, जंको रखते। आई सेड जिल, जंको इज नाइस, बट हु इज गोइंग टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द जंक? नेम इटसेल्फ जंको है तो कौन बाय करेगा? तो मैं बोली नहीं नहीं, मुझे B से रखना है। तो वी वर जस्ट डूइंग द फन एंड एट दैट टाइम इट केम अप बंको, मॉम बंको जंको। आई सेड, oh wow, it's so lovely and sounds too rhythmic and it gives the happiness, but what is the meaning of banko? We don't know. And after that, when we were searching on a Google, after 1 week I found out the name. Banko is the art decoration creation in Japanese. I said, Jill, done, I'm done now. So thus name came up. And so we work towards the environmental sustainability and woman empowerment. We train the woman, provide the work to them, help them to generate the livelihood. And in my journey, I've trained more than 5,000 women. Still today, we are training the women in the red light areas, rescue girls, in villages, and so many. So this is not only the fashion, but it is the social impact creating thing. डेफिनेटली भाविनी, आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स होंगे, जो अभी भी सोच रहे, आइडियाज होंगे उनके पास, लेकिन वो आइडिया कुछ चैलेंजेस की वजह से पीछे हट रहे होंगे, डेफिनेटली आप सबकी स्टोरीज सुन के उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हमारी सुरुचि अग्रवाल, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी स्टोरी सुनी है आपकी क्योंकि हमारी बात हुई थी, बट मैं चाहती हूँ लोगों तक आपकी स्टोरी डेफिनेटली पहुंचे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता के, थोड़ा शॉर्ट में, बस हम थोड़ा टाइम की कमी हमें मैनेज करना है 5 लोगों के साथ। सो थोड़ा शॉर्ट बताइए, और डेफिनेटली क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। और सबसे बड़ा तो आपके लिए फार्मेसी बैकग्राउंड से क्रिएटिव आना, वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई वुड लव टू नो। Yeah, thank you, Shweta, and happy Women's Day to all. And thank you, vyapaarjagat, for giving me this platform, because it's my first platform कि मैं आज इतना अपने बारे में अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाऊं। तो पहले मैं बता दूं कि मैं एक छोटे से विलेज राजस्थान के थानागाजी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर ये था कि कहीं भी, मतलब जैसा गांव का कल्चर होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्पेशली बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते। तो मेरे पापा ने जो है वो मतलब मेरे सपोर्ट बने, और उन्होंने मुझे पढ़ाई करने के लिए, मुझे मास्टर्स डिग्री करने के लिए मुझे तमिलनाडु भेजा, और वहां से मैंने एम फार्मेसी करी, और उसके बाद में मैंने मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से MBA करी। और ये था कि जब मैरिज हुई मेरी 2009 में, फिर मेरी डॉटर का बॉर्न हुआ 2010 में। उसके बाद ये था कि मेरे लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी, मेरे हस्बैंड का जॉब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिलोकेट होता रहता था, तो ये था कि ना अपनी डॉटर को कहाँ रखूंगी मैं। तो ये चैलेंज था मेरे साथ में, और मैं स्कूल डेज से ही आर्ट जो थी वो उसको
आर्ट जो क्रिएशन थे वो करती रहती थी। फिर उसके बाद में ये था कि मेरी डॉटर को ये था कि मैं कहाँ रखूँ, किस तरह से मैं उसको क्रैच में रखूंगी तो उसको कुछ हो नहीं जाए, तो इस तरह के कई डाउट्स होते थे। फिर ये था कि मेरे हस्बैंड ने चलो है ना कुछ तो स्टार्ट करो, कुछ तो तुम सब कुछ कर सकती हो और कुछ तो ट्राई करने की कोशिश तो करो एटलीस्ट। तो मैंने ये था कि मैं बेंगलोर में जब थी तो एक क्राफ्ट स्टोर पे मैं गई और वहां पे देखा कि देखो कितने पेपर से भी कुछ लोग ज्वेलरीज बनाते हैं। फैशन का आज इतना है कि लोग छोटी छोटी चीजों से, मिट्टी से ज्वेलरी बनाते हैं, थ्रेड से बनाते हैं, बीट से बनाते हैं। मेरे माइंड में ये आया कि पेपर से भी क्या ज्वेलरी बन सकती है, और पेपर जैसी चीज से, और लोग इतना पसंद करेंगे उन ज्वेलरीज को, क्योंकि इमिटेशन ज्वेलरी का कोई ये रहता है कि कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हर जो मॉडर्न फैमिली होती है वो तो परचेज कर लेती हैं। हम जैसे मीडियम क्लास जो फैमिलीज होती है वो सोना भी नहीं खरीद सकते ज्यादा से ज्यादा। तो ये रहता है कि स्टार्टिंग जो है पेपर की जो ज्वेलरीज होती है 20 से 30 से, तो मतलब सब लोगों को वो रहता है कि हम चलो है ना ट्राई करेंगे, यूज करके थ्रो आउट कर देंगे तो इको फ्रेंडली होगी और एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। और फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट करा कि चलो कोशिश तो करते हैं, पेपर ज्वेलरी मैंने स्टार्ट करी बनानी। फिर उसके बाद में मैंने क्ले से काम करा, क्योंकि मैं मिट्टी में पली बड़ी हूँ। और इसके बारे में एक बात कहूंगी, मिट्टी में हूँ पली बड़ी, जज्बातों को जान गई, नया रूप दे देकर इसे हुनर में अपना भाव गई। और वहीं से मैंने स्टार्ट करी अपनी क्ले ज्वेलरी बनानी। तो क्ले ज्वेलरी वहीं से, क्योंकि क्ले ज्वेलरी को टेराकोटा बोलते हैं और टेराकोटा को लोग इतना पसंद करते हैं साउथ में कि लोग उनके उसके लिए जो ये रहता है ना कि मेहनत का तो पैसा देते ही हैं, और साथ ही साथ में उस में जो डिजाइनिंग और जो क्रिएशन आप करोगे उसका भी आपको सोने के बराबर पैसा मिलेगा। तो ये बात मेरे दिमाग में ट्रिगर कर गई कि चलो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं घर पे बैठ के अपनी बेटी को भी संभालूंगी और साथ के साथ में ये भी करूंगी। तो मैंने ज्वेलरीज बनानी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद में राजस्थान की हूँ तो गोटा पत्ती की ज्वेलरी तो गोटा की रहती है, तो ऑब्वियसली तो गोटा तो मेरे पास में घर में रहता ही था, इससे भी स्टार्ट कर दी मैंने, थ्रेड से भी बनाना स्टार्ट कर दी। और फिर मैं उसको सेल आउट करती थी, और सेल आउट के लिए ये रहता था कि मीडियम मेरा ऑनलाइन करती थी, अपने हस्बैंड से पूछ के कि चलो है ना मुझे कुछ बता दो कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मैं शॉपिंग के लिए डाल सकूं। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और चैलेंजेस ये आए कि उसके बाद में जब मेरा बेटा हुआ तो ये था कि मैं अपने पैशन को किस तरह से करूं, किस तरह से आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जॉब तो मेरा स्विच हो चुका था और मैं मतलब ये था कि एक घर के अंदर बंध चुकी थी कंप्लीटली। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग कहते थे कि अरे तुम तो फार्मासिस्ट हो, तुम तो फार्मेसी की हुई है, तुम जॉब क्यों नहीं कर रही हो। मैंने 2 साल जॉब किया भी, और फार्मेसी कॉलेज में भी मैं प्रोफेसर थी। उसके बाद जब मेरे बेटे का बॉर्न हुआ तब ये मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल गई, बिकॉज ही इज स्पेशल चाइल्ड, ही इज डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। सो एक ये रहता है कि पूरी अपना पूरा ड्रीम चेंज करना, अपना पूरा प्रोफेशन चेंज करना, और अपनी आर्ट को किस तरह से उजागर करना लोगों के सामने, जिससे कि लोग आपको पहचाने। तो कोशिश करती रही, धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने कि चलो है ना, फिर मैं एक स्पेशल पेरेंट जैसा कि हूँ कि ये रहता था कि चलो है ना घर से ही काम स्टार्ट करते हैं हम लोग, और घर से ही मैंने अपनी आर्ट को एक नई पहचान दी। जैसे क्योंकि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं, उनको पर्टिकुलर केयर की जरूरत होती है। तो मेरे साथ में ये ऑप्शन तो खत्म ही हो चुका था कि कहीं मैं जाके जॉब करने वाली हूँ। तो वो जो है वो really beautiful, हर पेरेंट के लिए, हर मॉम के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ मैं, कि ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ के कोई भी कितने भी चैलेंज आपके सामने आए तो आप ये नहीं है कि हार मान कर बैठ जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात आपने कही है। इस मतलब हम लाइव है और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, ये सच में बहुत बड़ी बात है। आप सब बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस है, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है। यस तो यहीं से मैंने अपनी पेपर क्विलिंग की स्टार्ट करी और मेरा ज्वेलरी मेकिंग का हुनर। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही यूनिक है, एक तरफ पेपर क्विलिंग ज्वेलरी है और एक तरफ मतलब द रियल
डायमंड्स भी है. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तन्वी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप फैशन इंडस्ट्री में लाइफस्टाइल और इवन जो भी इन्फ्लुएंस करती है, तो आपको क्या लगता है, ब्रांड, लोग ब्रांड खरीदना चाहते हैं, ब्रांड जो जैसे लोग गुच्ची और अरमानी ऐसे जाना चाहते हैं, या क्या फ्यूचर है हमारे इस ब्रांड का? मतलब अब शायद मेरा क्वेश्चन समझ गए हो. जी, अगर नहीं, मुझे ऐसा लगता है, me, I being in fashion industry, I would always go for something which is homegrown. Okay, that's beautiful. Brands are always there, they are fascinating, but those are not affordable always. Yes. Right? Affordable चीजें नहीं है. We are not someone who belongs to very wealthy, rich family. They would also go for this homegrown brands, this creative brands, which give them something new, something really creative, rather than going for those brands who are meant for something which is not of our reach. So मेरे लिए fashion is not only about brands. It is about something very creative, something very unique, जो हमारे बजट को सूट करे, जो हमारी environment को मैच करे, right? That's really great point. मतलब ये बहुत सही बात कही आपने. And something which is affordable. So I would always go for something which these people make. Gold, silver, diamond तो हम खरीदते ही है, उसमें हमारे लिए मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब वो तो खरीदना ही है. We would always go for that. But yes, this creative things वो कभी out of fashion नहीं जाता है. Like I still wear, Divya ji mentioned, I still wear something which my grandmother had. उनकी जो बनाई हुई सिल्वर की कोई पायल है जो मुझे इतनी अच्छी लगती है. I make sure that I wear it on every occasion that I could accommodate. So वो चीजें कभी out of fashion नहीं जाने वाली. That is always there. And these creative stuff that keeps on coming, we would love to support such women always. I mean, always we would love to support such women who are trying to come up on their own, and to support them, and to fulfill our fashion desires. I think this is the best thing. I'm really sure आप इतनी सुंदर है. I'm sure आपके इतने फॉलोअर्स भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपने जो बताई है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को वो लग्जरी ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, बट कुछ समय से थैंक्स टू आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो लोकल जो हमारी ज्वेलरी या कपड़े हैं जो अपसाइकल्स, उन सबको प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है फ्यूचर के लिए हमारी फैशन इंडस्ट्री का. विंटेज और हमारी जो चीजें हैं वो तो है ही डेफिनेटली, बट ये भी हो रहा है इससे, मतलब आई थिंक बहुत से लोग जो अपनी क्रिएटिविटी घर बैठ के पूरी कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. सो एक ये चैनल है, ये एक टीम है. No offense to those, they are really, they have worked hard to reach that level. I'm sure they have done their basics really hard to reach that level. But definitely these women, those who are working today, we need to support them. Yes, definitely. ये एक चैनल है, एक टीम है. As you said, विंटेज तो है, खरीदते हैं, मुझे लगता है सबको पसंद ही है, भले बहुत ना हो, पर हर औरत के पास ज्वेलरी तो होती है, डायमंड्स वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और ये डेफिनेटली अपकमिंग फैशन के लिए. सो आई थिंक सबके लिए, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है. मेरा नेक्स्ट सवाल है, दोनों जो आई थिंक शी इज देयर, Divya? Yeah, I'm here. Just a second. Okay. I have to scroll, sorry. Yeah, so Divya and Sejal, आप दोनों इस ज्वेलरी में है, तो आपको क्या लगता है ब्रांड लोग अब सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है. तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, इन्होंने जैसे कहा जीवा है, और लोग वो जाके प्रेफर करते हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा मेरा क्वालिटी है ये. सो ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, या जस्ट लोग नहीं बिलीव करते ब्रांडिंग में? मतलब सेल्फ ब्रांड, आपका अपना ब्रांड बनाना. So I feel there are both kind of people.
मतलब आज के टाइम पे ऐसे भी लोग हैं जिनको सब कुछ ब्रांडेड ही चाहिए, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि क्वालिटी मैटर्स ओवर द नेम। सो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्वालिटी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही ब्रांड्स में क्वालिटी नहीं होती है, बट यू नो दिव्या जी, तो वो किस्म के लोग हैं जो दिखावा करना चाहते हैं, एग्जैक्टली हाँ, that if I'm wearing, the brand should shout. But हमारे पास ऐसे भी clients आते हैं over the years जिनको ये लगता है नहीं हमें भैया क्वालिटी चाहिए, because we have a background of wholesale, जो हमने 300 years वाली बात करी, और मेरे हस्बैंड 6th generation है in this line of work. So हमारा पूरा बैकग्राउंड होलसेल का है, हम खुद सोर्सिंग करते हैं डायमंड्स की, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ सारा सामान बनता है और फिर पैन इंडिया शॉपकीपर्स के पास जाता है। सो जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया कि अगर मैं होलसेलर से लूंगा तो नॉट ओनली द क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, इवन द प्राइसेस आर वेरी गुड, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। वही चीज जब एक शोरूम में चली जाती है वो ग्लोरीफाई हो जाती है, कॉस्टिंग्स ऐड हो जाती हैं। तो हम दोनों सेगमेंट्स को केटर करते हैं, B2B को भी करते हैं वेयर वी आर सप्लाइंग टू शॉपकीपर्स, एंड नाउ विद माय ब्रांड जो ये हाउस ऑफ कोटा वाला मैंने लॉन्च ही इसलिए करा है कि वी वांट टू गिव दिस होलसेल ज्वेलरी अ रिटेल लुक। बट सरप्राइजिंगली लेट मी ऐड हियर, हमने रिटेल में जाने के बाद भी अपनी कॉस्टिंग्स नहीं बदली। जो हमारे ऑफिस में आके होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे हाउस ऑफ कोटा वाला पे प्राइसेस पूछते हैं, द प्राइसेस रिमेन जस्ट द सेम, बिकॉज वी वांट दैट we should reach to more houses with best quality diamonds, which is all in-house made and where quantity and quality is not compromised. तो मुझे ये लगता है कि बट ये धीरे धीरे, जैसे तन्विश ने बोला कि ये शिफ्ट आ रहा है, लाइक मेरे पास ब्राइड्स आती हैं जो बोलती हैं मुझे एक साथ भारी भरकम बड़ा सा सेट नहीं चाहिए, लाइक दीदी यू गिव मी समथिंग वेयर आई डू स्टैकिंग, तो वो एक साथ 3 सेट्स पहन लेती हैं, लुक हो जाता है, बट वो 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज हो जाता है। तो ये हमारे तो पड़े हैं बस। एग्जैक्टली जो आपके मेरे सेट्स होंगे ना, हम शायद ही दोबारा रिपीट करेंगे, बट आज की जनरेशन में इतनी अवेयरनेस है दैट गर्ल्स एग्जैक्टली नो कि हम स्टैकिंग अप करके लुक ले आएंगे, बट बाद में उसको यूज कर लेंगे ब्रेकअप करके। सो आई थिंक अवेयरनेस विल कम एंड ये ब्रांड का शिफ्ट धीरे धीरे हो जाएगा। सो सेजल, सेम क्वेश्चन। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो मुझे पहचानते हैं, मेरी चीज को, मेरे काम को जानते हैं, मैं उनको 100% सेटिस्फाई करती हूँ। तो ब्रांड का मुझे इतना नहीं है। अनुष्का शर्मा ने उसका रिसेप्शन में जो पहना था वो सेम सेट है, वो सिर्फ गोल्ड में नहीं है मेरे पास, वो सिल्वर में है, मेटल में है, मगर आप पहनो और खड़े रहो तो वो सेम सिमिलर लगेगा, बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। अहमदाबादी जड़ाऊ कुंदन वो सबसे महंगा होता है ज्वेलरी में, गोल्ड में भी जाओ, सिल्वर में भी जाओ और मेटल में भी जाओ, उसकी मेकिंग बहुत हैवी होती है, बहुत महंगी होती है। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर कोई बोलता है कि गिवा, आप बोलोगे कि गिवा ब्रांड का रखते हो, एक्चुअली में गिवा ब्रांड इज नॉट अ मैन्युफैक्चर, इटालियन बैंकॉक से आता है, जो मुझे भी दे रहा है वो उसको भी दे रहा है। तो मेरा तो एक प्राइस रेशियो है बहुत, क्योंकि मिडिल क्लास लड़कियां कॉलेज की, ऑफिस वेयर के लिए, जैसे आपने फंकी डाल लिया, डेली वेयर के लिए डाल लिया, कभी खराब ना हो, 2-4 साल तक सिल्वर का होता है, खराब नहीं होता है, रिपॉलिश करा वापस नया जैसा हो जाता है। उसकी बायबैक बैकिंग भी देती हूँ कि आप रिटर्न कर रहे हो तो मैं ये वेट के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रांड का ऐसा कुछ है। हाँ, ब्रांड के फोटोज मेरे पास लेकर आते हैं कि भाई ये अंगूठी है, ये गीतांजलि डायमंड का है, ये बना दो आप, तो मैं बना के देती हूँ सेम और गारंटी के साथ। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग ऐसा, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई शादी है, फंक्शन है, या फिर डेली वेयर है, या कहीं घूमने जाना है, हमको थोड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए उन्हें, चाहिए, तो वो तो उनको 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। बाकी ब्रांड के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बोलता है। भाविनी, आप लास्ट है। सो आप ये बन को आपने शुरू किया है और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ यू आर गोइंग टू कम्पीट, सो आपको क्या लगता है लोगों के क्या रिएक्शंस है
कि जो ब्रांडेड पहनते हैं वो आते हैं आपके पास? ऐसे कोई आए हैं कस्टमर्स? लिंक यू आर अभी कस्टमर बहुत कॉन्शियस हो गए, उन्हें भी पता है कि ये कोविड के बाद तो और ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि ऑर्गेनिक चाहिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, जिसकी वजह से कोई एनवायरमेंटल हार्मफुल नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट है जिसकी सोशल इम्पैक्ट है, तो वो सब कॉन्शियस कंज्यूमर मांगते ही है आजकल। अभी जमाना धीरे धीरे फास्ट फैशन की ओर से डाइवर्ट हो रहा है। आज तक क्या था, एवरी यंगस्टर्स एवरीवन वांट्स कि आज पहना है कल नया नया ही पहनना है, दे कांट रिपीट इट, यू नो। नाउ दे बिकम मोर कॉन्शियस कि अभी आप मानोगे नहीं, हमारे पास इतने सारे इन्फ्लुएंसर कनेक्ट हो रहे हैं कि बिकॉज क्यों कनेक्ट हो रहे हैं कि उनको भी पता है कि जो व्यूअर्स है उनको भी ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो दे आर सपोर्टिंग एंड क्रिएटिंग द मोर अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग्स। तो ये सब चीज आज अभी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा, जो डिजाइनर है, सब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, दे आर वर्किंग टुवर्ड सर्कुलरिटी कि जो भी वेस्ट नहीं हुए उसके एंड लाइफ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रोडक्ट बनता है उसका कहाँ यूज होता है, रीयूज होता है, रिसाइकल, अपसाइकल, एवरीथिंग। नाउ एवरीवन इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस, फ्रॉम डिजाइनर टू मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। डेफिनेटली, ये बहुत सही बात कही है आपने। और आप सबकी बातें सुन के मुझे वो जो रिक्वायरमेंट का शिफ्ट दिख रहा है टुवर्ड्स द फ्यूचर फैशन इंडस्ट्री, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे वो कपड़े हो, काफी बड़ा शिफ्ट है। मतलब मैं खुद देख रही हूँ, मेरी अपने फ्रेंड के भी कुछ ब्रांड स्टार्ट किए जो ऑर्गेनिक कपड़े ही पहनना चाहते हैं। उनके कपड़े काफी मतलब पतौड़ी तक जाते हैं, तो हमें अंदर से पता चलता है कि इवन दे आर नॉट गोइंग आफ्टर ब्रांड, वो लोग भी ऑर्गेनिक कपड़े चाहते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। और बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि अब एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाना चाहिए। एंड उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों में। सुरुचि, आई थिंक एक आप ब्रांड के बारे में एक थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो प्लीज ये सेम क्वेश्चन आपका। जैसा श्वेता भाभी नीचे ने बोला कि आजकल वही चाहिए होता है कि अपसाइकिल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, अफोर्डेबल कॉस्ट हो, तो ब्रांड का इसके लिए मैं समझती हूँ कि मेरे इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता, बिकॉज लोग ये चाहते हैं कि डिजाइन सेम हो जाए, कॉस्ट भी कम हो, और हम ये इको फ्रेंडली भी हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, और फैशन भी हो जाए, फैशन भी हो जाए। और बस ये कहते हैं ना कि सोने से कम नहीं हो, खो जाए तो गम नहीं हो, बस यही चाहते हैं। बहुत ही प्यारी बात कही है आपने। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग दिखाना चाहते हैं कि वो अमीर है, वो गुची अरमानी का टैग लगाए पहनते हैं। कहीं मीम पढ़ा था या कुछ, और स्टीव जॉब्स ने और जो बहुत बड़े बड़े, उनका कहीं लोगो भी नहीं है, तो वो उन्होंने जस्ट पहना है, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, ऑर्गेनिक भी है, बट कहीं ब्रांड नहीं शो हो रहा है कि कोई ब्रांड है। तो अभी जो आप लोगों से बात करके मुझे अपने फ्यूचर पता चल रहा है फैशन टुवर्ड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारे ये आखिरी के 10 मिनट में इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। और बहुत सारे लोग आप लोगों को लाइव देख रहे हैं, आप सबकी स्टोरीज सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अवेयरनेस जो हमने डिस्कशन की, आई एम श्योर और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और लोग एक बार हम जब कोई बात कहते हैं या एक किसी तक पहुंचाते हैं, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उस बारे में कि क्या ये सही है या गलत है। तो बस ये आखिरी के 10 मिनट में चाहती हूँ कि एक आप वुमेन्स डे के इस खूबसूरत अवसर पर एक छोटे छोटे मैसेजेस, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी, आई एम रियली सॉरी मैं आपको ये कहना पड़ रहा है, आई वुड लव कि आप इतना टाइम हमें दे। तो एक छोटा सा मैसेज सबका वुमेन्स डे के लिए, आप बाहर हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। तन्वी, आपसे शुरू करता है। ऑलवेज मी। यस, इट्स ऑलवेज यू। आप मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले हो, इसीलिए आपसे शुरू करते हैं। Well, for me, fashion is all about how you carry yourself, how you represent yourself, and how confident you are in what you are wearing. It's not about the expensive stuff. It's not about anything else. It's just your confidence and how you. That's beautiful. That's really beautiful. For everyone. I'm sure everyone would love to follow that and look beautiful, feel beautiful and confident and be eco-friendly as well. And हमें legacy में भी हमें अपनी ज्वेलरी भी मिलती रहे, तो हमें ये भी मिले और वो भी मिले।
सुरुचि, क्या कहना चाहते हैं आप अपने दर्शकों के लिए? एक छोटा सा मैसेज वुमेन्स डे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चैलेंजेस तो हर किसी के पास रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करके और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए, और बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वी विल मेक मोर ब्यूटीफुल। That's really sweet of you. बहुत ही प्यारा मैसेज था. I cannot see others. सेजल, सॉरी मुझे स्क्रीन. मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि एवरी वुमन इज अ स्पेशल, हर एक वुमन स्पेशल है, और बिजनेस है उसमें आप अगर कुछ लॉस करते हैं, जैसे भाविनी जी ने बोला कि हस्बैंड ने बोला कि लाखना 12,000 करी ऐसे वो क्या है, वो अपने लाइफ में एक एक्सपीरियंस है, उसको ऐसे लीजिए, सीखना है जिसको बोलते हैं. अगर लॉस के बगैर और उसके बगैर आपको कभी बिजनेस में सीखना नहीं मिलता है, तो मैं यही कहूंगी अपने काम में 100% दीजिए, और हर एक लेडीज कभी अपने शौक मत मारिए, खाने का, डांस करने का, जो भी है, जब भी टाइम मिलता है आप करो ऐसे. क्योंकि मैं खुद भी रील्स बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट है, उनके साथ भी एक्टिंग करती हूँ, ऐसा प्रोफेशनल नहीं मगर ऐसे यूट्यूब चैनल में. तो एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी टाइम बिजनेस एंड ब्ला ब्ला नॉट इम्पोर्टेंट. आप अपने खुद के खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए भी टाइम निकालिए. ब्यूटीफुल मैसेज. सिर्फ काम 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 सब कुछ नहीं होता है. जब खाने का मन हो, जो पहनने का मन हो, जो मन हो, जियो, अभी जियो. Someone very well said that a busy person has time for everything. Yes. दिव्या, एक छोटा सा मैसेज सबके लिए. I think we are a mother, we are a wife, a daughter, a friend, but by the end of the day, we should be our own biggest priority. Means सब कुछ करने के बाद भी, if there is something that brings a smile on our face, means it's just like catching over for a coffee with a friend, या अपने मन का TV show देख लिया, कुछ भी. And I seriously feel that money doesn't bring class. Your personality, your inner beauty, you are your own brand. So आप कुछ भी पहनो ना पहनो, आप कुछ भी flaunt करो ना करो, what's inside you, how you're presenting yourself is what will make you stand out and shine. So happy Women's Day to each and every woman who is on the screen and who's listening to us. That be your own priority. That's most important. It's really beautiful message again. सब कुछ करो, but आप ऊपर से कुछ भी नहीं कर सकते. सब दिखावा कर भी लोगे, लेकिन अंदर की चीज कैसे छुपाओगे? So your personality, what you are from within, is what comes out. ये सारी चीजें तो हमें सिर्फ ऊपर से सजा देंगी, लेकिन जब तक अंदर से खूबसूरत नहीं हो. So every woman have to think about it. सिर्फ ऊपरी दिखावा कोई मतलब नहीं. Definitely हमारे शौक है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा मैसेज था. भाविनी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं आज वाओ वुमन ऑफ द वर्ल्ड को बताना चाहूंगी कि आप अपने सपनों के साकार करने के पीछे पड़ो. आपको ऊपर वाले ने हर एक वीमेंस को एक कला तो दी है, बस खाली उसको पहचाने और आगे बढ़ो और ये दुनिया को छू लो. बस you enjoy your life and you will have I have no words about that things, but you can achieve whatever you can, you know. Thank you. बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस थे आप सबकी तरफ से. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच व्यापार जगत. और मैं भी आज पहली बार इस स्क्रीन पे आई हूँ. आई रियली वांट टू थैंक्स कावेरी. प्रिटी मच एवरीथिंग के मन से मैंने शुरुआत की थी लाइव आना. एक्चुअली मैं होस्ट कर लेती हूँ, लेकिन लाइव मैं शुरू से थोड़ा डरती हूँ, या आई डोंट नो, मतलब मुझे कनेक्ट फील नहीं हो रहा है ऐसा लगता था. लेकिन आज मैं आप लोगों से इतना कनेक्टेड फील कर रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है. ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने आपको कभी देखा नहीं या बात नहीं की है. तो थैंक यू सो मच. सबसे बड़ा थैंक यू सर प्रवीण सर के लिए ये चांस मुझे दिया. मैं आई होप आई खरी उतर पाई मैं थोड़ी आपके. Definitely, Shweta. Thank you very much. You are definitely a natural, and all of us have enjoyed this panel discussion. Thank you very much, panelists, who found out time, so much of time, to tell about their journeys. और हर एक की इंडिविजुअल जर्नी, हर एक की इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सुन के आई एम श्योर हमने बहुत सारा सीखा है.
So thank you very much for sparing time. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Happy Women's Day. Dear viewers, Thank you. Happy Women's Thank Day. you. Happy viewers. Thank you very much, मैं एक बात Kaveri कहना and चाहूंगी Dr. यहाँ पे Praveen. यहाँ प्रवीण सर कि देखिए हर वुमेन के पीछे एक लीडिंग उसके मैन होते हैं। तो अभी जो हम इस प्लेटफॉर्म पे अभी हम आज अपनी स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिर्फ आपके कारण ही है, बिकॉज यू आर लीडिंग अस एंड बिकॉज हमारी स्टोरी के लिए आप हमको लीड कर रहे हैं यहाँ पे। So in that case, thanks to vyapaarjagat.com, the entire team of vyapaarjagat. Yeah, sure, sir. Yeah. Thank you so much. much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you viewers. हम आपकी कमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। आप अपनी कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस सारे YouTube लाइव में जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टैग अस, मेरा व्यापार मेरी पहचान। We are awaiting the next session in just a few seconds. Okay, thank you. सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। Thank you, Ruchi. House is a dream for everyone. I was looking for my house from a very long time, and finally when I was having a difficulty in getting a loan for it. Because I am a resident and my husband is non-resident. So we were looking for a joint eligibility because we wanted a little bigger loan. So we tried doing with many of the banks, but still there was some issue. Then one of my close associates, he basically introduced me to Ruchi Agrawal from Loan Unit. And since Ruchi knows the industry very well and she has a very good relationship with all the banks, she started working on my assignments, and she took all the documents, mine and my husband's investment return, salary slip, house documents and everything. And she started processing on it. And within 15 days, we got the eligibility and we got the disbursement on the due date when builder was asking for it. So all the process went so smooth and we were so happy at the end of it that we got everything on time. Thank you so much, Ruchi. Hi, I'm Basudha Srivastava, founder and COO of Employee Services. We are a young and bespoke technology company, and we are automating the employee life cycle management system. I'm really happy to be part of vyapaarjagat, and I'm really happy to see that a lot of people are coming up and they are achieving their dreams to be part of this big ecosystem of entrepreneurship. It takes a lot of passion, it takes a lot of courage to leave their salaried job and start working for the dreams that you have and the passion that you have for. And it's a time for all of you to be recognized for the hard work, for the passion, and for
the nights and the day that you have spent to achieve your dreams, and it's time really to be recognized around the world. Thank you so much for your participation, and all the best to you. Hello, everyone. After this super happening discussion on fashion, we have one more session to go on cybersecurity. To head this session, or rather moderate this session, we have a very beautiful person here. Her name is Sonali. Sonali is an advocate by profession. She has 8+ years of experience in the field of HR, brand management, and sexual harassment matters at individual and corporate level, with various segment of industries and individuals all at heads. Post that, she, along with a friend, had decided and started a service company to serve the various organizations by providing the best and effective solution. In short, or rather in detail, Sonali is an advocate, a motivator, a writer, a legal advisor, and a social activist. I'm super impressed, Sonali. All over to you. Thank you, Rasi ma'am. Thank you so much for the wonderful introduction. And thank you, vyapaarjagat, for providing such an opportunity where we can share our views. And rather, I would say कि these are the topics which are very much needed. आज के time में topics की in social awareness topics की बहुत ज़्यादा importance है. जबकि social media का usage हमारा it is the 90% usage हमारा social media का हो चुका है. And secondly, social media हम use करते हैं. We are not very much aware कि किस तरीके से होता है, क्या करना चाहिए, what are the do's and don'ts. तो ऐसे टाइम में giving it to the public and raising an awareness for the public is very much important. So thank you so much, vyapaarjagat, for this opportunity. Over to you, Raji. Ma'am, I would request you to please introduce Mr. Viral here, and you can carry on with the session then. Okay. Thank you so much. So I would introduce my co-speaker with me, Mr. Viral Parmar. He's a cyber security expert. And जैसा कि हम जनरली सुनते हैं कि जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ो और बुक्स से दोस्ती करो तो आप कभी अकेले नहीं रहोगे, या you'll have a best friend for life. So Mr. Viral Parmar is a live example for that. उन्होंने साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉज एंड साइबर क्राइम के जो डिटेल्स होते हैं पढ़ के, इन्वेस्टिगेट करके एंड डिटेल में स्टडी करके वो उस चीज के एक्सपर्ट बने हैं. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर विरल परमार एंड आई वांट हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ मोर बिकॉज वो ज्यादा बेस्ट बता सकता है कि व्हाट ऑल ही हैज गॉन थ्रू टू गेन एन एक्सपर्ट इन दिस रीजन. So thank you, Sonali ma'am, and thank you, Rashi, and thank you, Corinne sir, for inviting me here in this event. And ऐसा जैसे Sonali ma'am ने कहा, so I'm actually a cybersecurity researcher by profession, and I'm a cybersecurity enthusiast. I always want to learn something new in domain of cybersecurity. So I'm a kind of an we can say have a knowledgeable person in domain of cyber law, in cybercrime investigation, digital forensics, and privacy policies and other things. And I'm running a foundation called ComExpo Cybersecurity Foundation, which is a non-profit organization. And under that, we have running a lot of cyber awareness campaign to aware people about privacy and security. And till now, from we started this initiative in 2015 until now, we have reached more than 10 lakh people and aware them about privacy and security and basic cyber crimes and all. Thank you so much, Viral sir. So I think let us get deep into what basically cyber security. जैसे ही हम साइबर सिक्योरिटी का नाम सुनते हैं, 2-3 चीजें इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्लिक करती है. पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है इंटरनेट फ्रॉड्स. सो एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, कितने तरीके के साइबर क्राइम्स जनरली हम फेस करते हैं? So cyber security is a whole different domain. जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं या फ्रॉड्स की, ये सब these are like type of cyber crimes, right? So बहुत तरह के cyber crimes होते हैं. लेटेस्ट जो अभी चल रहे हैं mostly the financial frauds, right? जो हमें बहुत इफेक्ट करते हैं. अलग अलग केसेस हमने देखे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, जहाँ से उनको जैसे कि बैंक से कॉल आया कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सम रीजन. एंड अगर आपको आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अनब्लॉक करवाना है तो you have to share your few details with us to verify your identity and as in KYC and all. And when you do that, then आपको बोलते हैं कि एक वेरिफिकेशन कोड आया है और आपका अकाउंट अनलॉक हो गया है.
तो प्लीज शेयर दिस वेरिफिकेशन कोड विद अस, एंड व्हेन यू डू दैट, जब आप ऐसा करते हैं तब एक्चुअली आपके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं और वो हैकर के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। भी लेटेस्ट एक और केस बताऊं तो जैसे कि फोन आता है आपको, बोलता है, जैसे कि एक एग्जांपल है, एक किसी के साथ हुआ था, उन्होंने हमें पूछा था कि भाई क्या किया जाए इस सिनेरियो के अंदर। सो बिजनेस के साथ बहुत होते हैं ये फ्रॉड्स ऐसे। जैसे कि एक फोटोग्राफर है, वडोदरा का केस, एक बंदा है फोटोग्राफर है, उसको फोन आया कि मुझे आपके पास से फोटोग्राफी करवानी है, एंड दिस गाय वाज लाइक ओके कि हम लोग करेंगे फोटोशूट, कोई इशू नहीं है, बट द चार्जेस विल बी 10,000 रुपीज एंड यू हैव टू पे 5,000 रुपीज एडवांस। सो उसने कहा कि ठीक है, मैं एडवांस देने को रेडी हूँ, फोटोग्राफर सामने वाले ने, बंदे ने कहा। एंड दिस पर्सन वाज एक्चुअली यूजिंग एन फेक आइडेंटिटी। वो कह रहा था, जो पर्सन था वो कह रहा था कि भाई मैं CISF में हूँ, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ और मैं डिफेंस में हूँ, राइट। एंड ये वाला सिनेरियो टू गेट अ ट्रस्ट, एंड देन दिस गाय वाज सेइंग के बिकॉज आई एम इन डिफेंस, सो मैं डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मेरा एक फ्रेंड है वो जो गूगल पे के थ्रू करेगा। एंड देन सो उसने एक रिक्वेस्ट भेजा, पैसे भेजे एक्चुअली, लेकिन जब देखा, जब बंदे ने एक्सेप्ट किया, फोटोग्राफर ने एक्सेप्ट किया, सो पैसे आने की जगह चले गए। सो जो 5,000 रुपए आने थे वो उसकी जगह 15,000 अकाउंट में से चले गए, जो वाया गूगल पे, उनसे फ्रॉड हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आजकल में हाल में हो रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे देखे तो केसेस हमने देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे साइबर हरासमेंट, साइबर बुलिंग के बहुत केसेस आ रहे हैं। सोनाली मैम प्लीज आप थोड़ा बताइए साइबर हरासमेंट क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, और भी कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे साइबर स्टॉकिंग एंड ऑल, व्हाट इज दिस, हाउ इट हैपेंस एंड ऑल। सर इसी में आपके पॉइंट पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो कॉमन क्राइम्स की आप बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड क्राइम इन दीज डेज इज OLX। OLX पे जनरली आप कोई प्रोडक्ट की डिटेल डालते हो, आपको सेल करना है, एंड आपको इंस्टेंटली एक मैसेज आता है, समवन कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जगाता है कि नहीं मुझे आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदना है, एंड देन फिर आप उसको डिटेल्स भेजते हो, फोटोग्राफ्स और शेयर करते हो, कभी ये होता है कभी ये नहीं भी होता है, एंड फिर वो पर्सन आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हो इस लालच में कि चलो ठीक है, मैं प्रोडक्ट इज गेटिंग सोल्ड, एंड आप जो रेट देते हो उस रेट पे वो एग्री हो जाते हैं, एंड अपने आप को वो रिप्रेजेंट कराते हैं एज इंडियन आर्मी पर्सन। तो इंडियन आर्मी जैसे रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो यूटिलाइज करते हैं, एंड फिर आपसे कहते हैं कि ठीक है हम आपके रेट पे रेडी हैं, और कल मेरा पर्सन आके आपसे प्रोडक्ट खरीद जाएगा, मैं आज आपको पेमेंट कर देता हूँ या आपको टोकन भेज देता हूँ, और ये कह के आपसे गूगल पे नंबर मांगा जाता है, एंड फिर आगे वही होता है कि पेमेंट आने की जगह पे पेमेंट चला जाता है आपके अकाउंट से। एंड इन केस कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोगों को पता लग जाता है कि नहीं शायद फ्रॉड हो रहा है, या गूगल पे जब ट्रांजैक्शन आता है तो एक्सेप्ट की जगह जब डिक्लाइन करते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, एंड काफी ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज में फिर आपसे बात करने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है साइबर क्राइम के ये में, राइट। विशाल सर जैसे विरल सर जैसे आपने कहा कि जो कीवर्ड्स हैं, तो 3 तरह की चीजें हैं साइबर लॉ में, वन इज साइबर स्टॉकिंग, सेकंड इज साइबर हैरेसमेंट, एंड द थर्ड वन इज साइबर बुलिंग। ये तीनों में एक्चुअली देखने जाए तो बहुत ही थिन लाइन, जैसे हेयर लाइन फ्रैक्चर हम कहते हैं, तो हेयर लाइन जितना डिफरेंस है। साइबर स्टॉकिंग इज बेसिकली जैसे आप सड़क पे चलते हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, उसे हम कहते हैं स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग एग्जैक्टली वही है, बस फिजिकली आपके पीछे कोई नहीं चल रहा है, ऑनलाइन आपके पीछे पर्सन कोई फॉलो करता है, आपका हर एक्टिविटी जो भी आप पोस्ट करते हैं, अपलोड्स करते हैं, आपने कोई चेक इन किया है, आप कोई ट्रांजैक्शन अपलोड करते हैं, हर चीज आपका फॉलो होता है, बेसिकली आपकी पूरी प्राइवेसी हैम्पर करने की कोशिश की जाती है। So that is cyber stalking. Cyber harassment and cyber bullying is the same thing basically, जहाँ पे आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को थ्रेटन किया जाता है, आपको डिफेम करने की कोशिश की जाती है, आपके नाम पे फेक प्रोफाइल्स क्रिएट किया जाते हैं, या फिर आपके नाम पे कोई अलग प्रोफाइल क्रिएट करके आपके दोस्तों को थ्रेटन करने की कोशिश की जाती है। सो बेसिकली दिस इज साइबर हैरेसमेंट। साइबर बुलिंग तब कहा जाता है जब ये सारा जो क्रिमिनल एक्टिविटी है साइबर का, वो अंडर 18 के साथ हो रहा हो। जैसे ही वो पर्सन 18 की एज क्रॉस कर जाते हैं, देन इट इज साइबर हैरेसमेंट। सो साइबर बुलिंग वही है जब टीनेज हैरेसमेंट जो होता है साइबर पे, दैट इज साइबर बुलिंग, एंड साइबर हैरेसमेंट जो एडल्ट हैरेसमेंट रहता है उसे हम साइबर हैरेसमेंट कहते हैं। सो ये 3 चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉ बहुत टाइम से आया हुआ है हमारी कंट्री में, बहुत टाइम से इसका एनैक्टमेंट चल रहा है, बट लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं कि ऐसा भी कुछ बनाया गया है जिस जो हमारी सेफ्टी के लिए बना है। इट्स रियली सैड बोले या शायद लेट अवेयरनेस की बात करें, इंडिया के अंदर साइबर क्राइम का पहला जो कंप्लेन है वो 2001 में रजिस्टर हुआ,
एंड जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको डेट्स देख सकते हैं कि साइबर रिलेटेड एक्ट्स, उसके रूल्स, उसके नोटिफिकेशंस, उसके पनिशमेंट्स कितने पहले से आए हुए हैं। इनफैक्ट जब से हम इंटरनेट की दुनिया में आए हैं, जब से हम एक स्टैंडर्डाइज लेवल पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तब से इसके रिलेटेड एक्ट्स और रूल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। पर 2001 मतलब ऑलमोस्ट आप एक सेकंड एरा क्रॉस कर चुके हो, तब आप पहली कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि उसके पहले क्राइम्स नहीं होते थे, बट लोगों ने उसके प्रति जो जागरूकता है, उसके प्रति जो चीजें हैं, वो इसके बाद ही जताना शुरू किया है। सो विरल सर, बेसिकली अभी जैसे कोविड के टाइम की हम बात करें तो कोविड में डिजिटल प्रेजेंस हर एक इंडिविजुअल की बढ़ गई है। चाहे स्कूल के बच्चों की बात करें, चाहे ऑफिस पीपल की बात करें, हाउस वाइफ की बात करें, हर किसी की डिजिटल प्रेजेंस बढ़ गई है। सो डिजिटल प्रेजेंस के साथ साइबर क्राइम में कितना बढ़ावा आया है या कितना घटा हुआ है? So yeah, before that, as you have mentioned a lot of things about cyber harassment and bullying and all, so उसमें मैं एक दो केस स्टडी शेयर करना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले ऐसा कुछ भी होता है, and it's a very serious kind of a thing. So अगर हम लोग साइबर स्टॉकिंग की बात करें, it's very normal thing, right? हमको लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन एक केस बताना चाहूंगा मैं। एक मुंबई का केस है। एक लड़की है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी वो करती है वो सब कुछ सोशल मीडिया पे डालती है। And she was posting that, you know, she had planning for trip to Manali and all, and then वो मनाली पहुंची भी, and उसके 2 दिन बाद उसका वो किडनैप हो गई, right? How that happened? So जो उसके स्टॉकर्स है, बहुत सारे लड़के होंगे जो उसको स्टॉक करते हैं, उसमें से कोई एक लड़का था जो उसको स्टॉक करता था। He was like कि मैं I like her and everything, and then वो उसके पीछे पीछे वो मनाली पहुंचा, and this guy knows almost everything about this girl because this girl posts everything. ये उसके likes, dislikes, उसके उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या खाती है, क्या नहीं खाती, सब कुछ। So this guy knows almost everything. So using that personal information, this guy actually became a friend to this girl. ठीक है, वो लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, and then उसको वहां से किडनैप कर लिया मनाली से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, साइबर हरासमेंट के, साइबर बुलिंग के, साइबर स्टॉकिंग के, जो बहुत ही खराब तरीके का टर्न लेते हैं, राइट? इसलिए जैसा मैम ने कहा कि ऐसा साइबर हरासमेंट या बुलिंग होता है, ध्यान रखना है, और इसके बहुत सारे लॉज भी हैं। और अगर आप ऐसे विक्टिम बनते हैं तो प्लीज नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कराएं, या फिर एटलीस्ट अवेयर योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें उनके साथ कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है, which is very important, crucial. And yes, the question मैम asked that during the COVID-19 जो COVID-19 लॉकडाउन था उसके दौरान बहुत सारे crimes बढ़े हैं, number of crimes were actually increased. According to the FBI, around 500% of cybercrime has been increased across the world, and even according to the 13, that is government of India's initiative. So वहाँ उन्होंने भी कहा कि around 300% cybercrime increase हुआ, वो हमें वो देखने को मिला, even cyber attacks as well. So now during the COVID-19 बहुत सारे केसेस हुए साइबर क्राइम के, साइबर फ्रॉड्स के, साइबर अटैक्स के, और इसमें खास करके अगर हम लोग बात करें COVID-19 का जो इन्फ्लुएंस का यूज हुआ, उसमें से एक केस है कि ड्यूरिंग द COVID-19 बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, राइट? लोग जॉब ढूंढ रहे कि भाई जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो कुछ फ्रॉडस्टर्स ने, कुछ स्कैमर्स ने क्या किया कि उसका फायदा उठा के जिन लोगों ने अप्लाई किया था, रिज्यूमे अपलोड किए थे, जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उनको फोन किया कि भाई आपका ना जॉब कंफर्म हो गया है, आपको जॉब मिल गई है, जिस आपका एक फाइनल इंटरव्यू बाकी है, ये उसके लिए आपको कुछ अराउंड 5,500 रुपीज समथिंग कुछ पे करना पड़ेगा, जस्ट टू फाइनलाइज द इंटरव्यू एंड ऑल। सो जब वो पैसे देने गए तो एक्चुअली 500 की जगह पे 5,000 रुपीज उनके अकाउंट से कट गए। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। इवन हमने ये भी केस देखे हैं जहाँ पे they took people taken benefit of this scenario, जहाँ पर उन्होंने फेक कंपनीज रजिस्टर की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम लोग है ना ये मास्क बना रहे हैं या सैनिटाइजर बना रहे हैं और प्रोडक्ट में मार्केट में बेचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड है, so they can obviously gonna get some money or make some money out of it, right? So people actually invested in this company, this fake companies, and then वो पैसे लेके भाग गए। एक तो बहुत ही फनी इंसिडेंट है, किसी बंदे ने, जैसे आपने हमने कहा OLX पे कुछ भी होता है, राइट? OLX है, सो एक बंदे ने लिटरली $4 बिलियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बेचने को डाल दी OLX पे, क्या आप खरीद सकते हो? सो इट्स फनी, बट जो सब सोचो लोग क्या सोच रहे हैं, इसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, राइट? और इवन हमने ये भी कुछ केसेस देखे जहां पर फोन है, राइट? तो हम लोग क्या फोन एडिक्टिव हो गए हैं और सब कुछ हमको फोन में चाहिए। तो मार्केट में ऐसे मैसेजेस, ऐसी वेबसाइट पे ऐसे नोटिफिकेशन या एड्स, या फिर हमारे फ्रेंड्स ही हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, एंड अगर कोई भी इंसान जिसको कोरोना वायरस या कोविड पॉजिटिव है, सो आपके आसपास घूमेगा तो आपका फोन अलर्ट देगा आपको और वो बताएगा कि आसपास किसी को कोरोना है तो यहाँ से भागो।
So technically that is not possible. It's a fake app. So usually these apps contain malware, right? इसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में वायरस भी कहते हैं, बट इट्स अ malware जो क्या करते हैं, अगर आप ये malware आपके फोन में डालते हो, ये एप्लीकेशन आपके फोन में डालते हो, तो ये एप्लीकेशन आपके फोन का सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब कुछ हैकर तक पहुंचाता है। तो ये सब चीजें भी हो सकती है और होती रही है और हुई है, राइट। सो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हमें कोविड-19 के दौरान। मैम आपको कुछ ऐड करना है इसमें? सर कोविड-19 का तो नहीं है, बट एक छोटा सा इंसिडेंट मैं भी ऐड करूंगी। इंसिडेंट नहीं, एक्चुअली इट इज एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी था। एक आई थिंक आजकल यंगस्टर्स इतने ज्यादा यूट्यूब से एंड गूगल से ऑब्सेस्ड है कि आप कोई भी चीज अगर उन्हें सिखाना चाहो तो वो गूगल यूट्यूब पे पहले उसको सर्च करके पूरी तैयारी कर लेते हैं। सो द गाय वाज हार्डली 16 साल का लड़का था। उसने हैकिंग सीखी थी अलग अलग साइट्स पे जाके, यूट्यूब वगैरह से, बहुत सारे नंबर ऑफ सोर्सेस से उसने हैकिंग सीखी थी। सो ही हैक द एसबीआई सर्वर, एसबीआई सर्वर हैक किया था अपने रीजन का। एंड उसने एक पता नहीं सॉफ्टवेयर बनाया था कि बहुत ज्यादा डिटेल इसकी हाईलाइट भी नहीं की गई थी। उसने जितने भी अकाउंट्स हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच में, सबके अकाउंट से 1 पैसा एवरीडे डिडक्ट होता था और उसके अकाउंट में आ जाता था। आप सोचो 1 पैसा आपके अकाउंट से जाता है तो हमें पता भी नहीं लगता है, या 100-200 रुपए तक भी हमें बहुत बार आइडिया नहीं लगता है कि कहाँ गए, जब तक उसका एक्चुअल कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिला। और आज की डेट में तो चलो ऑनलाइन सब कुछ दिखता है तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, बट पहले तो मेजरली लोग पासबुक पे ही चलते थे। सो 1 पैसा हर दिन आपके अकाउंट से डेबिट होके उसके अकाउंट में चला जाता था। उसके अकाउंट में तो वो अमाउंट बहुत ज्यादा ही होगा। ये चीज पकड़ में आई जब एक सीनियर लेडी, शी वेंट टू दी ब्रांच कि मैं एटीएम से पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करी पर मेरा अकाउंट एम्प्टी दिखा रहा है। एंड कुछ 1000-1500 रुपए उनके अकाउंट में थे। तो बैंक वाले ने उनका पासबुक अपडेट किया। जब पासबुक अपडेट किया तो एक एक पैसा करके उन्हें पूरा एंट्री लाइन से मिला कि इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। फिर जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन वो सब कुछ हुआ तो पता चला कि उस ब्रांच के हर इंसान के अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो रहा था। तो फिर काफी साइबर क्राइम टीम भी उसमें काफी ज्यादा लगी रही कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्वर कैसे कोई हैक कर सकता है। एंड जब उसको पकड़ा, वो लड़का जब पकड़ा गया, वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड था कि जो कोई नहीं कर पाया वो मैंने करके दिखाया हुआ है। सो ठीक है, आप यूट्यूब से जब चीजें सीखते हो तो आप पॉजिटिव चीजें सीखो। अगर आप हैकिंग सीख रहे हो तो आप अपने जो रीजनल गवर्नमेंट है, पुलिस स्टेशन से, उनकी हेल्प कर सकते हो एक्चुअल चीजें करने में। बट लोग मेजरली चीजें सीख कर गलत जगह में अपना दिमाग लगाते हैं। सो सीखना is good, but negative सीखना is very dangerous. So this was one of the true incident which is very shocking. So इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा राइट कि सीखना है तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है। सो अगर कोई भी हमें अभी सुन रहा है एंड अगर आपको नॉलेज है इस चीज की या आप सीख रहे हैं और इसको आपको पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट करना है, सो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स, लोकल पुलिस स्टेशन, इन सबको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत हमेशा रहती है। तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके या नियरेस्ट साइबर सेल में जाके कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू वॉलंटियर, और मैं चाहता हूं कि आपकी मैं मदद करूं। अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे बुला सकते हैं, बता सकते हैं। आई श्योरली वुड लाइक टू हेल्प देम। सो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं क्या है, कैसे करना है, या वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, सो यू कैन रीच आउट टू मी लेटर, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। ऑल्सो ऐसा ही कुछ मैंने एक और मैं केस शेयर करना चाहूंगा। ड्यूरिंग कोविड-19 ऐसे भी कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर आपको एक फोन आता है pretending to be an गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड कहते हैं कि भाई आपको आपने कोविड का ये जो ये है मेडिसिन है राइट, आपने शॉट लिया है राइट, वैक्सीन शॉट लिया है, तो आपके तो नहीं लिया मैंने, ओके फाइन, तो आपको लेना है, कौन सी तारीख को लेना है, मैं आपका एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ राइट, जो ऐप से होता है राइट। सो अब वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए बुक कर देंगे, कौन सा टाइम आप बता दीजिए, मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ, एंड to confirm your appointment you have to pay us 500 rupees and obviously you have to require to share this आधार कार्ड डिटेल्स, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड डिटेल्स देना है पहले, तो आप देते हो, उसके बाद आप 500 रुपए भी पे करते हो, ठीक है। सो एक्चुअली आपका अपॉइंटमेंट कोई बुक नहीं हुआ है, वो 500 रुपए फ्रॉड में एक्चुअली चले गए और आपका जो आपका पर्सनल डिटेल्स है आधार कार्ड का वो भी आपने दे दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को हमें रिसेंटली मिले हैं। मैम अभी आपने एक वर्ड यूज किया डिफेमेशन and fake accounts and all, so वो क्या है, थोड़ा आप बताएंगे? डिफेमेशन सर, सिंपल डिफेमेशन का मीनिंग है कि आपके नाम, आपका जो फेम है, आपका जो नाम है, उसको खराब करने की कोशिश की जाए। सो अभी अगर आप मोस्टली आई गेस जितने भी हमारे व्यूअर्स है 90% सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मेजरली फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी पे एक्टिव है।
अभी रिसेंटली हम काफी सारा मैसेज फ्लोट होते हुए देख रहे फेसबुक पे कि किसी ने मेरे नाम पे एक फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, उस अकाउंट से मेरे दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, उनसे वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है एंड आपके नाम पे वो आपके दोस्तों से पैसे मांग रहे हैं। सो दैट इज वन एक्सेप्ट ऑफ डिफेमेशन। उसके अलावा आपके नाम पे गलत मैसेजेस पास करना, या मान लीजिए आपका किसी के साथ लड़ाई हो गया है, वो इंसान टेक्स ऑन टू सोशल मीडिया की ये ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये पर्सन चोर है, चीटर है, फ्रॉड है, बिना फैक्ट के, बिना किसी एविडेंस के आप किसी इंसान का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज अ केस ऑफ डिफेमेशन। बहुत बार कॉलेज टीन्स ये चीज करते हैं कि कॉलेज में दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया और वो चले जाते हैं फेसबुक पे कि ये ऐसा है, ये चीटर है, ये लड़का बहुत गंदा है, ये इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये बहुत मेजरली यंगस्टर्स में पाया गया है। एंड डिफेमेशन अगर किसी ने मतलब मेजरली लोग इसको सीरियसली लेते हैं, किसी किसी कोई कोई मेंटली डिप्रेस हो जाता है, बहुत लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो डिफेमेशन इज अ वेरी हीनियस क्राइम एंड इसको भी इमीडिएटली रिपोर्ट किया जा सकता है, भले आपके दोस्तों ने किया हो या किसी ने रैंडम कमेंट पास किया हो, या आपने कोई पोस्ट किया, आपके पोस्ट पे किसी ने गलत कमेंट किया हुआ है विच इज ऑब्सीन, या आपके नाम को खराब करने की उसमें कोशिश की जा रही है, तो आप उसे भी इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हो। डिफेमेशन हर फॉर्म में होता है, चाहे फेक प्रोफाइल के तरीके से देखा जाए, आपके नाम पे कोई गलत कंटेंट लिखने की कोशिश की जाए। जनरली आज की डेट में आप देखोगे कोई भी सेलिब्रिटी आपको जब पसंद है, आप उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालोगे, बहुत सारी चीजें डालोगे, और जो सेलिब्रिटी आपको पसंद नहीं है आप उसके नाम पे रूड कंटेंट्स डालने की कोशिश करते हो। पॉलिटिशियंस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, हम ये जनरली करते हैं कि नहीं ये चोर है, ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत बार ये होता है। सो ये सारे डिफेमेशन के अंडर कवर होते हैं। एंड अगर इसमें आपके नाम पे किसी ने क्लेम कर दिया है, किसी ने कंप्लेन कर दी, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, वो सारी चीजें आप निपटाते निपटाते ही एक एक कमेंट आपको इतना महंगा पड़ जाएगा। सो जब भी आप किसी के बारे में गलत पनिशमेंट कंटेंट क्या है लिखते हैं, एंड कोई लॉज है तो वो क्या है? डिफेमेशन के सर आईपीसी के अंडर भी लॉज हैं, साइबर लॉ में तो है ही। सो दोनों के अंडर कवर होते हैं। एंड पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ आपका जो कंटेंट है उस पे। सो पनिशमेंट स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 5,000 रुपीज टू 3 साल की जेल। तो आपको पेनल्टी भी कुछ केसेस में ओनली पेनल्टी होती है, पेनल्टी एंड जेल भी होता है, या सिर्फ जेल भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट कंटेंट यू आर पोस्टिंग। सो जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, मेरा एडवाइस यही रहेगा हमारे व्यूअर्स को या जो भी इस कंटेंट को देखते हैं, कि आप सोशल मीडिया सेंसिवली यूज करें, यूज करें। आज की डेट में अगर आप किसी से कहते हो कि फेसबुक यूज करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दो, तो इट्स एज गुड एज उसके अपने कोई कीमती चीज आपने उससे मांग ली है। सो वी कैनॉट स्टॉप द यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप यूज करिए, बट सेंसिवली यूज करिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ यूज करिए। एंड जब भी आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि किस तरीके का कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो कंटेंट के चलते आप किसी मुसीबत में आ जाए, या आपके आपसे रिलेटेड कोई लोग मुसीबत में आ जाए। सो यूज सोशल मीडिया सेंसिटिव, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो विरल सर, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, कुछ स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स आप देना चाहेंगे सोशल मीडिया यूसेज के बारे में? सो अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टॉक टू अननोन पीपल ऑन इंटरनेट। जिनको आप नहीं जानते, जिनको नहीं पहचानते, तो उनसे पहली बात तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। और कर दे तो मतलब नहीं, पहली बात तो आप किस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया इज फॉर एक्चुअली पीपल हु नोज यू एंड उनको ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करना चाहते हो और जानना चाहते हो, उसके लिए है, राइट। लेकिन अननोन पर्सन से अटेंड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए नहीं है यूजुअली। द रीजन बिहाइंड दैट वाज सम अदर थिंग, बट नाउ वी आर डूइंग सच थिंग्स। हम लोग इस चीज के लिए यूज करते हैं। दूसरा ये कि कीप योर प्रोफाइल प्राइवेट एंड सिक्योर। So not a random person can actually see your profile. And अभी एक फीचर भी है जैसे सोशल मीडिया पे है, अलग अलग वेबसाइट्स पे, कि you can lock your profile. So please lock your profile, keep your profile private, and specifically आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, ये सब चीजें भी आप ब्लॉक रखें, राइट। जिसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के, जहां पर कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल चेक करता है, आपकी फोटो उठा लेगा, आपकी इंफॉर्मेशन उठा लेगा, और आपके ही नाम का फेक अकाउंट बना के आपकी ही फ्रेंड लिस्ट में से आपके फ्रेंड्स को फ्रेंड बनाएगा एंड उनसे पैसे मांगेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। उसके अलावा जब भी आप as ma'am mentioned, so whenever you go outside or do whatever you do, so never share your personal information there. Never share what you do and other things, right? आपकी लोकेशन शेयर ना करे, आपकी पर्सनल फोटो शेयर ना करे, एंड ऑलवेज थिंक बिफोर यू पोस्ट। जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, ऑलवेज थिंक अबाउट द रेपुटेशन, क्या हो सकता है, कैसे इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया यूज करते टाइम ये सब चीजों का मिनिमम आप ध्यान रखें।
Adding on to this, सोशल मीडिया यूसेज का ध्यान रखिए, बट इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी मेजर्स एंड एवरीथिंग, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ, कोई हरासमेंट एक्टिविटी हुई है, स्टॉकिंग हुआ है, या कोई भी एक्टिविटी, फ्रॉड एक्टिविटीज हो चुकी है या कुछ भी, इमीडिएटली उसे रिपोर्ट करिए, डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, इसमें आप जाके ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इन केस आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा आपको नहीं समझ आ रहा है, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसे रिपोर्ट करिए। दे विल डाइवर्ट इट टू द क्राइम सेल, टू द साइबर सेल। तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं कि मेरे आसपास साइबर सेल कहाँ है, कैसा है। इजीएस्ट तरीका है, आप उसको ऑनलाइन कंप्लेन करिए, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत है। इमीडिएटली आप उसको ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन दिक्कत आती है या आप ऑनलाइन कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर पा रहे हो, तो आपके जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां आप जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो विदाउट डिले। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज ऐसी होती है कि एक टाइम बाद इनका ट्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइदर हम बोलते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में कुछ भी डिलीट नहीं होता, बट उसको ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी आपको आपकी कंप्लेन का रेजोल्यूशन मिलेगा। So this is one thing I wanted to add. Yeah, adding to that, so अगर आपको पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, या वो बोलते हैं भाई साइबर सेल में जाओ, and you don't know where it is, so across India ये number is this number is there 155260, and now updated number is 1093। ठीक है, आप इस पे भी फोन करके आप साइबर क्राइम की कंप्लेन, ये स्पेसिफिकली साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी आप फोन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको एक कंप्लेन नंबर भी आएगा, एंड वो कहेंगे आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। और उसके अलावा आप 100 नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, एंड थोड़ी देर बाद ये कंप्लेन जब आप शेयर करते हैं डिटेल्स, थोड़ी देर बाद आपको साइबर पुलिस सेशन जो अहमदाबाद में है, अभी गुजरात में है, तो आपको साइबर अस्वस्थ पूरा में गुजरात पुलिस चला रही है, उसके अंडर में से आपको एक कॉल आएगा, जो अहमदाबाद साइबर सेल है वहां से कॉल आएगा, और आपसे आपकी सारी डिटेल्स नोट किया जाएगा, आपका जो कंप्लेन है उसको नोट किया जाएगा, और एक आपको कंप्लेन नंबर भी दिया जाएगा। एंड वो लोग जैसे ही आपके साथ साइबर क्राइम होता है, 24 घंटे के अंदर अगर आप रिपोर्ट कराते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं, या फिर एक्शन लिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, टाइम लगता है बाद में, जितना जल्दी हो सके जल्दी रिपोर्ट करा सकते हैं। So yeah, that's it from our side. So thank you Praveen sir, thank you Rashi ma'am, and thank you Sonali ma'am for accompanying this session. Thank you so much everyone. Thank you व्यापार जगत for having us here, and ऐसा एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करने के लिए जहाँ पे हम छोटी छोटी ऐसी बेसिक चीजें जिनकी हमें जरूरत होती है बट हमें नहीं पता होता है, हम उस पे जैसे जैसे कोई दिक्कत आती है उसके बाद हम गूगल करते हैं, हम सर्च करते हैं कि क्या करना चाहिए। सो ऐसी चीजें डे टू डे में हमें हमेशा जरूरत पड़ती ही रहती है। तो थैंक यू व्यापार जगत टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इवेंट। इवन अब तो गूगल भी हैकर्स हैक कर लेते हैं, जो पहली 4 लिंक होती है हमें लगता है कि वही हेल्पलाइन नंबर है, हम कॉल करते हैं, एक्चुअली हमारे साथ फ्रॉड होता है। सो उसका भी ध्यान रखें, ये चीजें बिल्कुल जरूरी है। Thank you very much. This was a super informative session. बहुत ही मजा आया. And as you rightly said, Sonali, that these are the basic things that we need to take care. जो हम we just easily ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई तो नाम से स्वीटी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने तो हाँ बोल दिया, नाम स्वीटी है ना, तो इतनी बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन we sometimes just completely forget about it. So thank you very much. It was an eye opener. And I'm sure via Praveen sir, we could get in touch with you guys and know these numbers that you had said, and about the websites also, because काफी सारे जनों को पता नहीं होता कि जाए और बोले किससे. We didn't know that we had to go to a police station or simply dial 100, for complaining. So, and I hope the complaints are registered properly. Since you are on the other side, you can, take ये के for sure कि register होती है and they action भी लिया जाता है. दो बैंक वाला इंसिडेंट बहुत फनी था, लेकिन एंड इंटेलिजेंट भी था कि एक पैसा से किसी को पता नहीं चलेगा, बट इट इज डेंजरस. एंड देन अगेन डेंजरस पार्ट वाज दैट ही वाज टेकिंग प्राइड इन डूइंग दैट चोरी. सो बट दैट्स इट. पता नहीं, लोग बहुत तरीके से बहुत टाइप्स के होते हैं एंड यू कांट रियली कंट्रोल. ऑल यू कैन कंट्रोल इज योर ओन सोशल मीडिया. So thank you, thanks a ton for this session. And Rajsi, let me tell you, I mean, मेरे साथ भी 2-3 चीज़ें हुई है, एंड जहाँ पे क्रेडिट कार्ड से कोई एडिशनल ट्रांजेक्शन हो जाता है, और आई थिंक 4 months बैक, आई थिंक विरल मैंने आपको कॉल किया था एट दैट टाइम. सो आई हैड ट्रांजेक्शन ऑफ 40,000 रुपीज़ फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड, राइट. So luckily, I got it back. So bank supported because it was
इट वाज अ वेरी प्रॉम्प्ट, जब मुझे मैसेज आया सो आई फाउंड कि अच्छा किसने ट्रांजेक्शन किया, राइट. सो बट ऐसा होता है. दूसरा माय सोशल मीडिया वाज आल्सो हैक्ड, right? So that also happens, once you start doing more activities on social media and चीज़ें, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है. दूसरा सबसे मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है आज की डेट पे, कि जहाँ पे हमें पता नहीं होता है बट हमारे बच्चे जो है वो कोई ना कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई ना कोई गेम डाउनलोड कर लेते हैं, और अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर गेम लॉट ऑफ मालवेयर और सारी चीज़ें जो है वो आपके मोबाइल में आ जाती है. दैट इज़ नॉट ओनली thieving your data, but contacts and सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से लीक होती है. तो that is also something I think everybody should take care, कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है. And certainly this session is as Rajsi said, it is really eye opener for a lot of people, and I'm sure this will continuously helping a lot of people through vyapaarjagat TV, because we are going to keep this particular session there forever. And yeah, so thank you so much Sonali and Viral for joining on a very short notice, and it was wonderful session. Thank you so much. Thank you for having us, sir. Thank you so much. Thank you all Thank the you for viewers who inviting. are watching us live. Do not forget to subscribe vyapaarjagat TV, and do not forget to post your comments right away. Your questions also, we might answer you back in some time, because now real time to ho nahi raha, ye last session hai, so we will answer you back. But do not forget to put the hashtag Mera Vyapar Meri Pehchan. Thank you everyone. कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम. जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम. मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान. हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान. व्यापार जगत. These super helpful sessions, I am sure कि बहुत सारों ने डिसाइड कर लिया कि अब तो जर्नी शुरू करनी है, शुरू ही नहीं करनी, भगानी है आगे. Everybody had one thing: persistence, consistency, never give up, है ना. लेकिन अभी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बाकी है ना. तो क्या बाकी है? एनी गेसेस? आप डालिए YouTube में कमेंट. अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो अब भी डालिए YouTube में कमेंट कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं. आई एम श्योर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग. और द नॉमिनीज और पार्टिसिपेंट्स, हमने डिसाइड किया कि हम वो वर्ड्स यूज ही नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे विनर्स, बिकॉज यहाँ पे सारे विनर्स हैं. हम अपनी जगह हम खुद विनर हैं, राइट? So without wasting any more minute, let us start knowing who the winners are. Who are the winners among the winners? So over to you, sir. Let's declare the winners now. I am waiting. इतना मजा आता है ना, मेरे पेट में भी बटरफ्लाइज हो रहे हैं, जबकि मैं पार्टिसिपेंट भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ. So yes, the first category of award, Young Business Woman of the Year. The finalists. The finalists are Megha
Meghna ji, Dr. Divya, and Urvi Vyas. We have 3 finalists for this category. And can't wait to declare the winner. Many congratulations to the winner, Meghna ji. Very, very many congratulations to you for winning Young Businesswoman of the Year. Congratulations, Meghna ji. Yes, Meghna ji, we'll come back to you. Yes. Our second category is Best Mompreneur of the Year Individual. Now, I think this category is very difficult, no? Because all of us are mothers and all of us are winners. But yes, award एक को मिलना चाहिए शायद. So let us see who are the finalists for Best Mompreneur of the Year Individual. The finalists are Suruchi Agrawal, Rutuji, and Nidhi. Many congratulations for being the finalists. And the winner of Best Mompreneur of the Year Individual. That is Rutu. Many congratulations, Rutu, for being the Best Mompreneur of the Year Individual Award. The next category of awards is Social Impact Creator Award. The Social Impact Creator Award, the finalists are Renuka ji, Madhusata, and Dr. Anshu. Many congratulations for being the finalists for this category. You shall see who won in this category. The winner of Social Impact Creator Award is Madhusata ji. Many congratulations, Madhusata Chaudhary. Congratulations. So the next category of award, Woman Ahead Startup of the Year. The Woman Ahead Startup of the Year, we have finalists as, the name of the finalists are Neha, Vidyalatha, and Shikha. We have 3 finalists for this category, Women Ahead Startup of the Year. And the winner of this category of award is Shikha ji. Many congratulations, Shikha Mehra, for winning Women Ahead Startup of the Year. I can see her face all smiling. Many congratulations, Shikha ji. The next category of award is Best Influencer Award. We also have 3 finalists for this. The Best Influencer Award finalists are Aparajita, Smita, and Sapna. 3 finalists for Women Ahead Startup of the Year. Aparajita, Sushmita, and Sapna. And the winner for this category is Sushmita ji. Many congratulations for winning this award, Best Influencer Award of the Year. Sushmita Das Gupta, congratulations to you. The next category of award is Social Entrepreneurship Award. And the finalists are Nancy Jain and Rejula Mustafa. We have 2 finalists for Social Entrepreneurship Award. And the winner in this category is Nancy Ji. Nancy Jain, congratulations for winning this award, Social Entrepreneurship Award of the Year.
Many congratulations to Ms. Nancy Jain. The next category of award is Business Leader of the Year. And we have 2 finalists for this. The finalists for Business Leader of the Year are Dr. Reina and Shweta. We have 2 beautiful finalists for this year, Business Leader of the Year, Dr. Reina and Shweta. Let us see who is the winner. The winner for this award is Shweta. Shweta Rawal, congratulations for winning this Business Leader of the Year. Many congratulations. The next category is Best Mentor Award. And I proudly say that there is an undoubted winner, that is Rashida ji. Rashida ji, many congratulations for being the best, winning the Best Mentor Award. Many, many congratulations to you. The next category is Homegrown Business of the Year. Homegrown Business of the Year, we have again 3 finalists. The 3 finalists are Vaishali, Jaldi and Vimal. 3 finalists for Homegrown Business of the Year, Vaishali, Jaldi and Vimal. Let us see who wins this category of award. And the winner is Vimal Shah. Congratulations, Miss Vimal. Congratulations for winning Homegrown Business of the Year. Congratulations. And the most awaited, most important award, Lifetime Achievement Award. The Lifetime Achievement Award goes to... Any guesses? I wish this was offline. The Lifetime Achievement Award goes to... The winner is... Many, many congratulations, Dr. Shalini, for winning this. Congratulations, Dr. Shalini, for winning the Lifetime Achievement Award. Thank you very much, all the winners, for being present here. Over to you, Praveen sir. Thank you so much, Rajsi, and many congratulations to all the winners. Yeah, all the winners. So all the finalists are all the winners, and yeah, so many congratulations. And the room is open again, wherein if suppose you want to share your feelings, your comments, your feedback, certainly please unmute yourself and go ahead. Yashika. Thank you so much, Dr. Praveenji, first of all, for this wonderful concept. And I couldn't have asked for a much better gift on International Women's Day. So thank you so much for that. And thank you to all the women entrepreneurs, fellow women entrepreneurs, for voting and supporting me. And to the entire team of vyapaarjagat, and thanks Rajasi, you have been with us since 3 long days, and Dr. Praveen too. So thank you the entire team of vyapaarjagat for pulling it so well for this wonderful initiative. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, Shika. Shika, when you have said a beautiful concept, so let me tell you, there is a small observation. I'm sure, a lot of our viewers, lot of our participants have observed that particular thing, wherein, from day one, our nominees are public. I mean, because, the way the process we are having, right? So as soon as somebody is nominating, we are giving them a certificate. We are giving them their voting creative, their voting link, right? So that way, the competition of each category was open.
right? And if suppose somebody has closely observed it, then they must have seen that what is the competition in each category, because we from day one, and I'm proudly saying this, that in next year also the process will remain same, right? So from day one, if suppose you just scroll the social media of Vyapaarjagat, you will find that who are the nominees so far. And one more thing is, we are adding all nominees in the group, where all nominees are having that platform as well to interact, to network, and to promote, and to ask for votes, right? So that way, yeah, so that is the concept wherein everything is open, everything is transparent. And as I have already said, we will share list of votes which you have collected. And अच्छा नहीं लगता है कई बार, but let me tell you, yesterday I got 4-5 such comments. हम लोग from day one, Rajsi and we all are saying like all are the winners, right? But still yesterday in the late evening I got 4-5 comments where people were mentioning like you are doing biased things, and you are not doing certain level of justice. And when I actually read those comments, and I look at the jury sheet, so I found that there was 2 such candidates. They have not even submitted data which jury has asked. See, you are great, I don't doubt it, nobody doubts, okay, but you have to follow the process. From day one we are saying these are rated awards, this is a competition, okay. Even though you have received an award from President of India, if suppose you are participating to this particular event, there is a process and you have to follow the process. It does not mean that you have been recognized by President of India, Vyapaarjagat will give you trophy. No, here is a competition. Here we are inviting such entrepreneurs, those who are deserving, they have confidence that they are deserving recognition, they have done something for the nation, they have done something for the society, and we want to recognize them. So yeah, that is it from my end. And yep, so let's move for the next winners. I want to add that, Dr. Praveenji, the moment the nominees were selected, I say that the entire process was very smooth. Whatever clarifications or whatever queries we have asked in the group, we were replied promptly and completely. So I don't think there is any mistake from your end. I really don't think so. No, I am not talking about mistake. I am just clarifying things so that next year also nominees should know that this is a process. I mean, I am just giving clarity. I am not answering to anybody as of now. Yeah, I am just clarifying things. Yeah. Yeah. Anybody else want to share anything? The room is open. All yours. Yes, Madhu. Please go. So thank you very much. I am the founder of Grab Your Mat and I am a yoga teacher. And for me, I must say this has been a very, very good platform because till now, even after all these years, when yoga is from India, people have this conception that we should do yoga when we are sick or when the doctor asks us or to lose weight. Very, very less people know it's a way of life. So many yoga philosophy, the shlokas, the Patanjali sutras, like how to implement them in your day-to-day life, your productivity, your mental happiness increases like in leaps and bounds. So from the first day I started my yoga journey, that had been my objective. That no, it's not about curing your diabetes or your hypertension, or it's not about losing weight. It's a totally different thing. Adopt to the culture. It's our age-old culture, and we must adopt it. Adopt it as a lifestyle, and we must promote it. So this platform and this award, I am sure now people will take yoga and look at it from a different perspective, try to learn it, implement it in their lifestyle, and I am really very thankful. And like Thank you so much, Madhu. Thank you so much for your kind words. there was no biasness. Like I couple of times disturbed him with a lot of questions because I had a lot of questions in my mind, and he immediately responded even if it was at 12:30 in the night. So extremely helpful, extremely loving platform. And one thing, this group of women, they are fantastic. Like we know
We are strong when we fix each other's crowns and not we are just fixing ours. So even people from my category, women from my category came ahead and voted for me. So that shows how as a culture we are giving. That's yoga. So the yoga has started from there, selfless doing and calm body. Thank you very much, all of Thank you. you so much, Madhu. Thank you so much. Yep. So, guys, we are running short of time. So, quickly, you can share your feelings, your feedbacks in a minute. Anybody else want to speak? Good evening, Dr. Praveen. Uh, Thank you for this wonderful platform, and it Yeah. was an Just a immense, moment. Who is huge, speaking? amazing response from all over. And thank you to Rajashree and the whole team who have taken this initiative, which is not a small thing. See, all these 3 days, this sacrifice is what you have done, and even before that, working for this and coming out, it is not a small thing at all. So even like you just can't go out of your screen, and you have to do a lot of things. So thank you very much, Dr. Praveen, for giving this wonderful opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So, Moderator, host, may I request, you please add in the spotlight because I don't see faces many times. So, Sapna yeah. ji needed And to if switch you on are her speaking, video. please keep your camera on so that we can add you in the spotlight because that is the restriction which is which is of Zoom. There is no my role. Okay. Anybody else want to speak? Hi, good evening, all. Happy Women's Day to everybody. This is Devanshri, and I've been a very keen observer from all the things that have been happening. Not a person who speaks aloud too much and discusses too much on the group. But thank you so much for this opportunity. And Mr. Praveen, you've been in and out doing all that you've been doing. So thanks a ton, and lots of good wishes to vyapaarjagat. Hope to be there again next year. Thank you so much, Devanshi. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. And I think now we can move forward. Okay. Do we have anybody else? Quickly, because Yeah, may I? we are just, yeah, May yeah. I? Please, Yeah, please. hi. I am Dr. Shalini Gudani, and thank you, Praveen, and Vipajak for this amazing thing. I've received the Lifetime Achievement Award, so thank you so much. And even as Shivangi said, I was not much part of the group. I was just like observing what all things are happening, but yes, it was going great. In fact, I was seeing for 3 days, things were happening so smoothly and so perfectly. So I'm a Vastu consultant, and I was practicing from around 2004, and trying to do different things like not based Vastu, but also manage energies and all things like that. So thanks so much for this. Thank you, Dr. Salini. You well deserve it. Thank you so much. Thank you so much for your words. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. All right. So, are we good to go? Thank you so much. And over to you, Rachi. Thank you everyone for participating and for thanking everyone so profusely, because not everyone does this, if you're not one, or if you're like me, a third party who is watching, but still everybody is equally thankful and equally appreciating the sessions and everything that has been done today, or rather all these 3 days. To sum it up, I actually made a list of all the events that have taken place, and I saw that there have been over 70 speakers in these 3 days, including panelists, including moderators, everyone, over 70 women speakers. And I think it's a big deal to find out those speakers and get people together to actually sit for a panel, and because time is something that is invaluable. Ek bar gaya to gaya, it will never come back. So this is something that we are giving to each other, an irreplaceable gift. What did we discuss? Role in COVID crisis, role in nation building, all this is women's role. Okay, so women's role in driving the society, making AATMA NIRBHAR BHARAT possible, because 2020 has been a blessing in disguise. I think I want to say this. Let's not curse COVID, because COVID taught us a lot of things, to be with each other, to be with self also,
and to be Atmanirbhar. कितने सारों ने अपना business start किया and people are doing really well in their businesses. The need of storytelling, जो व्यापार जगत any which ways करता है, and we had a session on that also, कि storytelling business में कितना important है, how much other people's stories enlightened us and pushed us to do our best. That is what we also saw. We also saw use and abuse of social media that we did in the past 2.5 years. बहुत सारा social media पे posting कर दिया. We also saw transformation education. बहुत सारे teachers को teaching style completely change करनी पड़ी. वो जो board और chalkboard जो method था, वो चला गया suddenly, and there is no child in front of you. You are always shouting, please switch on your cameras, please switch on your videos. तो हम teachers में भी बहुत सारा changes आ गया in our lifestyle itself, because for a child, the child is only one. For the mother, there is only one child who is studying. For the teacher, there is her own child, her own routine, and there are 30 other children who are under her studying. We also learned how to handle finances in this panel discussion of 3 days. We also saw all the startup challenges that we already faced before, we already faced now. We also saw the importance of fitness, the deity within us, वो भी session हमने देखा. Psychology of women in business, perspectives हमारे बारे में as women entrepreneurs, और हम क्या सोचते हैं as women entrepreneurs, वो भी हमने देखा. Innovations at home, जो अभी just session खत्म हुआ, कि घर पे ही रहे एक lady all the time and how she flourished. So हम जो बोलते हैं घर पे ही बैठे रहे, नहीं, घर पे कोई बैठता नहीं है. We can still innovate, we can still do wonders. And last but not the least, fashion भी देख लिया हमने, cyber crime भी सीख लिया. What more could you ask for in these 3 days? And I think I should put it the other way around, that we could ask for even more. So please think about it, contemplate कि हमें और क्या-क्या चाहिए. Let us post it on social media. Let us keep Dr. Praveen in loop and tell him that these are the sessions that we want, and let us again network and tell him what kind of panelists that we are looking for. So after these, I have a list of females who I want to see here talking about their own journeys. And wrap it up. हमने सीखा क्या-क्या, और ask for help, give 100%, कभी भी कम नहीं देना है हमें हमारे businesses को, चाहे personal life को. Keep going, never say no. Never say no नहीं, business को मना मत करना कि चलते जाना, कोई बात नहीं. There are hurdles and you will overcome them. Never give up. Duplicate yourself. वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि please train somebody second in line. You are your own competition, you are your own motivation. And lastly, but most important, you are enough. With this, I would really thank vyapaarjagat. I would really thank Praveen sir for giving me this opportunity and helping me network with so many beautiful souls here. Thank you very much. Over to you, sir. Dr. Praveen? May I? Thank you so much, Rajsi. Sir, may I thank our sponsors, please? Yeah, please go ahead. Thank you. So we know what is vyapaarjagat. ये मैं 3 दिन से बोले जा रही हूँ, लेकिन I would really want to share it again. vyapaarjagat aims at attracting like-minded people, जो हमने already 3 दिन में देखा. But before ending this session, let us one more time clap for our sponsors और जिन्होंने भी ये possible करने में help की है. The associate partner is Fiki Flow Ahmedabad. Our gold sponsor for this event is Loan Unit, which is unit of Big Bull Delt India Private Limited. Loan Unit is pioneer in business auxiliary services of fresh home loan, residential purchase loan, commercial loan, lease, rental discounts, loan against residential and commercial business. Business purposes like overdraft, working capital, being mortgage consultant. We have our main partners as Asman Foundation, who believe in giving back to the society. Technology partner, Swagger Unit. Graphics designing partner, Wireframe Design. Marketing partner, Shri Shraddha Communication. Community partner, Multitasking Mommies. Digital marketing partner, Social Amplifiers.
event managed by Pink's Event, venue partner BSE Bombay Stock Exchange Mumbai, video partner Tej Studio, photography and videography partner Fun Video, our content strategy partner Pen V Media, franchise partner SNS Super Brands, online PR partner Newswire, other media supported by In Time News, Colleen, Tandem PR, Gujarat Mail. vyapaarjagat FEM Conference and Awards 2022 is supported by various mentors of this industry and communities. To name a few, thank you BNI members, especially BNI VINCI chapter, media friends, communities like Consultant Cubes, pretty much everything, JAMMS Jams, Connect, Piso, DLL, Millennium Divas Fund, Gujarat Traders Federation. Thank you everyone for being there for all these 3 days. Thank you very much. Thank you so much, Rajsi. Pleasure, sir. Yeah, thank you so much, Rajsi, once again. And yep, so certainly I'm just adding, a few more thanks, and we would love to thank you, our esteemed jury members who have done really, really great job via going through all the applications, lot of data received from our nominees, and it was indeed a tough task because at one point of time jury are the kind of entrepreneurs or the leaders, those who are having expertise in multiple domain, and they are taking out time from their busy schedule and they are giving score for our nominees. So that was really awesome and wonderful. So thank you so much, all the jury members. And we would also love to thank all our speakers who took out time from their busy schedule just to bless us with what they have gained in process of growing. I would like to thank all the beautiful people who have joined us over this course of 3 days to discuss, distribute and share knowledge, and also to understand the business and its concepts. We would personally like to take this moment to thank all our sponsors, partners, and our sincere thanks must also go to the people who have worked so tirelessly to make this event such a great success. Especially if I talk about my team members, so Vishal, Bandish, Jyoti, Aditya, and a few more special thanks goes to most beautiful Rajsi Gajar and Dr. Tanisha Keswani for hosting in a beautiful way, in a very interactive and engaging way to anchor and host 3 days of this particular event named FEMPRENEUR Conference and Awards 2022. Also, I would like to thank Vaishali Vaishnav, Dr. Gitika Saluja, Fani Trivedi, Rohan Shah, Sapna Kedia, Bella Shah, Monal Jasani, Dr. Kaveri for going out of the way and using their context sphere to suggest great speakers and lot of guidance for this particular conference. This conference and award ceremony was summoned under the government's initiative of AATMA NIRBHAR BHARAT, and we all are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav together to give a boost to the budding entrepreneurs and knowledge them with industry knowledge as to help them grow, which accurately serves the purpose on which we have been thriving since years, which is of being your business story partner, as vyapaarjagat.com is a platform. During the days of this wonderful award ceremony, honorable speakers have delivered many words of high standard, and I am very assured that each one of you present must have got something to take home. We have achieved so much in time. We have been here and gained a lot of ourselves too. This event is finished, of course, but it doesn't really stop here, and it will soon be time to be thinking about organizing the next one for the year 2023. And let me tell you guys,
this is the, I mean, the same website will be there. So FEMPRENEUR.in is a place to see all the updates, everything. And one more thing which I just want to add is nominations are open across the year, right? So if suppose you want to recommend to someone, if you want to suggest something to someone, so that is the address wherein, you know, they can go and register. We are again looking for great speakers, event partners, sponsors for next year. Also, one more thing which I want to add, and that is we are going to have the winners felicitation ceremony, which is the combination of two big events, right? So before this particular event in December, we had vyapaarjagat convention and awards 2021, and we had announced 100 winners, and there was like more than 100 finalists. So we are, you know, merging those winners with this particular event's winner, and we are going to make a grand entrepreneurship celebration on 25th of March at BSE. Bombay Stock Exchange is our venue partner, and it will be a great networking event with all such successful entrepreneurs, guests of honors, media people, and a lot of investors. So do not miss out this particular opportunity. We also invite visitors. So if anybody wants to just visit this particular event, the offline event in Mumbai, just, you know, ask them to connect with us. We will certainly, you know, invite them to come, join. All winners, finalists, runner-ups are invited. Winners will be felicitated with the trophy and certificate both, while runner-ups and finalists will be felicitated with aluminum plated certificate. Also, you can take your winner kit, and if you want to book it, so you can contact the vyapaarjagat team and we will book your winner's kit. So that is it from my end. Stay tuned, subscribe to Vyapaarjagat TV, and keep posting your feelings, comments, questions on Vyapaarjagat video comment box. We will take it from there and we will, you know, try to give you right content. Also keep reading stories, inspiring journeys of entrepreneurs on vyapaarjagat.com. Once again, very happy International Women's Day. And before we end this particular event, we want to have a national anthem, and I request all those who are present here and those who are watching online, please stand up and let us respect national anthem, and then officially we are concluding this particular event. Right, so thank you so much everyone, and so officially the broadcast is stopped and we can wrap this. कोई
विश्वास दें। कोई सपना देखे हमसे पूरा करें। कोई उड़ना चाहे हमसे विश्वास दें। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हर व्यापार को दे पहचान। हर व्यापार को दे पहचान। व्यापार जगत। शक्ति साहस प्रदायिनी। हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति। हम हैं शक्ति, हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति। हमको आने दो दुनिया में, हमसे ही सृष्टि सारी। सोचो कैसी हो ये धरती, जो ना हो जग में नारी। हमको आने दो दुनिया में, हमसे ही सृष्टि सारी। सोचो कैसी हो ये धरती, जो ना हो जग में नारी। हम हैं शीतल, हम हैं कोमल, पर ना समझो हम हैं
सफर पे कितने मंजिल तय किए। आज प्रगति की दिशा में हमने कदम रख दिए, चल पड़े अपने सफर पे कितने मंजिल तय किए। आज हम हैं जिस जगह वो था नहीं इतना सरल, एक मुक्ति युद्ध भी लड़ते आए हैं हम प्रतिपल। हम हैं शांति, हम ही क्रांति, हम हैं शांति, हम ही क्रांति, उन्नति विकास हम मातृभूमि के लिए रचेंगे एक नया इतिहास। हम हैं शक्ति, 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 हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, 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 हम हैं शक्ति। Hello everyone, this is Bharti Nayak and I'm a woman entrepreneur. I have my enterprise called Inspire Human Potential Private Limited. Many a times as woman entrepreneur, we do face challenges in marketing, in networking, and vyapaarjagat is one such platform that motivates businesses, entrepreneurs to showcase their success stories. And I must congratulate Dr. Praveen for putting this summit, FEMPRENEUR, for all the women entrepreneurs and acknowledging their work, acknowledging their efforts, recognizing them with the awards, and beautifully designed the summit. So my heartfelt gratitude and congratulations to vyapaarjagat. A big success to FEMPRENEUR Summit and congratulations Dr. Praveen. Thank you so much. Rome was not built in a day. आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला? Building a brand is the most important priority for any startup, any entrepreneur. Hi friends, this is Dr. Raina Khatri Tandon, the founder of Right to Rise, India's only brand and ISO certified company into posh, POXO, human rights and stress. We enable women to become the strong entities, breaking barriers, breaking biases, to go ahead and start up their own ventures, also to be a powerful person. A woman has her own identity. And here today we are on one of the most beautiful platforms for women entrepreneurs, and that is vyapaarjagat. vyapaarjagat एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर स्टोरी टेलर अपना ड्रीम शेयर करके उसको कैसे ग्रो कर सकती है, इस प्लेटफॉर्म के रूप में वो हम जान सकते हैं. Do reach out for this beautiful event. I'm sure you don't want to miss it. On 6 to 8 March, we are having FEMPRENEUR Conference and Awards, जहाँ पे हर महिला को, every woman will be empowered into starting her own venture through AATMA NIRBHAR BHARAT, जो हमारे प्रिय मोदी जी का भी ड्रीम है. Please do join us with all the entrepreneurs there. You don't want to miss it. Be there and join this movement with vyapaarjagat, awards, conferences, and summit, empowering every woman to be the stronger one. Thank you so much. Have a good day. Rome was not built in a day. आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला?
Building a brand is the most important priority for any startup, any entrepreneur. Hi friends, this is Dr. Raina Khatri Tandon, the founder of Right to Rise, India's only brand and ISO certified company into posh, POXO, human rights and stress. We enable women to become the strong entities, breaking barriers, breaking biases, to go ahead and start up their own ventures, also to be a powerful person. A woman has her own identity. And here today we are on one of the most beautiful platforms for women entrepreneurs, and that is vyapaarjagat. vyapaarjagat एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर स्टोरी टेलर अपना ड्रीम शेयर करके उसको कैसे ग्रो कर सकती है, इस प्लेटफॉर्म के रूप में वो हम जान सकते हैं. Do reach out for this beautiful event. I'm sure you don't want to miss it. On 6 to 8 March, we are having FEMPRENEUR Conference and Awards, जहाँ पे हर महिला को, every woman will be empowered into starting her own venture through AATMA NIRBHAR BHARAT, जो हमारे प्रिय मोदी जी का भी ड्रीम है. Please do join us with all the entrepreneurs there. You don't want to miss it. Be there and join this movement with vyapaarjagat, awards, conferences, and summit, empowering every woman to be the stronger one. Thank you so much. Thank you, vyapaarjagat, for giving me this opportunity to introduce myself and my company. Myself, Himali Shah, from Mumbai, running a firm called Chocolate House, which is over 3 decades old. I take this opportunity to thank vyapaarjagat Awards to specially felicitate women entrepreneurs under the name of FEMPRENEURs. Women are always known and are capable of multitasking. Only thing is that they are not, felicitated in the right way. And what a thoughtful gesture by vyapaarjagat to take this opportunity on Women's Day and do this. So I request and tell all the women entrepreneurs to come ahead and nominate yourself and be a winner, because you are already a winner. Here you are felicitated for the same. Let's meet and greet many such women entrepreneurs under the award called FEMPRENEURS, managed and organized by vyapaarjagat. Thank you so much, vyapaarjagat, for this wonderful gesture. Thank you. Hello everyone, I'm Naisargisha, certified NLP trainer, transformational coach and soft skill trainer, specialized in body language and emotional intelligence. Finance student turned HRian with an 18 years of experience, 18 years plus of experience in the corporate world. And with that experience in personal and professional life, through vivid people, and with that experience, strongly urged to create a program for young millennials. Young millennials are the people who are age group of 15 to 30. Yes. I am founder of Indian Institute of Mind Evaluation. With that inspiration, I have created this institute in the name of Indian Institute of Mind Evaluation. And under that roof, there are different programs creating a better version of themselves, creating the success stories, those who want to create their own success stories. खुद को एक नया स्टेटस देना चाहते हैं, खुद को एक नए प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं. Those who all can communicate with me, come to me, learn how to be there. And through NLP, through soft skills, मेरे यहाँ डिग्री के अलावा जो अपने एजुकेशनल डिग्री बोलते हैं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ. Any degrees that are called educational degrees आप लेके आते हो. I train your brain to achieve their goals. अपने खुद के goals को achieve कर पाओ, उस तरह से इस institute में आपको train किया जाता है. So I'm there to help you with that. And of course, yes, one thing I always believe is that women should be financially independent, आत्मनिर्भर होने चाहिए. And vyapaarjagat is creating that vision, that mission, and helping that to fulfill it. vyapaarjagat बहुत अच्छे से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं
And yes, of course, I am always thankful to them nominating me as a nominee, as a founder of the year, and as a speaker also. Thank you very much, vyapaarjagat, and creating such success stories. You are helping everyone, every woman, to showcase themselves on your platform. And that's real Atmanirbhar India. Thank you. Hello everyone, I'm Nirali Dudley. I'm a National President for Wiki Elementary Education and I represent India through elementary education, and I'm an educational thought leader. And I congratulate vyapaarjagat for such a beautiful initiative of encouraging female entrepreneurs. I think this is the most important need of an hour. And let us all join our hands in support of such beautiful initiative. And I also am there supporting them. Thank you very much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है और मैं एसएनएस सोफो ब्रांड्स की डायरेक्टर हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू vyapaarjagat फॉर नॉमिनेटिंग मी एज द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इन FEMPRENEUR अवार्ड्स 2022. क्या आप मेरी आत्मनिर्भरता की कहानी जानना चाहते हैं तो आज ही लॉग इन कीजिए. और अगर आप भी एक आत्मनिर्भर महिला है और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ नॉमिनेट योरसेल्फ इन vyapaarjagat. I am very, very thankful for this opportunity which has been given by vyapaarjagat to me. Thank you everybody. Thank you vyapaarjagat. Mera vyapar, meri pehchan. Thank you. Hi everyone, this is Tuli Banerjee here. You have seen me as a journalist, as a writer, as a social worker, and in a lot of different roles. Recently, now I have become an entrepreneur. I have founded a new venture called Tuli Chance. Thank you to vyapaarjagat for organizing this FEMPRENEUR Conference and Award 2022. It is a great step towards awarding women for those who have done something great in the business field. According to DPIIT, there have been more than 50,000 startups in 2021. And it is great to know that almost 45% of the entrepreneurs among the startups have been by women. So again, I would like to thank FEMPRENEUR and vyapaarjagat for organizing a Women's Day Award for appreciating women in all different fields. Thank you so much. Hello everyone. Myself, Mrs. Arpita Doshi, innovator and founder of Nutrition Dynamic Foods LLP, located at Ahmedabad. Under brand NDF, we innovate and manufacture health beverage premixes for millennials, working professionals and senior citizens dwelling in urban topography, suffering with inflammatory non-communicable diseases like diabetes, cardiovascular, cancer and obesity. As a woman, I always dreamed about making my own name and fame. I always dreamed to be recognized by my capabilities. And that can only be accomplished when I dreamed of having a business. When I dreamed of having an enterprise, which is not just found and led by a woman, but is also innovated by a woman. In this journey of enterprise, many ups and downs are foreseen. Paths have never been smooth. Balancing work and life has always found difficulties. In spite of all such difficulties, under able leadership of Shri Narendra Bhai Modi, women's got a special recognition for which we really thank him. vyapaarjagat founder Mr. Praveen Parmar has not just only supported our PM's vision and mission, but by organizing FEMPRENEUR Awards and Conference event, he is truly making women's Atmanirbhar. I would appeal to all of you, please join vyapaarjagat and let's help to spread the word about women enterprises. Thank you all.
Jai Hind, I am Dr. Kaveri, founder of a wonderful platform, Pretty Much Everything. I call it as wonderful by myself. Why? This is not bragging, but what I want to say is if I am not happy with what I am doing, I cannot make others happy and everyone happy too. But making everyone happy is not necessary as much as having that self-satisfaction. But I definitely ensure that I give a quality work out there in the betterment of society through my platform, that is Pretty Much Everything, where I bring in the experts of various fields, and through their expertise I try to give a valuable information to the society. By the expertise, I mean, bringing up a lawyer for the interview who will talk about human rights, bringing a radio frequency engineer who will tell us that how an air traffic control works. Many times we go to the airport and we are not aware of this. And also, I invite various gynecologists and psychologists to talk about mental health, and also focus on the women health is important. And I would like to congratulate vyapaarjagat for this wonderful FEMPRENEUR Awards 2022. It definitely encourages more and more women, rather everyone, to do better, and better. So for the moment, this is Dr. Kaveri signing off. See you in the main event. Jai Hind. Hello everyone, I am Dr. Kavita Saxena. I am an entrepreneurship educator and a startup mentor. I have been working in the area of women entrepreneurship for almost a decade now. And very strongly I feel that now is the right time for women entrepreneurs to come in the limelight, because the entire ecosystem of our country is working towards supporting and encouraging women entrepreneurs. I think this vyapaarjagat has come up with a very, very apt and impactful initiative of rewarding and recognizing the women entrepreneurs of our country. I extend my heartfelt compliments to the entire team of vyapaarjagat. So what are you all waiting for? If you are a woman entrepreneur, do register your startup idea. Hello everyone, myself Rupali Shah, owner of Trends Look Fashion Jewelry. हमारे यहाँ ऑफिस वेयर, डेली वेयर और वेस्टर्न वेयर की ज्वेलरी मिलती है। जजिस बंगलो बोडकदेव पर हमारा शॉप है। सबसे पहले तो मैं व्यापार जगत का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये फेमप्रेन्योर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उन्होंने ऐसी महिलाओं को नॉमिनेट किया है जिसने अपने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद अपना एक व्यापार शुरू करके उसको अपनी एक पहचान बना दिया है। और यहाँ पे उन्होंने स्पीकर्स भी रखे हुए हैं जो व्यापार से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे, और इससे भी कई सारी महिलाओं को फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच व्यापार जगत कि आपकी वजह से ऐसी कई महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ और बिजनेस जर्नी सारे समाज के सामने शेयर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए तारे वो सब एकजुट होके एक ऐसा आकाश बनाने वाले हैं कि जहाँ झिलमिलाते हुए सारे तारे अपनी रोशनी तो बिखेरेंगे, साथ ही साथ और लोगों को भी प्रज्वलित करेंगे, उनका भी हौसला बढ़ाएंगे, उनको भी ज्यादा रोशनी देंगे। मैं सच में डॉक्टर परमार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट सोचा और हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे इकट्ठा किया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Behind every successful woman is nobody else but herself. Yes, that's the truth. Hi, Namaskar. This is Monali Mehta, the founder, editor, creator of theseasoningpan.com. This is an initiative to bring back the granny's recipes of every household to the new generation. It's all about getting into the kitchens of every neighbor I know and then get unke ghar ka khana, the rustic recipes. That's all the seasoning pan all about. And this is an initiative by a woman for the entire community. Khane ke bina kaun rehta hai bhaiya? Koi nahi. I would like to congratulate and thanks Vyapar Jagat for this beautiful platform that they have created for women entrepreneurs. And thank you so much for giving me this chance to come back
again as a powerful woman. Thanks a lot. Warm greetings to everyone out there. I'm Nidhi Virmani, the founder of Pratibhalya. Like you, I also play different roles in my life. I am a wife, I'm a mother, a daughter, daughter-in-law, I'm a sister, mentor, teacher, and a proud womanpreneur. Every woman has a journey to share and inspire the society. And believe me, not everyone gets this opportunity to share her achievement with everyone. And I'm glad to tell you that I have got this opportunity as a speaker to share my story with you all on this International Women's Day celebrated by vyapaarjagat. I would like to congratulate vyapaarjagat for taking up the mission of AATMA NIRBHAR BHARAT. I truly support and admire this mission of celebrating and supporting women entrepreneurs. Girls, this is the right time, the golden time, wherein we women are getting so much of opportunities, support and guidance to flourish our businesses and to make India a self-reliant country, truly Atmanirbhar. If you are an entrepreneur, come forward, share your story and inspire your fellow members. And if you are not, do attend this event, get motivated, get guidance, and it is like very much possible that this event is a life-changing event for you all. Till then, see you all, keep smiling, keep rocking, and all the very best. Thank you so much. Hello wonderful ladies. An inspired me and an inspiring you is the fundamental for any growth. And I'm very happy that FEMPRENEUR 2022 is all about you and me. Hi, I am Nikisha, an idea to implementation coach, and I help people build their dream businesses. Working with more than 1,000 entrepreneurs and helping them build investable startups, the importance of a community and a platform cannot be ignored. I'm very happy and excited to be a part of vyapaarjagat, which provides such platform to women entrepreneurs. So come on, be there and let's enjoy and be a part of this happening FEMPRENEUR 2022. Tune in and see you there. Hi, I'm Basudha Srivastava Narula, founder and COO of Employee Services. We are a young and bespoke technology company and we are automating the employee life cycle management system. I'm really happy to be part of vyapaarjagat, and I'm really happy to see that a lot of people are coming up and they are achieving their dreams to be part of this big ecosystem of entrepreneurship. It takes a lot of passion, it takes a lot of courage to leave their salaried job and start working for the dreams that you have and the passion that you have for. And it's a time for all of you to be recognized for the hard work, for the passion, and for the nights and the day that you have spent to achieve your dreams. And it's time really to be recognized around the world. Thank you so much for your participation and all the best to you. Hello everyone. Imagine how beautiful this world will look when every individual can trust themselves and sail through all the difficulties in life with decision making to problem solving, from self-discipline to perseverance, from reliability to dependability, with self-acceptance but without dependence. Imagine this picture looks more beautiful when this self-reliance is celebrated throughout with lots of enthusiasm. I, Tripti Gandhi, founder Ekagra Focused on Positive, congratulate vyapaarjagat for organizing FEMPRENEURS Conference 22 to celebrate self-reliance, Atmanirbharta. I wish them all the very best. Thank you so much. सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़
राहदार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हर व्यापार को दे पहचान। हर व्यापार को दे पहचान। व्यापार जगत